and media leaders all under one roof. This convergence is a testament to our shared commitment to steer the course of TV news towards a horizon of innovation and significance. Ladies and gentlemen, my name is Shubhajit Ghosh, and it's an honor and privilege to be a host for the day. NewsNext 2024 is presented by the Exchange for Media Group that was set up way back in the year 2000 and today is a one-stop information platform for the entire industry news, views, and analytical information, in-depth analysis of events or trend forecasting. And the heartening part for the team at Exchange for Media is that our publications have a loyal fan following. Ladies and gentlemen, we're all set to host our annual media summit, popularly called the NewsNext Summit. E4M's NewsNext Summit brings together thought leaders from NewsNext TV, media experts, advertisers, brand marketers, and global media leaders to discuss the future of TV news. As we know, TV newsrooms are preparing for the changes sweeping over them and seem uncertain where the changes would actually lead. The sheer speed of change has outstripped our ability to understand it all. News TV is also shifting from serving a TV audience to serving audiences no matter where they are essentially going, from a TV broadcaster to an overall broadcaster. News TV, ladies and gentlemen, is at the cusp of a big change from format to content to the credibility of the content. There is nothing really to debate about. So much really to debate about, actually. NewsNext is the forum for the industry to look within, to discuss and find ways to address the issues facing News TV. Ladies and gentlemen, before we commence here, it's very important that we thank all our partners for the day. Powered by partner Blue Star, associate partner Vistar News. अब खबरें होंगे विस्तार से, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल. On that note, may I please request for the AV? Exchange for Media, a name synonymous with the latest news about the advertising industry in India. The Exchange for Media Group, set up in 2000, has the most credible media platforms covering the entire advertising, media, and marketing domain. It's highly advanced digital, print, and on-ground assets. The group's flagship news portal, exchangeformedia.com, which has over 6 lakh subscribers who are the first to receive breaking news in the industry. The puzzle website not only covers the news, but goes beyond the obvious to taking a fresh point of view. In fact, the News magazine from Keynote is the most widely read business magazine in the advertising trade. In-depth analysis and rules-based features providing perspective to key happenings in the industry. Monthly Pitch magazine provides an inside view of events unfolding in the marketing landscape, along with media and advertising. Another monthly magazine, Realty Plus, is a market leader in reportage on the real estate industry. Today, Exchange for Media is not only a leading publisher in the domain, but holds the IP of more than 50 events spread across Mumbai, Delhi, and Bangalore, making it a powerhouse of information and sharing. Exchange for Media has curated and launched some of the most successful IPs across marketing, digital, TV, print, radio, mobile, OOH, and PR. The impact of this of the year. Exchange for Media Conclave, Indian Digital Marketing Awards, Tech Lunch, Rich CMO Summit, India Marketing Awards, Primetime Awards, Indian Content Marketing Awards, Golden Mics, and Bar are some of the group's top-notch events, in addition to niche, bespoke events, and roundtables curated especially for discerning clients. Exchange for Media events attract stalwarts as speakers, along with a loyal audience comprising of leaders, trendsetters, and opinion makers. We are the perfect networking platform for the entire media and advertising industry. No wonder Exchange for Media Group publications and events have high credibility and reach, and are the destination of choice for agency, brand, and media professionals across the industry. Exchange for Media.
Ladies and gentlemen, can I please request your stage for me? Louder round of applause, please. Ladies and gentlemen. Yes, right. Do it. So this is going to be why not? Start fast cooling inverter AC. अब गर्मी की छुट्टी You start fast cooling inverter AC. अब गर्मी की छुट्टी myself today himself. I am all myself himself used heavy duties. You start heavy duties. भयंकर गर्मी की छुट्टी Ladies and gentlemen, request you all to kindly have a huge round of applause for Exchange for Media Group once again, please. And a huge shout out and thank you to all our partners because of whom this event is possible today. Thank you so much to all of you. Now I'll request all of you to kindly put your phones on silent mode so that none of our speakers are distracted. But we really don't want you to switch it off, of course, because this is the world of social media and we all would request you to kindly share your views using the hashtag E4M Newsnext on Twitter and social media platforms. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, I would like to request Mr. Sunil Kumar, President Exchange for Media, to kindly come up on stage for the welcome address. Ladies and gentlemen, please give it up for Mr. Sunil Kumar. Good morning, everyone. It is my privilege to extend a warm welcome to all of you uh, to our this annual meet of key stakeholders in India's television news landscape. Uh, Through the day, we are going to be joined in by a diverse group of individuals who are integral to this industry, the owners, the editors, advertising and media teams, distribution experts, ex advertisers, as well as technology and solution providers. Media.com. We truly value your willingness to share your views, your insights, your perspectives on industry developments as they happen. You do that with our reporters and editors, many of who are here amongst you, and they'll be interacting with you on stage, off stage, on the record, off the record. You'll find them here. I can see Shantanu sitting there, but there must be there are others who are outside. This marks the 13th edition of News Next and the 16th edition of INBA, the News Broadcasting Awards, which would happen right here in the evening in the lawns outside.
Uh, these this continuity talks about our deep commitment to the vitality, the diversity, and the evolution uh, that the industry has seen. And it's always our effort to provide you the real-time coverage and analysis the way it happens, as it happens. The agenda for today's conference, curated by our senior editor, Ruhail Amin, reflects this commitment to the industry that we have. Uh, as you would see in the agenda, it's there on every table. It encompasses a broad spectrum of perspectives and themes, fostering robust dialogue and exchange of ideas, which are really the hallmarks of our various platforms. The theme of this edition of the conference, Television News in the Digital Era, will cover all aspects of this time of rapid technological advancements and shifting consumer behaviors, the profound transformations that television news landscape is going through, and the challenges and the opportunities it brings forth for you professionals. The people in this room don't quite need to be told how the traditional boundaries that once defined television news have become increasingly blurred. With the rise of online streaming platforms, social media, and mobile devices, audiences now have access to news content anywhere, on any device, anytime. This accessibility has democratized the dissemination of information, empowering individuals to engage with news stories and participate in public discourse like never before. However, this democratization comes with its own set of challenges. This proliferation of digital platforms has led to an explosion of content, making it difficult for audiences to discern between credible journalism and misinformation. This prevalence of fake news and echo chambers threatens the very fabric of our democratic society, undermining trust in traditional media institutions and eroding the foundations of informed citizenship. Within these challenges, we observe how television news organizations, small and big, large and medium, are adapting and innovating to remain relevant to the digital era. They're embracing new technologies and storytelling techniques that are essential for captivating audiences in an increasingly competitive media landscape. From immersive virtual reality experiences to interactive data visualizations, we see that television newsrooms now have a wealth of tools at their disposal to engage and inform viewers in creative ways. As gatekeepers of information, you've really shown responsibility to uphold the highest standards of journalistic integrity and ethics, or so we believe. In an era where misinformation can spread like wildfire, you have demonstrated how factual accuracy, impartiality, and transparency are more important than ever. By adhering to these principles, television news outlets are making every possible effort to regain the trust of their audiences and reaffirm their role as credible sources of information in the digital era. We also find how the collaboration and partnership between traditional media outlets and digital platforms are playing an important role in navigating the complexities of the digital era. By leveraging each other's strengths and expertise, television news organizations are reaching new audiences, experimenting with new innovative formats, and creating more impactful journalism that resonates in a digital world. With these words, we welcome you once again and thank you for joining us this morning. Let's get started. Thank you. Thank you so much, Sunil sir. And I truly believe the appreciation can get a little louder, please, for Sunil sir. Thank you so much, sir.
On that note, it's time to invite on stage the man himself, the visionary Dr. Anurag Batra, Chairman, Editor-in-Chief, E4M Group and BW Business World. Ladies and gentlemen, please give it up for Mr. Anurag Batra. Morning. Thank you, Sunil, for underscoring what's happening in the domain and how the business of news is getting changed and where is it headed. And we have the stalwarts and pioneers in the news broadcasting editorial domain and entrepreneurial domain here, and I'm sure they'll talk. So I won't say too much, but I want to welcome you to the 13th edition of the News Next and the 16th edition of the INBA. It's my honor and privilege to welcome Mr. Rajdeep Sardesai, who really doesn't need an introduction. Please give Rajdeep a big round of applause to be continue to be excited about news, doing news from the ground, doing content every day and keeping yourself relevant for such a long period of time and doing it in a very, very difficult environment. Rajdeep, kudos to you and God bless you. We also have Ms. Barkha, who again really doesn't need an introduction. And, you know, both of them have two things in common. They both have worked for NDTV and both have been entrepreneurs. Rajdeep was the co-founder of CNN, IBN, and really in the last 15 years, Rajdeep, now 15 years, 20 years for CNN, IBN, 5, so 19 years. And Barkha, with Mojo Story and the digital journalism she does, where as an entrepreneur, she's free to take the editorial line she wants to. So really kudos to you. We also have Mr. Bhupen Chaube. Bhupen again really needs no introduction. He started India Head and now he started Squirrel, right? So really, Mr. Rabinder Narayan, who's the MD of PTC, they're also apart from music, they have PTC News, which has again been around for at least 15 years. I could be more. Also, my friend Mr. Bhuvan Lal, who's been part of our initiatives for the last 15 years. He's been on the INBA jury, he's moderated, and he's a very prolific writer, both as a columnist, as an author of books. He's written on Subhash Chandra Bose, he's written on Lala Hardyal, and he's now writing a book on Sardar Patel. That's right. Last but not the least, my friend from France, who's rarely in France, but he's galloping to many countries. He teaches in China, teaches in America. Mr. Frederick Mattel, he's here from France to speak at a conference. Frederick, thank you so much. You drink a lot of coffee. I noticed that yesterday. I think you'd win a prize if you had an award for coffee drinking. You'd definitely win it, but we don't have one. Just to take you through the journey of Exchange for Media, Sunil talked about the fact when we started Exchange for Media 24 years back, this is our 24th year. Next year, Exchange for Media will be completing 25 years. There were very few news channels. There were less than 10 English and Hindi news channels. In the last 24 years, 23 plus years, the scenario has changed. We have more than 500 news channels. We have regional news channels. In the last 6 years, digital news channels have been added. Also, some people would say the space for news has shrunk. I don't agree with it. If you're an independent journalist, if you work for yourself, you can create a platform that can take you to the audiences that want to hear you, see you, and have a point of view based on what you share with them. The biggest change that has happened in the last 6 years is the advent of digital only omni broadcasting networks. These are channels. India has many. Barkha is doing Mojo Story. There are other journalists and news professionals who are doing this in the news domain. Me and Rajdeep were talking about sports, and he was educating me how Murdoch has bought athletic.com and Top Sports. But in India, in many news niches like sports, which is a big part of news, too, people are doing digital only broadcast platforms. So that's one big trend. Second is these platforms are also getting subscriptions. Small just now, but they will grow. Third is the rise of
fake news. With the rise of artificial intelligence, the rise of deep fake is huge. And with the rise of deep fake, uh, thankfully, the tools to be able to tackle that are also coming up fast. With the rise of AI, there are AI anchors, AI generated anchors, uh, who are also giving you news. Their personality is being followed across the world, but they're not real humans. They are just AI generated bots, uh, or personalities, uh, which are dishing out news. The fifth space is we are doing this just before two big events, the elections, and that's why we accelerated in by News Next by almost 30 to 45 days. And the second is IPL. In the next 6 to 8 weeks, almost 6,000 crores will be spent on advertising. And Exchange for Media is a lot about connecting the ecosystem to marketers and advertising. Almost almost 5,000 crores will go to IPL, and only 1,000 crores will come to rest, out of which possibly 600 plus crores will come to news channels. These numbers could be beaten, but these are approximate number and are likely to be close to what. The fact is, news is getting revenues, but it could do with more revenues. The dependence on government for advertising, or in an election season, being dependent on the players, again, is not a very good thing. The viewership for news broadcasting has to grow. As pioneers in this room, it is your responsibility to be able to grow the viewership. As the pie grows, as subscribers pay for it, even the advertising will grow. My last point is, why do we do Inba and News Next? This is an event which for the first 3 4 years used to lose money, and we used to still do this scale. And my co-founder Naval would tell me, Anurag, why do we do it? Shut it down. Because he looks at everything numerically. After I stopped running E4M 10 years back, except in by an impact person of the year, I'm not really involved in E4M. I mean, I'm very actively glued, but I'm not involved hands-on. He shut down 6 IPs. Our media quiz, which I used to love. What's your media question MQ? Our digital quiz, and another 4 IPs he shut down. But the fact is, we do it to celebrate the news broadcasting ecosystem, not just the anchors. The anchors and the journalists are the core of news broadcasting, but we also have stakeholders in a 360-degree manner. The producers, the script writers, the promo creators, the guest coordinators, the technology professionals, the business professionals, the marketing professionals, sales professionals, CEOs. So the INBA is a platform for celebrating the whole ecosystem. So I just want to say that in a very tough environment, journalists, and especially the news broadcast journalists, do a very tough job in a very hostile environment. So it is our way to be able to celebrate them, give a platform, and to be celebrate the work that they do year on year. So please give uh, the whole ecosystem a big round of applause. Clapping is good for heart muscle. I just want to say that tonight we have the awards um, in the outdoor lawns of Imperial at 6 p.m. We'll be giving out awards in multiple categories. And I know the INBA awards, Rajdi was asking me, is it 5 hours or 6 hours? Will be approximately 4 hours, and we did away with giving the bronze on the stage. And in lots of categories this year, we didn't have bronze awarded. In some categories, no silver. In some categories, no gold. So we had the jury meet on the 19th of March at the Leela Chanakyapuri, and 51 jury members split across 4 groups decided it. And then for the final excellence awards, which are basically the people awards or individual awards, or organization awards, because the rest are programming awards, programming or the work uh, related awards. These are more individual and personality based awards. They will be awarded. So be there, applaud them well. The next 3 months, the quality of coverage, the depth of coverage, and the honesty of coverage will possibly shape the future of India. These elections are very important. It is really a festival of democracy, and I hope uh, we get a
good government and we also get a strong opposition. At least that's the result we can practically hope for. Uh, that's what my hope is. We in the media are subdued. Sometimes I privately tell my journalist friends that we should be bolder. I should be bolder. I hope in the next few months and weeks, we will be able to show that we are not here just to be able to be famous, to make money, or to be popular on social media. We are here to make impact. And I can say the leaders that are speaking in News Next, they'll come up. They have been speaking their mind and telling the truth, which is the purpose of news broadcasting. I want to end by saying it is customary to thank your team at the end of the event, but I want to start the event by thanking my colleagues. We are able to do what we do at Exchange for Media because there is a very loyal, committed professionals that work with Naval, me, and Sunil to be able to do this. So I want to thank the INBA team, which is led by Priyanka, who every year puts together the awards, the jury, and the process. So please give Priyanka, Ishita, and our whole team a big round of applause. Ruhail, who's been working with us for 12 years. Priyanka has been working with us for 8 years. Ruhail is now based partly in the US. He's based out of San Francisco, so he does 3 months there, 3 months there. But he's come specifically uh, in March to be able to create News Next, which is in the 13th edition. And please give Ruhail a big round of applause. Also, my journalist friends, we are able to break every story in the marketing. I can say 99%. And I'm being we are blessed because the stakeholders, people like Rajdeep, Barkha, Bhupen, Rabindra, Frederick, they're able to share their stories, give us their time, attention, and trust to be able to do what we do. So I want to congratulate Nazia, who's the editor of exchangeformedia.com, Neeta, who leads Impact, and Simran, who leads Pitch, and Pankaj Sharma, Anand Parashar, and Vikas Saxena, who are part of the Samachar for Media team. Shantanu, Chehni, and Shohini, who write for exchangeformedia.com daily, and Kanchan, and a lot of colleagues in Bombay. We have almost a 30 people editorial team for one domain across Exchange for Media, Impact, and Pitch, and Samachar for Media across these 4 platforms. The reason we are able to get you together because throughout the year we editorially engage with you, and we do believe we have an important role to play in this industry. So thank you for being here. I hope the next 3 months we're able to see India transiting into a more positive environment, which is genuinely inclusive in every way. Thank you. God bless you. Ladies and gentlemen, the welcome address couldn't really have gotten better. Can we please clap louder for Dr. Anurag Batra? Yes, perfect. Thank you. I request everybody to kindly keep your phones in silent mode so that our speakers are not distracted. On that note, it's time for the inaugural keynote of the day. It's an honor and privilege to be calling up on stage the one and only, like Sir said, the man who needs no introduction, Mr. Rajdeep Sardesai, consulting editor, India Today Television. As we all know, Rajdeep Sardesai sir is a senior journalist and author of the best-selling book 2014, The Election That Changed India. With 26 years of journalistic experience in print and TV, Rajdeep Sardesai sir was managing editor of the NDTV network before he set up the IBN 80 network with channels like CNN and IBN as founder editor. He began his career with the Times of India and was the city editor of its Mumbai edition at the mere age of just 26. He's presently a consulting editor with India Today Group and anchors a prime-time show on India Today. He'll be speaking on the subject Elections 2024, covering elections in the age of hyperpolarization. Give it up for Mr. Sardesai, please. Pleasure to have you, sir. Thank you. Thank you very much for that very kind introduction. And good morning, ladies and gentlemen. Wonderful to be here. Dr. Anurag Batra is quite simply incredible. He's a marathon man. He carries on even as the rest of the world seems to give up on news TV. And to his great credit and that of the Exchange for Media team, that they are able to put together this event and make it bigger and better every year. So a big hand to Dr. Batra and Ruhail, Priyanka, and the wonderful team at Exchange for Media. Thank you once again for inviting me here to deliver a
opening address. I've been asked by some former colleagues to keep it very short, which I will, so that because everyone apparently now works to hard time and wants conversations to be kept, plus attention spans have become shorter. So I shall make every effort to keep it as short as possible. Elections 2024 in the age of hyperpolarization. This is an exciting time, some would say, to be a journalist. So I'm going to talk about the good news as always, but I'm also going to talk about the not so good news, because I thought that we should start this day of talking about news by being a little honest about ourselves and honest about television news. So I'm going to talk about the glass half full, but the glass that's also half empty. Ladies and gentlemen, it is an exciting time to be a journalist. That's the good news, because we're entering an election, and what better time than this great festival of democracy across the length and breadth of a subcontinental sized country to connect with our netas and, more importantly, the voters of this wonderful country. It's also the one time when generally even the most stingy news organizations do spend a bit on news gathering, sending their reporters to the ground, as a result of which ground reports for once can actually compete for attention with the studio babble that we hear night after night with the same guests in our studio. It is also for me a bit of a nostalgic election. It will be my 10th general election. Who knows, it could be my final one. The first one was 1989. It was famously the VP Singh election. It was a terrific election to observe. You know, we often believe that, or the younger generation believes, Indian politics started in 2014. It didn't. The 1989 election, VP Singh versus Rajiv Gandhi, was a classic Indian election. It was the pre-computer age, the pre-internet, the pre-mobile age. It was an age when you covered an election with the note paper and pen, or notepad and pen. You went back to office, typewriter, no pressure of breaking news. You could actually enjoy a long lunch with netas on the campaign trail. Actually, I'm a bit lucky because I still do that, which is why I called my program Elections on My Plate. Because I believe the best thing about India is the food. So you discover food through elections, but that was a quieter time. It was a gentler age. This generation is in some ways far more fortunate. Technology has made it that much easier for you to be in any corner of the country and uplink your story through a live view kit that you might have. And news is in real time. All geographical barriers have been broken. You could be in Sikkim one day, you could be in Kashmir the next, you could be in Kanyakumari the third, and you just have your kit, Mojo kit or live view kit, and you can uplink your story from any part of the world. We couldn't do that. So you're a lucky generation as we enter this election season. Now that is the good news. And that's where the good news, my friends, sadly ends. Let's turn to the not so good news. This election is taking place arguably in the most hyper-polarized atmosphere in newsrooms and outside. Make no mistake, that 1989 election that I spoke to you about Rajiv Gandhi versus VP Singh, was just as bitter and far more frenetic, some would say, than the elections of today. It was the classic election between the top dog and the underdog. But the interesting bit is it did not affect the newsroom. We gave almost as much space to Rajiv Gandhi as we did to VP Singh. In fact, dare I say, we gave more space to VP Singh because journalism in those days believed you must stand with the underdog, not with the top dog. That was the difference between 1989 and 2024. The journalists would come excitedly back to the newsroom after having covered a VP Singh rally because he was the new person on the block. As I said, elections were just as frenetic as they are today. In fact, it was the pre-electronic voting age as well. I recall an election in Mayhem, not too far away, here in Haryana, where ballot boxes were stolen,
Journalists were beaten up, television cameras were broken. So if anyone tells you it was a gentler age, it wasn't quite a gentler age. Sorry? But it was an age where I think somewhere down the line, journalists did not allow what was happening in outside to affect what was happening in the newsroom. Now, as we saw a trailer in 2019, the newsroom is almost wholly monopolized at election time, and dare I say round the year, by the top dog, not the underdog. One man, one party, one idea. We talk as journalists of having a level playing field in every area or every other arena. Level playing field hona chahiye. How much do we attempt to ensure even the semblance of a level playing field in our own profession is a question that we must all ask ourselves if we have a conscience left. A survey in the 2019 election showed that 80% of prime time was monopolized by one man and one party. Please show me a genuine democratic society where the news ecosystem will donate 80% of your time to one individual. Unless you want to be compared with a democracy or an autocracy rather, like Russia or a Hungary or a Turkey. India is not that. This is one of the world's greatest democracies, plural, diverse. If we as journalists cannot respect that pluralism and diversity, we do not deserve the respect or the status of being journalists. Then you might as well become a pamphleteer or a PR artist. Journalism was not meant to be that. What is even more troubling, my friends, is that now it is almost demanded, I use the word demanded, of journalists to take sides. Partisanship is rewarded, especially in this age of social media, where opinion has taken over from facts, where the space for so-called objective journalism is shrinking and shrinking fast. If you want your Insta clip to go viral, if you want your debate to be talked about, then whether it's on digital or whether it is on TV, if you want to get the maximum retweets, you are expected to say something controversial and as partisan as possible. Therefore, navigating this hyper-polarized ecosystem is not easy. Let's not minimize the challenge that is faced by journalists. You will, if you stay that course, you will stay the course of journalism today. You will be called names. You will be branded Godi one day, Darbari next day. Even worse, you will be called anti-national, denied access, maybe even not get your prized photo op with the Home Minister or the Prime Minister at the next glitzy conclave in the Imperial Hotel. You may even have your reporting being censored. And who knows, you may have to start one day your own YouTube channel, since mainstream media will have less and less space for dissenters. But let me say this, and let me say this emphatically. Even in this age, as one editor recently called it, the unease of doing journalism, I strangely enough remain a believer, which is why I'm still doing the same thing 35 years later that I was doing in 1988. राजीव गांधी चले गए, वीपी सिंह चले गए, नरेंद्र मोदी जी को पहली बार 1990 में मिला था in a रथ यात्रा. And the one time recently when I met him, I told him, sir, आप तो वहां चले गए, हम तो वहीं के वहीं रह गए. But that is the job of a journalist. The journalist is the cockroach in the system. He's not meant to be the butterfly. I think many of us made that mistake and conflated our popularity on TV with suddenly becoming the butterflies in the system. If you can remain the cockroach, you can still stay in the system. I call myself a believer because I believe
that journalism must take sides. But the side that journalists must take at election time in particular is the side of the Constitution and the side of your conscience. If you take the side of the Constitution and the side of your conscience, you can still do journalism. We have the Constitution, my friends, as our holy book. So tell as many stories as you can. Tell them without fear or favor. Hold those in powerful positions accountable. Expose hate speech. Expose the misuse of power. Question institutions that are seen to brazenly abuse their powers. Even if it is an institution that is called ED, and I don't refer to the election department, but the enforcement directorate. Tell the stories, most importantly, of ordinary Indians. Those who have benefited and those who have lost out. Tell both stories. Tell the stories of netas who have kept their promises and of netas who have not. The fight, my friends, that we are fighting as journalists is not between government and opposition. We don't have a skin in the game. Someone may say, "Ab ki baar 400 par." Someone will say, "Ab ki baar 50 par." That's their job. Let them make all the noise that they want. It's their battle to win. It is not our fight as journalists to win or lose. But our fight is another far more important fight. Because politicians will come and go. The constitution of this country must be preserved, of India as a democratic, diverse society. Not one where at every time on prime time, you will have anchors who will use their platform to spread hate, to spread prejudice, to demonize communities. That is simply unacceptable. And if you do that, to my mind, you are committing no less than a criminal act, my friends. It is a crime what you do. And if you look into your conscience and ask yourself and see sometimes the way you put your headlines and the way you put your top bands, ask yourself and wrestle with that C that I spoke about. Constitution and conscience will lead to the third C above all else, the one which should be most valuable for journalists, which is credibility. Ask yourselves, why have we lost that credibility? And if you can answer that question and sleep well at night, maybe you will find it easy to do journalism even in this hyperpolarized age. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I truly believe the appreciation can get a lot louder, sir. I'll request you to kindly wait on stage. May I please request Mr. Sunil Kumar, President, Exchange for Media, to kindly come up on stage and give the token of appreciation to the man himself, Mr. Rajiv Sarvasai. Zor se taali, please, ladies and gentlemen. Thank you. This is the moment that we need to appreciate, ladies and gentlemen. I can say on behalf of everyone that it was a pleasure hearing you. Thank you so much for your time. All right, ladies and gentlemen, after a really, really insightful keynote, now it's time to move to the next one. From one stalwart to the other, the topic that's going to be discussed right now is technology, AI, and impact on journalism. Ladies and gentlemen, please give it up for the one and only Barkha, that founder, editor, Mojo Story. To tell you all a bit about her, of course, there's no need for any introduction, but Ms. Barkha Dutt, founder, editor, Mojo Story, is an Indian television journalist and author. She has been a reporter and news anchor at NDTV and Tiranga TV. She currently runs her own digital news channel called Mojo Story. She's also an opinion columnist at the Hindustan Times and the Washington Post. Give it up for her, please, ladies and gentlemen. It's a pleasure having you over here, ma'am. Thank you.
Thank you so much for that introduction. And like Rajdeep, I must start by saluting the indefatigable spirit of Dr. Anurag Batra and Ruhail, Priyanka, and the entire team, because really to remain believers year after year is to show an optimism that not all of us feel every day at all times. So I think you keep us going, you help us be believers. So thank you, Anurag and team, for what you do. I'm supposed to speak about technology, the rapidly changing world around us, the fact that the rug might quite literally be pulled beneath our feet because of the rapid pace at which technology is changing how we are meant to do our job or sought to do our job. But before I get into that, I just want to pick up a little bit from where Rajdeep left. He spoke about the shrinking space within mainstream media, how more and more people are actually exiting or maybe forced to exit to start their own platforms. As somebody who did that about 4.5 years ago, I can tell you that you're not free from the pressures of hyperpolarization just because you leave one medium and enter the other. Right? So if you're under this romanticized idea that tomorrow you can leave your organization and then just start from your basement and start broadcasting and suddenly journalism's health will be restored, it isn't quite a quick fix formula, which is as simple as that. And there's a reason for that. The reason for that is exactly the hyperpolarization that I think we must spend some time discussing today. Somebody like me left mainstream television for 3 reasons. One, I had done it for 20 plus years and I felt the decline was coming. I could see the decline of television news coming. And one thing I always want to ask Rajdeep every year, and he always leaves before I can ask him that, is that, how does he remain within the system that he so honestly holds a mirror up to? Because certainly I couldn't remain in that system. Like, I found it absolutely suffocating. And therefore I walked out. And when I walked out, I was told that I was crazy, that I should just make my peace with the system, that I should just accept whatever compromised sort of version of television news that there was. And I felt like I couldn't do that. And I always want to ask him, why he has chosen to make peace with the structures that he so obviously feels uncomfortable with. So maybe Rajdeep will answer that one day. But to carry on, here's the problem. There are 3 problems that face all of us, irrespective of which medium we are in today. One, hyperpolarization, because our audience has begun to love a bias. Where I will agree with Rajdeep is that the same person, the same journalist can be attacked by all sides in the same week. And sometimes for the same story. So for the same story, I spent 20 years reporting from Jammu and Kashmir, you can be called an anti-national and you can be called a jingoist. For the same story in the same program that you do, you can be called Godi and Darbari. At Mojo Story, our motto was na chamcha na morcha. Because we said that we don't want to suck up to power. That's certainly not our job. We have to hold power to account. But we do not believe that the counter to holding power to account is to become political activists on the other side. We remain believers in what some might today call old-fashioned journalism. Let the facts speak and give voice to those who do not have a voice. I think those should be our twin guiding lights. But we are in an ecosystem where those of us who are not old and thick-skinned, I have seen younger people actually leave social media or modify what they say on social media because they seek approval of one camp or the other. And that to me is the biggest change that hyperpolarization has brought across mediums. The need for approval. The need for approval and the need for access. Because so many people have unfortunately structured their journalism on getting access to so-called important people, you get a bit unnerved when they don't give you that interview, when they don't come for your conclave, when they don't want to get, as Rajdeep mentioned, photographed with you, when they want to look over your shoulder, when they want to talk to you privately but not in public. And some people are impacted by this. Some journalists are actually impacted by this. And to them, I want to say something I posted on my Instagram feed recently that I think we should all remember. Why did we become journalists? And there's a little cartoon of an elephant sitting on a chair with a little mouse on the other chair. And the elephant is saying to the little mouse, maybe it never was about standing with the great, but sitting with the broken.
How many of us are sitting with the broken today? Because that is actually what journalism should be about. Not about your access to the powerful, not about the interviews that you score, not about, how many retweets that you get. No. And the answer to brazen, blatant sycophancy, I'm afraid, does not lie in becoming the political opposition. That's somebody else's job. That's not your job. Your job is to not look over your shoulder and tell your story as you believe that story's truth to be. So the first challenge is indeed hyperpolarization. The second challenge is the changing, rapid nature of technology. Now, technology presents you with a Charles Dickens like it was the best of times and the worst of times scenario. So let me, like Rajdeep, start with the good news first. The good news is that I do a live streaming show on my platform every evening at 5 o'clock. When I did the same show at NDTV, it took a crew of 15 people, the PCR, the production control room, and the line editor, the director, the output editor, all of it in a composite set of numbers was 15 people. I can do that show on most days with 2 people. There are days that I have done that show with 1 person. And there are days when my entire team is off and I still feel like doing a show. And I have now mastered the technology that I can do it myself. And when I say about the show, my shows don't look like a Zoom. They're not like a webinar. They have graphics and sound bites and data and shots. And if you looked at it, you would not recognize the difference between a broadcast medium and the digital medium, because we try and keep it professional. We try and keep it to the highest standards of production. So these are the great opportunities that have been enabled by technology. But here's the downside. While entry barriers have fallen, and today all you need is a skill for storytelling, a visual eye, and a comfort with technology to be a storyteller. The downside is that this is changing so quickly that apart from deepfakes and fake news, I'm afraid that we are all going to have to do 2 things. We're all going to have to upskill and we're all going to have to unlearn. Please note that I did not say learn, but unlearn. Some of us of a certain generation who've been doing this forever, the core skill that we have of storytelling, that will always be required. That skill will always be needed. But to be wedded to one kind of storytelling, one kind, when you live in an age, not just of polarization, but in an age of influencers, right? You live in an age where your political class wants to talk to influencers because they're speaking to a generation that classic journalism isn't speaking to. So you're being a journalist at a time when people who probably never stepped out of their podcast studios are very successful brands. Now you can do 2 things. You can either whine about it, resent them, or you can learn your own version of contemporary storytelling. You can either look down on the Instagram generation or you can be part of it but not lose yourself. So how do you remain authentic to who you are? Don't become somebody else, but how do you remain agile in this system? So unlearn. Don't be wedded to the old way of doing things. There is no ego. And there should be no ego. And I'm saying this as somebody who is hitting 30 years in this profession. There should be no ego in saying, I used to do it this way. I now need to learn to do it another way. There should be no ego in saying, you know what, as a multimedia editor, I want to learn how to do my own camera. I want to learn how to put up a light if I have to. I want to learn how to make a graphic. I want to learn how to make a thumbnail. Because guess what? The media is moving rapidly towards 1-person composite units. That is what technology is doing. And the bad news is that if we do not upskill and we do not unlearn, there are a host of professional jobs, I'm afraid it's coming sooner than we think, that are going to become redundant. You can already shoot an entire movie on your iPhone. You can already do basic editing use in Shorts, and you can already use artificial intelligence for everything from generating videos to editing them, to subclipping them, to transcribing them, to adding B-roll, right? We know this. Each one of us knows this in this room. So upskill,
and unlearn. Otherwise, technology will not be your friend. It will be a disruptor in a bad way. But technology can be your friend. So get ahead of technology, make technology your friend. And the last challenge, which we haven't spoken about enough, I mean, there was a broad reference. I think Anurag made the reference to how much money is going to IPL and how much money is actually being shared between the rest of the ecosystem, is revenue. Newspapers depend on government. Television depends on big business or government and the market. And the internet now depends on clicks. And I think once on this platform, I said we moved from the tyranny of the state when media was government owned to the tyranny of the market when advertisers and your ratings drove how many sponsors you got, to the tyranny of the algorithm. The clickbait headline, the need to say ki kaun mere link pe click karega. In a saturated market, in a fragmented media market, these are challenges. And that is in turn leading to a kind of hyperpolarization. Right? Because people feel the more partisan I am, the more biased I am, the more provocative I am, the more controversial I am, the more likely somebody will click me. That desperate hunger, dependence on the click is a very worrying trend in media today. I do believe that what matters and what will remain at the end, no matter how many platforms or jobs artificial intelligence takes away, is the relationship between you and your audience. I think we stand here today on the graveyard. I'm sorry to not be a believer in the way that people before me have been. I think we stand here today on the graveyard of news as we once knew it. Let us please be honest. If I were an 18-year-old today in college and I looked at television channels in the way that they are, I would not have become a journalist. And I love being a journalist. But if this was the media on broadcast forums that I was exposed to, hate mongering, shrill, shouty, hardly any ground reports, hardly any voice to the voiceless, I would not have become a journalist. So I think it's time to acknowledge that we stand on the graveyard, on the debris of a certain kind of journalism. And the question before us is, what are we going to build on top of that debris? What is the new building going to look like? Can it contain authenticity while still having the agility to adapt to a technology that is coming at you like a tsunami? And we try and do this in our own small way, but I can't say to you, I'm not going to be a big pretender and say to you, we have all the answers. We have cracked the revenue model. We have cracked how to, use Snapchat and Discord and Instagram. We have cracked how to, at 52 to talk to somebody who's 22. We have to acknowledge that things are changing. And if we don't acknowledge that, we can keep pretending, keep going on as if nothing has changed. But I'm sorry, everything has changed. And now the challenge before us is, how do you become somebody that your viewer trusts? It all boils down to trust. Even if they abuse you. I've noticed something very interesting. Like sometimes you go to these events and you'll meet somebody and they'll come and they'll be very friendly with you and they'll say, I'm so-and-so, and you won't kind of know them. And they'll say, don't you remember we had this big argument on Twitter? And I'll be like, ha, acha. And you blocked me. Can you unblock me? And they'll be absolutely convivial in real life. This has happened to me on multiple occasions. I've stopped blocking. I now don't block unless there's hate speech or abuse. I just mute because I've learned over the years to not get into social media arguments. But what it does tell you is that as long as your audience is engaging with you, even if it's to disagree with you, it's engaged with you. It's because they take you seriously enough to even pick on you. It's because everything is not about praise. Sometimes people have reactions because they come from their own positions of bias. They're seeking confirmation bias. They're seeking for you to reinforce what they think. And when you don't, they call you biased. But you shouldn't give up on that moment. You should say, this is what I believe. Let's agree to disagree. As long as you engage with me in a civil way, I will keep talking to you. And that is my philosophy. I will allow all opinions on my platform as long as they are not sexist, as long as they don't slur another community, they're not hate speech, and they're not patently false. You can't have somebody saying something patently false and not stop them. You can't have somebody saying patently hateful and not stop them. But my belief, old-fashioned as it is, and I will then start winding down, is your audience should not know from your work your voting preference. The audience should not know who you vote for. And your work has to rise above the noise of political polarization.
It's not easy. It's not easy at a time when the journalist fraternity is othered. It is treated as the adversary. It is made the enemy. It is, as Rajdeep said, denied access. Often, there are things that I used to love reporting on that I can't report on today because access has shrunk. Access to even, so many things that we took for normal. I'm not talking about politicians or political access. Other kinds of access has shrunk. What a PIB means today has completely altered. Some of you who have a PIB card will know that. But yet, nothing can change. No AI, no deep fakes, no fake news, no disruptive technology. Nothing can ever change the relationship that you choose to build between yourself and people. And if people start seeing you as somebody who's willing to tell the stories that other people aren't willing to tell, as somebody who's willing to bring the margins to the center, and as somebody who is prepared to remain civil but strong in the face of provocation, in the end, they may not like you, but they'll respect you. And I believe that the biggest mistake that journalists have made is to seek being liked instead of being respected. So may we embark on a new journey of journalism where we look for grudging respect above easy likes. Thank you very much. Ma'am, I'll request you to stop. Ma'am, I'll request you to wait. Ladies and gentlemen, please give it up for her. We have this mic on. Yeah, thank you. It's an absolute privilege. We have space for one question because it will be gross injustice if we let her go without a question. So does anyone have any questions for Barkha ma'am over here? You may raise your hand. There. Can we please have a mic over there, please? For over there, behind. Please mention your name, sir, and direct the question. I'm Indra. Hi. What we think, if people doesn't think is bias, why it is? I didn't understand. What do you think? Huh? What is your ideology? If people doesn't think the same way is bias, why? My ideology as a journalist is to tell the facts as I see them. I literally tell people I work with that once you've done your story, uska kya reaction hai, wo padho hi mat. I don't read comments. I do not read the comments under my Twitter or X account except to speed read sometimes for information. Sometimes somebody sends you an idea. Can we contact you for this? Can you speak for this? Can you share your number? It took time. Look, I wasn't born being so I don't know, thick-skinned or indifferent or strong. You could use the adjective of your choice. But to pick up what I said, हमारा काम नहीं है आपकी मतलब किसी की भी अप्रूवल लेना. जब जर्नलिस्ट अप्रूवल लेने लगता है या अप्रूवल के लिए खोज करता है तो जर्नलिस्ट गलती करती है. The गलती is you will, even if you think something, you will change it in your public expression because you feel यार मैं ये बोलूंगी तो वो कुछ ऐसा बोलेगा, मैं ये बोलूंगी तो वो वाली साइड कुछ ऐसा. You have to shut that out. You cannot care. I'm sorry, it's a very counterintuitive thing I'm saying, but you cannot care about being liked. You absolutely cannot care about it because I have seen people, I have known people, I have worked with people and I have seen them say things I know them to not believe because they want the approval of camp A or camp B. We all have friends who do this. They either do that or they don't express. They'll say, हमने तो जी बंद ही कर दिया है social media पे कुछ बोलना. The number of people in corporate India who say that today. हम तो जी कुछ बोलते ही नहीं है. So there are three ways of doing this. Be silent. Modify what you actually think because you want approval, or do not engage with other people's opinion of you. The best we can do is to be truthful to ourselves. That's the best we can do. Thank you so much, ma'am, for answering that question. Give it up for her, please, ladies and gentlemen. Thank you. We have space for one more question, and that would be the last one. We have somebody raising his hand over there. Can we please have the mic passed over there? Yeah. Please introduce yourself, sir, and then direct the question. This is Praveen Sinha. Hi. I have a company called People and Planet India. I was listening to you and it's very interesting. I have one question. Ji. In today's context Ji. and tomorrow's context, both, what are the top three core values of journalism? My first core value is authenticity. I think too few people in Indian media have remained their authentic selves.
अगर आप आज लोगों को देखेंगे आपको वो थोड़े बदले हुए नजर आएंगे या दे आर ट्राइंग टू बी कूल इन अ वे दैट दे आर नॉट दैट. अगर आपको वो नेचुरली कूलनेस क्वोशिएंट है तो आप बनिए कूल, बट पीपल आर नॉट देमसेल्व्स. I feel that the best journalists in broadcast are those who are the same when the camera is on and the camera is off. Same. Even the way of talking, even the informality, even the way you use your hands, authenticity. The second core value is passion. If you do not love this profession, you cannot do it because it is not a structured profession. It is more difficult to be a journalist today, by the way, not just in India, but everywhere in the world. If you look at the United States of America, I just returned from a conference there, and one of the most important magazines had a piece, the New Yorker had a piece called The Extinction Age of Media, because 3,000 people lost their jobs in America. A new digital company, they raised $50 million in funding, had to shut down in 1 year. So everywhere, the combination of polarized audiences, hunt for clicks, the broken revenue model, and the disruptive nature of technology is creating a very, very difficult moment for journalism. So therefore, after authenticity, passion. If you don't love it, don't do it. This is not a tick in the box for your resume. It is simply not. And the third, I would say a combination of courage and compassion. I think if you can't feel what other people feel, if you can't show empathy, right, you can never tell the stories of people and what people are going through. So empathy and compassion, and then the courage to tell that story, even if someone may not want you to tell it. Wonderful. Thank you. Ladies and gentlemen, give it up for Ms. Barkha. Please, once again, ma'am, it's an absolute pleasure to hear it from you live over here. Thank you. I request Ms. Priyanka Badoria, Associate Director, Events and Marketing, Exchange for Media, to kindly come up on stage and give her the token of appreciation. Give it up once again for Ms. Barkha, ladies and gentlemen. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, from one keynote to the other, now it's time for another insightful conversation. We have the privilege of having Mr. Bhupendra Chaube, senior TV journalist over here. He's going to be talking to us about, can new age digital media ever replace legacy media? Can we please give it up for Mr. Bhupendra Chaube, please, ladies and gentlemen? I believe the appreciation can get a lot louder. Yes. Thank you, sir, for joining us over here. Hi, good morning, everybody. It's great to actually be speaking after Rajdeep and Barkha, because both of them represent two very contrasting and, may I say, polarizing, since polarization has been the buzzword today. Two very contrasting positions, always taken by two of my very dear friends and former colleagues, and I. Vikram will, of course, have his own take on technology and his own baby editorial thereafter. But, honestly speaking, I mean, Anurag is not here, but I would have loved it if actually Rajdeep and Barkha were here together. Because I really feel that there's no point of trying to, to hit a dead dog or flog a dead horse if you are not going to be able to give some kind of a roadmap in terms of how to move forward. Every year I say this, that we can say the glass is half full, we can say the glass is half empty, we can say we're sitting on the graveyard of television and journalism is dead, and we can keep repeating it, every year. But then what next? Fine, I agree there are challenges. I agree, that there are problems which are being confronted by our industry. But if we are to remain journalists, if our brief and if our mandate is to continue to tell stories, how are we going to do that? It's in that context that when Dr. Batra and his team approached me, I thought that let me speak about the challenges before legacy media and try and address this, whether legacy media indeed has been replaced by new age digital media. Because what is now happening in front of us is that legacy media platforms themselves now want to be repositioned as new age digital platforms. You look at any television channel, you look at newspapers, everybody now wants to run on the gravy train of digital bandwidth, digital content creation, digital business plans.
Just last week, I was sitting with the top CEO of one of the biggest media companies in our country, and I was amazed that the maximum amount of investments now, even for legacy media platforms, are being made in terms of how to move forward on a digital landscape. So I asked that person that will it ever be possible for a legacy media company to completely junk what it may have, let's say, stood for, or what it may have achieved over the last 2 decades, and reposition it completely as a new age digital media company? And the answer really amazed me. I mean, I was given all kinds of numbers, with a land of 1 billion internet consumers, the number of people who are consuming everything on mobile phones. Business World, does a lot of interesting analysis often of the numbers of people. What are we really going to do at the end of the day with this mass of internet consumers in our country? Any story that you do on a newspaper or a television channel finds its way now on Instagram or Twitter. I have now actively, in terms of daily primetime broadcasting, I have not done it now for the last 6-7 months, because I've been building my own platform called the squirrel.in. And I'd urge all of you to go online and look up that platform, where we're trying to build it as a data center. Any story which can be explained in 5 facts, any story which can be explained through numbers, that's the task, that's the challenge that I've set out for myself. Squirrels.in, https://squirrels, the squirrels, THESQUIRRELS.in. And it's still in its infancy, it's still in its initial stages. But I don't wish to be taken over and completely consumed by, as I said, that the graveyard of journalism, or the death of television philosophy. I really feel that if we have to remain relevant as journalists, we need to figure ways out of challenging what legacy media platforms, what big brands are really offering you. There is a huge information vacuum. Just ask yourself, where do you go when you really need, you need to verify some fact? You've heard of some rumor. You've heard of some comment. You want to know what is the backstory of that comment. Look at platforms like Bar and Bench, Live Law. Increasingly, I am now seeing top judges of the country are not responding to what may have been written in a newspaper or what may have been spoken about the previous night by a high-flying television anchor. The commentary, the context setting, the information gathering mechanism is all now happening on online digital platforms. And that's why I believe that it's time for us to stop looking at legacy media platform as the only media. If you stop looking at legacy media platforms as the only media, I think a lot of these challenges which my previous 2 speakers have spoken about automatically go out of the window. So let's then try and address it. What are the challenges for this new beast? How can we make the most of this new beast, this new baby, which is the digital platform, which is the digital media? And can we as consumers and providers both, we're consumers of news, we're providers of news as well, what is it that we can do to ensure that the quality which has clearly come down, how can that quality perhaps be resurrected in some forms? And that's where the context of data comes into play. I don't know how many of you look at the sentiment analysis which comes out every quarter by the Reserve Bank of India. There are companies here which do regular in news terms what we call mood of the nation. Around election times, there are election surveys, and you can figure out which party has what probability of doing how in a particular state or at the center. But there is a lot which is happening in our country, in terms of technological advancements, in terms of the number of startups which are coming up, in terms of the R&D which is today going in space tech. I spend a lot of my time now looking at these new age innovations. And guess where am I getting all these all this information from? I'm not getting it from a newspaper. I'm not getting it from any of the explainer series on a television channel or in a newspaper. I'm getting all this from new age platforms. There is a platform called TICE, TICE. It's a startup focused platform. You look at the kind of commentary which is going on. Look at the kind of information, data which you are getting. I'm afraid that the time has now come for us to, I think, in large ways, dissociate ourselves from our own addiction, I think, to legacy media.
I'm making an attempt myself, and I say this as someone who's been a part of the television business now for 2 decades. And I've been associated with NDTV and Network 18, and before I took my own path and launched India Ahead, relaunched India Ahead, I should say, as a television channel, and that is going through its separate journey. But now, when I look at the kind of response, the kind of questions which I often get for squirrels, when I look at where am I going if I have to validate some opinion that I may have had, I get more and more convinced that the future, the present and the future both, is the new age digital media. The credibility, somebody was talking about, the 3C question. Well, let me throw another adjective. We're in the ICE phenomenon, the ICE age. Information, credibility, explanation. And I'm afraid none of these three factors are being addressed today by legacy media. That's where I think the attempt must be made for everybody who's here associated with journalism or interested in journalism to try and look for these new age platforms, some of which I have spoken about. If you yourself have an ability or you have a desire, the bar has come down dramatically to start up something on your own. If you think you belong to the hospitality sector, let's say, right? A few years back, a biryani chain owner had come to me, and I'll tell you, I'll leave you with this story. And the guy came to me and put this thought in my head that why can't a biryani chain be in cloud? Why do you need a physical restaurant? And he spoke about a food product more as a content piece than a food experience. Today, that company is worth $50 million. It has just 2 or 3 restaurants, like small hole in the walls, across the country. And it seems to be doing remarkably well. They're on a global expansion spree now. So I leave you today with only this fact. Please don't think that this is a graveyard moment. I think it's a moment of great opportunities. We're an extremely chaotic democracy. We're now in the midst of a massive election season. We're in a highly opinionated society as well. Opinions require validation. Opinions require confirmation biases. Sometimes some of us who maybe had the freedom of expressing ourselves very, very freely each night, sometimes when we don't get that validation from the viewer and we end up being, as Barkha said, we end up being othered, we start thinking that, this is where it all ends. This is not where it all ends. I'd like to leave all of you this weekend with this thought that this is where it is beginning. The election season is upon us. And you will see all kinds of theories, all kinds of questions being raised against journalism, against media. You can, if you adhere to a particular political ideology, you yourself know which are those YouTube platforms that you should be going to, or which are those editorials. Today, we've unfortunately reached a scenario where you don't need to read an edit piece. You will just know who's the person, which is a platform, and by and large, 6 or 7 out of those 10 things which would be there in the editorial or in that opinion piece, you would know that. So I stand before you not as a naysayer. I stand before you not as a part of the pessimistic club. I stand before you as part of the optimistic club, because I believe that in a country as big, as complex, and as diverse as ours, a few television channels, a few newspapers, maybe challenged with a broken down business model, cannot stand here and say that this is the graveyard of journalism. I wish all of you very well, and congratulations once again to Dr. Bhatha and his team. Thank you so much, sir, for being with us over here. Can you please clap loud, ladies and gentlemen? Yes, thank you so much. One request before I open the floor for questions, I request all of you to kindly keep your phones in silent mode. We don't want to distract our speakers over here. So can we please have all our phones in silent mode? And on that note, we have space for 2 questions. So does anyone have any question over here? If you can please raise your hand in case there's any question. Do I see any question over here? I think sir was pretty crystal clear. Great. Thank you so much. I request you to wait, sir. And I'll request Dr. Bhuvan Lal, Creative Entrepreneur, to kindly come up on stage and give sir the token of appreciation. Give it up for him, ladies and gentlemen. There. Thank you so much. Give it up for Mr. Bhuvan once again, ladies and gentlemen. So, Sitali, please. Thank you.
I'll quickly give the team over here a bit of time to set up, and on that note, we're here for the first fireside chat of the day. The next discussion is a fireside chat on our regional channels surpassing mainstream ones in projecting the Indian narrative globally. Ladies and gentlemen, please have the highest round of applause for Mr. Ravindra Narayan, MD and President, BBC Network, and Shantanu David, Special Correspondent, Exchange for Media for this one. Please give it a hand, ladies and gentlemen. This is the start, and you hold on for 5 minutes. We are getting our moderator. So, ladies and gentlemen, this is the moment we need to clap and appreciate. Thank you so much, sir, for being with us over here. It's an absolute pleasure. The stage is all yours. Thank you. Good morning, everyone. I'm so glad this is the first fireside session and not after lunch because those get a little tricky. Mr. Nand, PTC is one of the most prominent Punjabi news channels, but more interestingly, it's one of the only, it is the only Indian news channel impaneled by the White House. So could you first tell us about how that came about? See, I sincerely believe that all the innovation and all experimentation is being done by regional channels, be it from the north or the south. Globally, the main reason of our success is that the Indian diaspora, which is settled abroad, especially in USA, Canada, Europe, and Australia, they miss their roots. They want to know the news as well as they want somebody to tell the news about them, about their country, about their politics, and how it impacts them. In USA, we're proud to say that we're the only news channel which is embedded in the White House. The reason is the presence of very strong Punjabi community. They are very vociferous, they're very participative, and they take the politics and the running of governments very seriously in those countries also. You will see that many of the campaign managers, many of the lobbyists, many of the community leaders are very well entrenched into the national, federal, and state politics there. A lot of Indians hold very important positions. So, unlike the Indian news channels which exist in India, who are merely broadcasting what they're broadcasting here in those countries, we decided to set up a studio, have a staff dedicated and responsibly reporting about the developments which will impact the Indians settled in those countries. We have 23 reporters across 19 countries in the world. Our coverage of the world was one of the largest coverage that an Indian network has done across the globe, and we won several awards for that coverage. The second reason is that when we set up shop there, we understood that these new generation Indians in these countries are not so much worried about what Narendra Modi is doing in India or Rahul Gandhi is doing in a roadshow or a Padayatra. In Canada, they are worried about what is Trudeau doing today and how is this decision going to impact my housing problem or my community development or my group housing or my paid or my salaries or my expenses. The economy is going in crisis. They need to know what the government is doing. Unfortunately, none of the Indian channels were reporting on it. So they had to rely only on the English media. Many of the people living there do not even understand that language that passionately as their own language. So when a Punjabi channel tells them about what Trudeau is doing, or when a Trudeau visits our studio, gives an interview addressed for the audience in Canada, which is Indian, it makes a huge impact. Then when we discuss social problems there, the divorce issues, the domestic violence and the other issues,
it impacts their daily life. What has been happening that the older generation misses the information from here, while the younger generation needs the information of their surrounding. That's the problem. Now, you'll be very shocked to notice that in Canada, the battle is not between the Canadians and Indians that they're taking over. The battle is between Indian Canadians and the Indians who are going there now. But they think their Indians are going to capture their jobs, their opportunities. So there are a lot of issues which make us very, very relevant, which is why we decided that 30% of the content in those beams will be sourced and produced in those countries. That is how our journey began about 10 years odd ago in US, Canada, and Europe. And in USA, we're proud to claim that we are the only Indian channel panel in the White House. And what they would have seen through their rigorous screening process, that we are credible and we are authentic and we matter. That's why I'm powerless. So that answers your question. And that answers quite a few questions. But I had to ask that, because how comfortable are you with this term regional language? Because, it's sort of mainstream seems to be divided between Hindi and English, but like there's so many communities, like you so rightly said, who have their own identity. So could you comment on that? See, calling ourselves regional is a very Indian and India-based mentality. Nobody in Canada calls us regional. They call us Indian channel. Everywhere else that you go, anywhere in the country, they'll call you Indian channel. Or at the most, by the language that you're broadcasting, a Punjabi channel, or a Tamil channel, or a Telugu channel. It's only here. And that's because the mindset here is that Indian news channels being Hindi channels, or at the most some English channel, which are based in Delhi. Except those channels which are not based in Delhi, except those channels who are based in Delhi, all other are regional. They maybe talk about national politics, but they're regional. So that's not the problem with us. And as I told you, expansion, experimentation is being done by regional channels. And they are the ones expanding globally. You go to Dubai, you will see Asianet, Sun TV, and PTC, the power of those channels. They are watched more. I'll give you an example. In UK, there are bar ratings. So we operate in countries where there are ratings, and there is no rating game. So in UK, there is bar. And every week, at least twice, or at least once, we have a number one Asian channel. Asian channel means your Bangladeshi, Sri Lankan, Pakistani, Indian, Nepalese, all these channels put together. The Star, Z, Sony, all of them put together. BBC beats all of them in ratings. Now, why can't we do it in India, or why can't the news channels do it in India? Now, I'll give you an example. You can have an exclusive interview of the Prime Minister of this country. You can have the live coverage of a bomb blast of this country. But the ratings of a SARS movie will beat that. Right. Yeah. So the rating games is a very flawed game. We succeed in those countries because they rate you on your credibility, on your reach. Now, a Prime Minister of Canada or of Britain will give an interview to BBC because he knows the channel is authentic, has credibility, has the eyes and ears of the voter that matters to them. Right. Which is why they come to us, which is why business comes to us in those countries. 60% of our business in those countries is generated in those countries. There are very few advertisers who want to advertise in Canada, USA, or Europe. Most of the deal is financed from the advertiser in those countries. Why does it happen? Because we don't have this flawed rating system in Canada, USA. It's not so. There is no rating that Asian channels are involved in USA or Canada or Australia. It's only a reputation. Are you authentic? Are you credible? Are you? Do you have the following of the people? That is the only credibility. Unfortunately, it is not so in India. An NDTV or an Aaj Tak or a India News or India TV, none of these channels put together will be able to match the rating of a Star, Z or a Sony. Is that the true picture? No. If it is true, then Modi and others should be aiming to get a feature role in some fiction serial in some of these entertainment channels. Right. Why they are after news channels?
The country is voting, you're electing your Bhagya, Data, or whosoever in the country will run the show only based on the news channel coverage. And the ratings say news channels don't matter. So this flawed rating system is only in this country, nowhere else. Which is why I've been fighting for CRP, content rating point. If the news channels get CRPs, I'm sure they will have better rating, better business opportunities, and more hyper local advertising, which we are able to do in those countries. Now, I'll give you an example how globally we are addressing it and what is the problem in India. In India, you have a satellite transmission mandatory for uplinking and downlinking, which means only one beam can go up and one beam can go down. But in Canada or USA, we have separate beams. My East Coast beam is different from my West Coast beam. My advertising, my content, my timing in those beams is different. That is possible because I'm not supposed to go on a satellite with a single beam. I can go through IP, I can go through P2P fiber, I can go through cloud playout, and I could have varied advancing, varied regions. It's not possible here. Why does our government not change the system to CRP system and allow non-satellite based transmission? Whatever punishment you can give for wrong content broadcast on satellite, you can give the same problem, same punishment on a fiber-based or internet-based transmission. We don't have those. We are not forward-looking. We don't believe like a playing field. We should. All television channels in India should protest. Millions of dollars of foreign exchange is going in huge uplinking and downlinking costs to the foreign satellites, which are operating out of Russia or US or Europe or Singapore. And you can't even control them. The beams you can't control. Here you can control everything, and you're not allowing a YouTube channel operator to be on the same platform as a national channel or a regional channel which is on satellite. So not only the business will grow, that's how we survive in those countries. We have a different set of advertisers in Vancouver, a different set of advertisers in Toronto, and we can maximize our revenue through those varied beams. If I have the same opportunity here, even Indian news channels or whatever channel can make more money, can be more relevant locally. So this is how the global expansion of Indian channels is happening by innovation. So we innovated, we did cloud playout, we did fiber-based signal delivery, and those governments allowed it, and we are not battling with the rating system there. That's the key to success there. Right. And, like you said, that basically the Indian diaspora is among the most economically impactful around the world, and you sort of cater to them in all these different countries. So which are your biggest markets abroad? Canada, then Europe, USA, Australia, and Pakistan. No. Pakistan, a very big market, then Indonesia, Thailand. Basically, wherever you find Punjabi. If I have a reporter in Ghana or Belgium or Spain, which means I generate money out of there. I have business there, there is audience. Right. So I would say these are the markets which are very, very relevant to us. Right. And so, with the elections coming up and about half the world's population about to vote, and you have channels, the PTC in local languages over there, like you said, you have Trudeau coming over or Sunak and so on and so forth. So, could you tell us that how are you managing that? Exactly, that's what. In which are leading up to the campaign election, we will be following that. I have a network of 6 reporters across USA, which are reporting every day on what is happening in electoral politics there. Right. A lot of mayors, a lot of MPs, a lot of secretaries on television channel, they give interviews, they talk about what their plans are, and we cover the election functions, the lobbying, all that goes behind and in front of the screen in those countries. Oh. Canada, again, I'll tell you, started in 2012, there were about 2 or 3 Punjabi MPs there. Now there are 19.
The next prime minister of that country might be sick. Right. He already is running 2, 3 local governments. So that's the power of Indians abroad, and we cater to that community. We give them the voice. We become the bridge between the Indian residents in those countries and their world, their business, their economy, their politics, everything that happens around them. We become the house, we become the bridge between them. Great. And I think we have time for one question. Sure. Does anyone have questions? Or is everything been nicely done? Does anyone have any question? Please raise your hand and wait, I'll come to you. Please mention your name and then direct the question. Hello, myself Shazia from Galgotias University. Sir, I want to ask that what future trends do you foresee in regional channels to project the Indian narrative in global stage, sir? See, regional channels are right now poised for business and viewership success. They're innovating, they're expanding, they're easy to adapt new technologies rather than the second peripheration of established mainline channels. And they're very, very adaptive to change, which is why they're succeeding. The key is change, and the key is adapting new technologies and being relevant in those local markets. If you're relevant in those local markets, if you address the current generation of Indians there, you'll be relevant and you'll succeed. Perfect. And we're right on time. Brilliant. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the you can get a lot louder, please. I request you all. That's the versatility that experience brings to the table. I'll request Shantanu to kindly give away the token of appreciation to sir. Can we have the token of appreciation on stage, please? Thank you, sir. It's an honor and privilege to listen to you live over here. Thank you so much for your time. On that note, ladies and gentlemen, it's now time to move forward. I'll quickly give them some time to get this sorted. We have a keynote address happening right now. And I believe, should we go ahead or let them clear up the stage first? Or then we can go ahead. Okay, thank you. Thank you so much to you both as well. On that note, we have a keynote right now, ladies and gentlemen. The subject that's going to be discussed right now in an anchor-driven news business is ground reporting still the ultimate high. We have the privilege of having Mr. Vikram Chandra, founder, Editor-G Technologies over here. Please give it up for him, ladies and gentlemen. As you all know, he's an Indian journalist who founded Editor-G Technologies, a multilingual video news platform. He set up Editor-G in October 2018, positioning it as a disruptive offering in the digital news space. Give it up for him, ladies and gentlemen. Once again, please say. Thank you, sir. The stage is all yours. Hello, everyone. Yeah. Hello, everyone. It's always great to be here. But sometimes I can't help but feeling a slight sense of deja vu, because what often happens at these News Next events is Rajdeep starts off by saying all that's wrong with the industry. Barkha follows on. Bhupendra comes in and says his bit about the things that are going wrong. And then I come up out here talking about how AI and other things are going to be used to transform all of this, right? So it's a bit of a script, which I'm going to try and deviate from just a little bit to talk about something slightly different. But before I do that, let me just refer to some of what we have heard before. And yes, it is true. The industry is in crisis. Yes, it is true that there are things that are going wrong. And we have to find a solution to it. Because, as we've heard before, it is perfectly true that biased news, opinionated news, views is what works. Journalism should be about being balanced, should be about being unbiased, should be about being credible. It should be about telling people what's actually happening out there. That's the reason all of us got into journalism. Doesn't quite work that way, unfortunately. TRPs come not from being factual and correct and telling the accurate picture. TRPs come
from being opinionated, from having people shouting and screaming at each other in studios. That's where TRPs come from. Digital media, which many of us thought would be the solution, also didn't work in the manner that we had hoped it would, because like TRPs come from that, biased news, opinionated news, shouting and screaming. Clicks also seem to come from that same thing. And that's because we live in a tribal society. We click on things, we like things, we watch things, we retweet things, if it matches what we actually believe in. That's just the way things are happening. And therefore, you've been hearing me saying this the last 5 years. None of this is a particularly big surprise, by the way. We have known that this is the state of the industry, and this is the way that the industry is moving. Not today. We've known it for 5 or 6 years. You don't believe me? Rewind to, I think, a very similar address that I would have given 5 years ago or 6 years ago when I actually quit television news way back in, what was it, 2016, 2017, to set up Editor G. And if you play back what I was saying at Newsnext, roughly around that time, 2018, all of this was said. Where the solutions need to come on also was said. So I'm not going to repeat myself. I promise you too much right now. If you really want to see it, you can see that. In a nutshell, though, one of the things that I have always believed in is that new ecosystems will need to be created. Yes, this is a tough time. This is a bad time for journalism. It is a bad time because what is good journalism is not necessarily rewarded economically in revenue terms. Good journalism, the stuff that we all believe in, be factual, be correct, tell the true story, it doesn't get rewards economically. Will that be the situation forever? I hope not. Will there be new paths that will be found? I hope so. And therefore, a quick update. That's really what we've been trying to do at Editor G, try and find new ecosystems, try and find ways in which you can use technology, use AI to try and build the ecosystems of the future. And so before I go forward into what I'm here to talk about, why I'm out on the field again reporting, I will give you a couple of quick updates on how that is going. From an Editor G point of view, we've now got a full-time CEO, which is great. Someone who's moved, Nitin Chopra, moved from Meta to come in and to build this. And we are going to be scaling that. We're going to be scaling that with our PSG group very aggressively in the next year, 2 years, hopefully trying to find a new ecosystem that will point a direction for the way this can move. And I'll find another occasion to talk about that greater length. So now that I have a full-time CEO taking care of Editor G, that's great, which is why I have had the chance to get back now to doing something that I truly love, which is returning to the field. And for once, therefore, at Newsnext, Ruhail, with your permission, I'm not going to do the usual stuff about talking about the business models and about why TRPs are so bad and how AI is going to solve all of these problems. I'm going to talk about something else that is intrinsic to the cause of journalism, which is getting out into the field and actually telling the story which is out there. We all talk about how balance has gone. Yes, that's a problem. But something else that seems to have increasingly started to disappear from journalism is actually getting your hands and your feet dirty. Going out into the field, going out into the fields, getting mud on your shoes, finding out what's happening on the ground. What's happened to that journalism? I'll tell you what's happened to that journalism. Like with balance, like with the lack of bias, it doesn't pay. Why would companies, why would television channels, why would other people invest in the time and the effort and the money to travel around, to go into the interiors, to take camera crews around, to try and find out ki zamini hakikat kya hai, when it is so much simpler, so much cheaper, so much more rewarding in financial terms, unfortunately, to just sit in a television studio, get 2 spokespeople in and ask them to shout at each other. Shout at them also, do some yelling and screaming. It works. You get TRPs from that. But why are you going to go out into the interiors? You know how hot it is out there. You know how uncomfortable it is out there. Driving around, rattling around. Okay, the roads are much better than they once used to be. Why would you do it? But the answer is, if you don't do it, how are you really finding out what the stories are? So that's a real challenge. And by the way,
I have to tell you that in a sense, the liberation I felt in the last, I've already done 1,000 kilometers, by the way, Amroha, Rampur, Muradabad. I was in Dosa 2 days ago, 3 days ago with Sachin Pilot, with Bhupinder Yadav in Alwar 2 days ago. And I can tell you those questions are asked everywhere that I have gone, and I have met people and I've spoken to them. I was with Mehboob Ali in where was I? That Amroha about a week ago, and he asked me a question that I must say all of us have to sit and think about a little bit. He said, "भाई आप लोग सब पत्रकार क्यों बने थे?" He said, "पत्रकारिता का मतलब होना चाहिए कि आप लोग यहाँ आए, क्षेत्र में आए, जमीनी हकीकत की जानकारी लगाने की कोशिश करें। पर आप लोग क्या करते हैं? अगर आप पत्रकार हैं, आप क्या करते हैं? आप स्टूडियो में बैठ के नफरत फैलाते हैं या स्पोक्स पीपल से बात करते हैं। ये पत्रकारिता कैसी हुई?" And I didn't have a real answer to him because what he said is correct. And I know why it's happening is because there's no business model. Now, I know it's very, in a sense, many of you will look and say, yeah, it's all very well for you to say you had your own company, you sold your own company, you have the luxury of now going out into the field. You've even got yourself a CEO to run the company. So now you can do it. You can get out into the field and report. And that is true. Maybe I have to say that I'm lucky to get a chance to get back to doing what I once loved. But I do want to say the question that Barkha was asking a little earlier, that Rajdeep was referring to, would you have got back into journalism? Would you have done journalism if you're starting right now? I think what the last couple of weeks have shown me, and hopefully I will still feel the same way after the next 2 months, I'm now again being reminded of why I did this 30 years ago. Why did I get into journalism? And that is the passion that all of you who are young people out here thinking about getting into the profession. I will tell you, that is where the true high will come from. That is where the true excitement will come from. When you do what is difficult and uncomfortable and go out there and report from the ground, that is the ultimate high in journalism. It is not being a studio anchor. It is not sitting in the studio. It's not sitting in comfortable air-conditioned studios. I think I said it in one of the first piece to cameras that I did on this entire series when I said, अगर आपको चुनावी विश्लेषण करना है, तो आप air-conditioned studio से नहीं कर सकते हैं. आपको क्षेत्र में आना ही पड़ेगा. And I think that's where you will eventually find the high in that. Now how do you do it? How do you do it? I get back to that question because unfortunately, with journalism in India, what we all know to be correct eventually bumps up against the business model. Where do TRPs come from? Where does the revenue come from? Where does advertising come from? Where do the clicks come from? Sensationalism, hysteria, bias, clickbait, tabloid stuff. That's what the business model is telling you. And I'm afraid we're looking in various directions, but at the end of the day, the issue right now is that the business model rewards bad journalism, not good journalism. That's just the way the business model is. Now we're going to try and change that. I keep on promising you this year after year that there will be efforts made to change that. And I'll tell you where that change may come from. And this is the hope for the future. Look, we are heading for a world where the business of creating content will increasingly become commoditized. And it's going to happen with AI if nothing else, for example. Within a year or within 2 years. I was actually here on this stage about 2 months ago, 3 months ago, in a gathering very similar to this. And I said, AI is going to be able to do a lot of content creation. The content creation that you think you can do as journalists, AI is going to be able to do a lot of it, right, for you very quickly. And somebody very correctly on the panel said, yes, but that will be in text, not necessarily in video. And a week after that, Sora came, right, which enables you to do a lot of video by AI. The nutshell is going to be that within a year or 2 years, the task of content creation will not necessarily be the prerogative of media channels or established journalists, because somebody is sitting in their dorm room, a young kid sitting in a dorm room will be able to use AI to actually create stories and produce them really well and do that great.
So if content creation is not going to be the preserve of established, quote unquote, journalists or media houses, what is going to be important then? And our view at Heritage, for example, and others may have the similar view, is that the real differentiation will come from curation, from the credibility that comes by saying, I trust this person to tell me what is happening. Trust, credibility, and therefore curation. The belief that this is somebody who will tell me what the truth is, that may eventually become the differentiating factor in an AI-driven world, where there'll be billions of stories, not hundreds and thousands of stories, there'll be billions of stories coming at you every single day. How is somebody going to be able to give you the ability to navigate through that? That is going to be the differentiating factor. That's what we're trying to build. And that is where your lack of bias, your ability or your desire to go out into the field could well prove to be the differentiating factor. At least that's my hope. That's where I think things are going to go. That's where I hope things are going to go. And if not, well, then it's great to get out into the field again. I'm not intending to be this to be a fabled speech, but if it is ever to play out that way, I do hope that I will be eventually remembered in this sort of an avatar and not in a suit and a tie, because this is what real journalism to my mind is. Thank you. Thank you so much, sir. It's really an honor and privilege to hear things from you. I request you all to kindly wait. Ladies and gentlemen, it's a golden opportunity. Anybody wants to ask any question to sir, please raise your hand. I believe ma'am over there has a question. Can you please pass a mic over there? Please introduce yourself once again and then direct the question. Hello, sir. Shazia, this side from Galgottias University. Sir, I want to ask that with the rise of social media and citizen journalism specifically, how has the landscape of ground reporting evolved, sir? Okay, that's a really fascinating question, and specifically when it comes to citizens journalism. It's actually a very important part of what we are trying to do at Heritage. The name Heritage is there because we believe that anybody can be a good curator of information. The stories are there somewhere, and people can curate them and put them into their own news channels or their own playlists, which is what we are building at Heritage. But in the actual stories, being able to go and interpret what's happening on the ground, being able to tell what is fake from what is true, that is not necessarily something that everybody with a mobile phone can or should do, because maybe you require some training, maybe you want to filter out some of the more obviously fake news. A situation where everybody is out there with a mobile phone and saying, I'm a journalist and I'm telling you what's actually happening, is not necessarily a recipe for you all to be able to figure out what's truly happening, because you'll never be able to tell what is fake, what is true. You won't be able to tell what is malified and bona fide. Some people will tell a wrong story because they got it wrong. There'll be people who tell a wrong story because they deliberately wanted to tell a fake story. So citizens journalism or citizens reporting is somewhat problematic. Reporting is something which eventually professionals will have to do. But people will always be able to select the right stories and share them. So citizen editing, I think, is the way forward, not citizen reporting. Thank you so much for that question. Thank you so much, sir, for that answer. Any more questions over here? I think ma'am over here, mic इनको एक बार please pass कर दीजिए. Here. Front, over here. Yeah. Thank you. Hi. So I am Garima from Driji Security International Private Limited. I am very interested in deepfake technology, and I wanted your view on the fact that, when AI will take over, so to say, news media, don't you think one of the aspects which journalists will have is to detect deepfakes and inform about that? So that's exactly why I said that the landscape is changing much faster than we can imagine. And that's again where credibility and curation is going to become the important point, because let's face it, if you think right now there is a torrent of information coming at you, some of it is genuine, some of it is fake, right? Within a year or 2 years, that
torrent, that river of information that's coming to you is going to be a waterfall. You're going to feel as if you're standing under the Niagara Falls. And a lot of it will be fake. And for an average person or a common person to tell, is this true or is this not true, will be impossible. You will have 10 sound bites of Rahul Gandhi being presented to you every single day. 5 of them will be correct, 5 of them will be fake. It'll be the same with Prime Minister Modi, it'll be the same with everybody else, right? So you will not be able to tell what is true and what is not true. That's how good AI is going to be. So what our belief is that it is the job of the journalists and the intermediaries is going to be the curation, to be able to tell, look, this is correct, this is not correct, and to be filtering that information. Somebody asked me, what is Editor James going to be in the business of creating content? We said, no, we're actually in the business of making straws. What straws? There's a waterfall of information coming. Now you have to capture that information. You have to filter it into a pipeline, smaller pipelines, even smaller pipeline, and then a straw through which people can sip on that information to understand what's happening in the world. That's really what is being built. It's important today, but it is going to be critical a year or 2 years from now, specifically because of what you're saying. Very well put, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for that question. Give it up for Sir, please, once again. I think some real views on deep fakes, and I'll request you to wait kindly on stage. Can I please invite Mr. Ved Shukla, founder and CEO, Mylomar and advisor, BW Retail World, to kindly come up on stage and hand over the token of appreciation to Sir. Give it up for both of them, please, ladies and gentlemen, once again. Thank you so much. And a lot louder, please. Yes, thank you. Thank you so much, sir. All right, so ladies and gentlemen, we'll be moving towards the first panel discussion of the day. I'll quickly give them some time to get things ready and sorted. How are you feeling about the vibe of this event so far? Some wonderful minds and industry leaders have expressed their views. Are you all loving it? Are you all enjoying it? Anybody wants to share anything in terms of how they're feeling? Anybody from the audience wants to share how they're feeling regarding this event? Do I see any hands getting raised? Nobody wants to express their opinion? You're feeling cold right now, okay? Yes, of course, that is there. And I'm sure the kind of views that they're expressing is definitely going to be sending chills down the spine. So, ladies and gentlemen, brace yourselves for the first panel discussion of the day. And I'll quickly wait for a heads up from them. And once again, it's a kind request to everybody, especially the ones who joined us late over here. Please kindly keep your phones in silent mode. We really do not want to distract any of our speakers. They have taken time out of their busy schedule, just like you all have. So let's have that respect for all of them. And please keep your phones in silent mode. Anybody, if there's any urgent call or something that they need to attend urgently, I request you all to kindly proceed outside, finish the call, and then come inside. Let's not distract any of our speakers, please. It's a humble request to all of you. Are we ready? Perfect. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, the first panel discussion of the day. The topic for the moment is YouTube news channels, vanity projects, or impactful journalism. I'll introduce our speakers first. We have the pleasure of having Aditya Raj Paul, Executive Editor, National Security and Strategic Affairs with TV9 Network. We have Rushira Sharma, Senior Anchor and Consulting Editor, Network 18C NBC. We also have Dr. Professor Frederick Madhu, Professor of Creative Economies, ZHDK University. We also have Atir Khan, Editor-in-Chief, Awaz, The Voice. And the session is all set to be moderated by Dr. Bimal, Creative Entrepreneur, Author and Biographer. Please request all of you on stage, please. And please give it up for all of them, ladies and gentlemen. Zor Satali, please. I can't hear the appreciation over there at the back. Can you please clap louder for all of them? So say, first panel discussion it is. Thank you. Comfortable everyone? Over to you, sir.
Thank you. Before we proceed, a round of applause for this gentleman. He's really keeping the house warm. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Good afternoon. Namaskar. It's nice to be in this Imperial Hotel. I don't know how many of you know the history of this place. This was the first big hotel when the British made what is now known as Lutyens Delhi. It was designed by the Bloomfield brothers, and Bloomfield brothers were part of the PWD department. I'm giving you that insight because there's a big historical event involved in this very room where you are sitting. At one point of time, the Muslim League had its conference here, and their sole spokesperson at that time, a gentleman called Muhammad Ali Jinnah, was giving a lecture, and there was an assassination attempt made in this very room. So this room has history. And we are also going to talk about something that is going to make the history of the future. Television broadcasting in our country, and news broadcasting specifically, has had its very good days. A time has come, a lot of people who were watching television realized that newsrooms and news networks had lost what we call classical television. What became television as we watched it every day, and I participated in several of those programs, were reduced sometimes to slanging matches, to really loud anchors, to a lot of emotion and outbursts. And some of the people who were very popular on television, for various reasons as their careers progressed, moved from that kind of classical television or news television to a new form of television or new form of digital media called YouTube. We are here to discuss whether the 500 million people who subscribe to YouTube in India, and it's a fairly large number, it's more than the population of the United States of America, are watching it because they still believe that they will get the truth on YouTube vis-a-vis television as it was or as it is? Or is YouTube TV network a vanity project, a post-retirement job? We have brilliant people this afternoon, and I'll start with Ms. Sharma to give us her views on what she thinks. She's writing a book, incidentally, on exactly the same thing. So she will be able to give us good insight into what's happening with the people who are on YouTube and the value of YouTube and the credibility of YouTube. Ma'am. Sure. Thank you so much for the introduction. And just to share my journey, I've been a journalist for more than 20 years. And currently, as he mentioned, I'm writing a book on the changing face of Indian media. All the speakers that you heard, they were my former, in fact, Vikram was my former boss. He was the CEO of NDTV Profit when I was with NDTV Profit. And I have heard perspectives from all of them. I've spoken to all of them, including, of course, Dr. Anurag Batra, Mr. Shekhar Kapoor, Mr. Vikram Chandra, and so many more. Basically, all the star anchors of our country, so to say. I've spoken to all of them, and the view that emerges is that the challenges in YouTube are the same as the challenges in television. It is about credibility, it is about authenticity, and YouTube could be a narcissistic, self-promotional narrative, which does happen sometimes with a lot of anchors, especially the star anchors. At the same time, it could be an unbiased, genuine journalism where they're touching upon topics which haven't been touched upon by the mainstream media. They do have a wider reach. So to answer your question, it's about impact versus influence. It's about engagement versus bias. It's about authenticity and credibility versus clicks and revenue. So just to sum up, I would say that profit and content, they cannot go hand in hand. At the end of the day, the revenue models have to be looked into, whether it is YouTube, whether it is mainstream media. Content cannot chase revenue. So the minute you need to separate content, because at the end of the day, whether it's a TV channel or whether it's a YouTube star or an influencer,
they're all trying to get some form of revenue. So if you want authentic journalism, where facts are just narrated without a verdict being passed, and where a journalist is not pro-government or anti-government, or not pro a certain business house and anti a certain business house, if you want honest, unbiased facts, you have to separate the revenue model. So that is my take on it. That I mean, as for the topic, it can be self-promotional, it can be impactful. It's not about the medium; it is more about the revenue model, which has to change. Mr. Kaul, do you believe that making money is not possible if you are credible? Well, firstly, thank you to Anurag ji and the entire team of Exchange for Media for having me here. And a very interesting topic. When I look back, really, I started my career back almost 16 years ago. And even before that, during my college days, I was into activism. And back then, it was an accidental, move towards activism. And there was a website called petitiononline.com where I actually wrote a petition, and that became my claim to fame, and the rest is history. But the point here is that YouTube in itself, the topic that we are discussing today, is a creator's paradise. It is something that we spoke about perhaps a decade ago, is citizen journalism. Whether it is impactful or not, whether it is linked to revenue or not, is something that we are debating today. In my humble opinion, I think everything is derived, particularly for the news channels and news broadcasters, from the revenue model. So I completely agree with what Ms. Sharma really said. But at the same time, we have to segregate a business model from a creator's model. Of course, revenue is the final end game for the creators and for the news broadcasters as well. And at the same time, the word biased that we use quite often, I don't think there is anything unbiased. Everything is biased. If somebody in the news medium is telling you that we are not biased, we are the most authentic and unbiased platform or journalist, they're lying to you. I think overtly or covertly, the bias does stem in. Of course, in the last many years, it's obvious on which side a particular journalist or a channel is swinging. Earlier, they used to act smart. I would just be very honest about the Indian media platforms, at least. I'm not going to the US, which is quite similar. I often hear this that, the Indian media is almost, especially the TV media, is a fish market. But it's quite similar in the US as well. I think we are at a very nascent stage. We are still learning the games. And I work at an OTT platform presently, and I've worked mostly in my career for various top news channels, including Times Now, Republic, and others. So at this moment, we have to realize that YouTube is not just the biggest visual medium, it's also one of the biggest search engines. In India, there are staggering figures that come out if you really go in deep into it. An average consumer consumes at least 7 hours of internet every day. And out of that, 30 minutes to an hour is on YouTube. So certainly it is a creator's paradise. I was thinking that every influencer who is on Twitter, on Instagram, or Facebook finally is also on YouTube, and perhaps has an embedded link that goes to YouTube. So I think YouTube is something that certainly cannot be ignored in the creative field for broadcasters or for the creators, and particularly for the business news channels and news channels. I think it's a big revenue model, big business model to get money, to get viewership, because TV in the traditional form has its roadblocks. TV in its form has a certain kind of audience, particularly the English medium where I work. There's only a particular age gap or a particular area that you actually cater to. YouTube has an entire audience and an entire world out there where you can reach. So I think this debate of a vanity project or impactful journalism will continue forever. I think we are unfortunately moving away from the traditional impactful journalism. Although perhaps some journalists will have that fire within them, but the corporate structures, the business models, and the revenue needs certainly changes the prerogative and the demand. And at the same time, yes, unfortunately, some of the projects are vanity projects and will remain so. Thank you. Thank you, Mr. Kaul.
Mr. Khan, Awaz the Voice. Yes. What's your subscription and how do you see YouTube as an option for saying exactly what you want to say to the world? Well, I want to tell you about my experience. Let me just give a brief about my background. I've had the privilege of working with print, television, and digital, all three mediums. So I'll be doing almost 3 decades of journalism very soon. So, and when I see the present state of affairs in journalism, I'm concerned like all others. And that's why when I moved on to the digital platform, which is Awaz the Voice, we took a decision, a policy decision that we are not going to do any polarized content. We will be doing inclusive content rather than doing polarizing content. So first 2 years were pretty difficult and we are now running in the fourth year. But after the second year, these first 2 years, we are all struggling and we were worried whether this kind of content is going to work or not. But after 2 years, it started looking up and we started getting more and more views. So we took a decision not to do the kind of content which is happening elsewhere. But I want to give you my take on what I feel, what I've been thinking about the larger questions which we are confronted with, as far as journalism today is concerned. You see, and I assume that when we talk about vanity, we are talking about individual journalists who have moved away from the conventional journalism, they're doing their own thing. Many of them are our friends, they're colleagues, and some of them spoke today also. And if you look at where they're coming from, they are essentially very, very people with strong ideas who are very confident, fiercely independent, and they want to do something on their own. Some of them were underrated journalists. They were pretty good at their job. They were great storytellers, but they did not get an opportunity. But with the advent of social media and YouTube especially, now there's endless opportunity and they don't have to worry for their salaries. They don't have to worry for the editorial policies. They don't have to worry for the style sheets. Censorship. Yeah, censorship, of course. You see, I believe that we operate under freedom of speech, which our constitution guarantees. But our constitution also has a rider to it, which is public order. So what is happening is that the old school of journalism, which Barkha was talking about, the legacy journalism, I partly agree with her, and I partly agree with what Bhupender was saying. Bhupender was saying that this is not the end, this is not graveyard. We are not standing in the graveyard of journalism. I agree with him, on that stand. But as far as Barkha is concerned, that you are, the old school of journalism need to unlearn. I agree with her on that take. So what I'm trying to say is that we are going through a lot of revolution, world. It's not just in India, everywhere in the world. And what is happening is that the old school of journalism is questioning. People who've been there for 30 years, 40 years, they're questioning themselves that if we are there, they're not present on the YouTubes, they're not getting numbers, are they not good journalists? So what we need to unlearn and what we need to understand is the changes which are happening, the evolution which is happening in the entire, not just the journalism is a part of the entire society, the civilizations. So what is happening is that the three, I'll try to explain my point in 5 C's, since everybody's been talking about C's today. One is the competition which is happening in the conventional media, which is news channels and all, the choice which the social media brings, and the confusion which is happening around us, all around us. So people are looking for, the people are wondering where do they go for credible information. So what is happening is that this confusion is happening essentially because of the global churning, all the changes in the economy, changes in the economy, and the traditional societies are collapsing. So people are feeling lost, they're feeling left out. The children are challenging the traditions they've been following. So,
a Muslim man would be wondering why his son is not wearing a skull cap while offering prayers. Why is he not? Why is he shaving out his beard and he's going to, his office? Similarly, a Hindu man will say that why is my son? He doesn't even touch the egg. He suddenly started eating chicken. What is happening? There's something wrong around my culture. I mean, people are questioning the cherished notions which were there. So what is happening essentially is that people are clinging on to their own identities. They're trying to, they're closing instead of opening up. They find comfort in their own communities. So what has happened is this has given rise to this YouTube channels which are riding on the, essentially on the wave of politicization, of the polarization, which is essentially political. They are not doing, you'll see that all the popular YouTube channels, news channels are not sports, they are not investigative journalism, they're not health, they're not environment, they're essentially political. So what is happening is that they are riding on the political, sort of wave. And see, there's no harm in criticizing government. There's no harm in criticizing political parties. There's no harm in even criticizing court judgments. You as journalists, you're supposed to do it. But what happens, the problem arises when the YouTube channels, the news channels, they are working as per certain agenda. And what happens is when they start getting popular, they're creating an identity for themselves. And then they start liking that identity. And that's when the vanity comes. I'm not saying that all YouTube news channels, the people who are running it, they have vanity. Some of them are very genuine, they have the conviction, they have dedication, and they are self-motivating. So let's not take it away from them. Right. So what I basically want to say is that the confusion which we are surrounded with is giving rise to polarization, and this is going on and on. We as journalists today, what we need to do is give them solutions, give them reassurance, give them security, which is worrying them as far as their identity is concerned. Okay. Thank you, Mr. Kava. That was a fairly long and winding monologue, but we learned a lot. Professor Martel, Frederic, comment ça va? You are next. Are we in a sea of confusion in Europe also? How do you view Indian broadcasting and YouTube industry, the search for truth in YouTube, and in the largest democracy, not only in the world, in the history of the world? Bonjour. Bonjour. Thanks for having me. I wouldn't discuss how we see India from Europe, from France, since I'm sorry to say it's not probably the main topic we have in our countries. At the same time, I will just mention a few points that show both how optimistic we can be and also pessimistic we can be. And so, as Radip Sardesai said this morning, and by the way, I love his introduction, Keynote, it's both good news and bad news, and especially also on YouTube. The question is vanity project or impactful journalism? The answer, of course, is both. YouTube is everything. YouTube is vanity project, is impactful journalism, is entertainment, is serious journalism, is a place where you can cook, place you can love. It's also a place where you find terrorism. It's everything. And I would say that the main problem is that we are not in front of a media. We are not in front of one TV. We are in front of every media and every TV. And we don't have to forget, and it hasn't been mentioned yet, that it's not just YouTube. It is part of Alphabet, which means part of Google. So it's an international American big company. I don't have anything against
American, but it's a specific place owned by a specific corporation in a specific country. Not exactly since the beginning, which was, I think, 2005, when Google was created and then bought for more than $1 billion by Google. And they are based in San Bruno, I think, which is a city in the Silicon Valley in California. At the same time, and that's the good news, YouTube is American, but is also in 80 languages. It is both free and also you can pay. There is now the YouTube Red that became YouTube Premium that makes that allows you to see videos without publicity, and it's supposed to give you more money to the content. And that's also a very good place where you can do and have an economic models, and especially for underdogs, as it has been mentioned. So that's pretty good, even though don't forget that the underdog, even though one is very famous on YouTube, get not a lot of money in comparison with what Google and YouTube own themselves. In addition of that, if you compare in the music side, YouTube to Spotify, Deezer, Apple Music, and many others, covers and so on, YouTube is the only one that gives as less money as the other one. So they don't pay content well. And by the way, that's something I still don't understand. When you're so powerful, when you have so much money, why you don't pay content, music content, but also the so-called underdog and everybody that puts a video on YouTube. Then another bad side. I'm following a lot of people on YouTube. I'm following the extraordinary and wonderful interview by Salman Tour. You might know, you might not know this guy. He's a young artist from Pakistan, but he was also here in New Delhi, where he had a very nice show. He's very young, and what he does is absolutely wonderful in terms of arts. But I'm also following on YouTube somebody like Kami Seba, who is a pure propagandist, 100% fake news from Africa. I also follow a guy named Richard Medhurst. He's supposed to be a British nice journalist, but actually he is paid by Iran, and that's pretty well known because he worked for Al Mayadin, which is an Iranian TV, to give fake news all day long to millions of people. So they are extremely popular, but they are also extremely biased, and they are not just biased because they have different opinions, which at the end can be okay, but they are biased because they are paid by, I would say, to be friendly, authoritarian regime to make propaganda. The last point of this very quick introduction, it's more positive and more optimistic. I do believe that even though YouTube can be a very bad tool for very bad people, it can also be a new way of having relation with others. And I do think that here in India, but also maybe let's say in Berlin, the goal is not necessarily to speak on YouTube to be able to become famous worldwide. It is also very important to be heard here. And I do think that the internet in general and YouTube in particular are not just global tools. They are also local tools. On YouTube, there is a lot of borders, even though it's free and borders doesn't exist. The borders are, first of all, the territory where you live. Second of all, the language you speak. It's not the same if you speak in Hindi or in English or in one of the dozens and hundred languages you speak in India. The border is also the culture, the sphere of culture you are part of. And it's also maybe even more important, this mix of territory, language, and culture
you are part of. So the good news to finish is that you can exist with your own values, your own local content, your own community based, local based. That also is important, not only to be famous everywhere in the world. And to finish, I would say that a lot of people like me, the old kind of journalist, for a long time when we were, stopping to work as a journalist, we became blogger. Now the same journalists are becoming YouTuber and have their own channels, or sometimes booktuber, which is a book critic on YouTube. So at the end, there is a lot of bad things on YouTube, but that's also a good news. Merci beaucoup. Très bien. Ms. Sharma, I know you were raring to go. So we are running a little, over. So these are quite, long time. But I'll ask you a question, and then before we end, I'd like to know: are you all going to be famous YouTubers? Are you going to follow somebody who's very famous as a YouTuber? But you can ask what you can say what you want to say. So would just like to steer us back to the topic where I feel that there are advantages and disadvantages of YouTube. And first of all, we have to distinguish content creators from journalists. Everyone who is a content creator is not a journalist. So that's the What is a journalist? So journalism is a profession. Not everybody who knows medicine can be a doctor. Not everybody who knows science can be a scientist. So the same way, not everybody with a phone and a camera and journalism is something you have to learn. There's a system in place, there are checks in place, and that is the benefit of legacy media, that there are processes in place. Again, I'm not saying that YouTubers or YouTube journalists cannot do justice. We have Rajdeep, we have Barkha, we have Ravish, we have so many who are doing a great job and they have great followers. But what I'm trying to say is that there needs to be we need to look at advantages and disadvantages. So while there are low entry barriers, while there is diversification of content, while there is innovative storytelling formats, which are the benefits of YouTube, there is also disadvantages where there are not enough checks, there is lack of authenticity. Again, like TV channels, you need to watch 5 YouTube channels to get the real view. Just like you need to scour through 5 channels. Most people right now, if you ask them, nobody listens to one TV channel. They look at one and the other, and then they form their own opinion. So where is the credibility? That's what my question is. So you're asking me where's the credibility? Yeah. Mr. Kaul, you are in the television business, and do you think Credibility is getting compromised either way? Their checks need to be in place. That's what I'm saying. do you think YouTube should be censored, controlled? And you almost sound like a government officer. I'm sorry to say that, but Well, I don't think that you could censor YouTube. Of course, there are some pros and cons. Of course, Arthur mentioned it briefly, which is about disinformation and misinformation that happens so frequently on YouTube and any social media platform for that matter. And we've seen that happening. We've seen the INB ministry also blocking some of the YouTube content, particularly from Pakistan or China. A lot of these efforts are made. But I would slightly disagree with my co-panelist, which is that I don't think that journalism could be learned. I think journalism is something that comes from within you. I went to a journalism school, and while I don't regret it, in my speech while receiving the award, I said that I don't think journalism can be taught. It can be chiseled and here and there, but it comes from something within you. There has to be a passion. There has to be a conviction of courage. There has to be a zeal within you that makes you a journalist. And at the same time, I would leave you on a very positive note briefly because we don't have time. And this is that, how much we've grown over the last 10 to 15 years. I remember back in 2006, when I was in college, and I started this campaign on Priyadarshini Matu. And at that time, of course, we didn't know what to do. I was not a traditional activist who knew, what all needs to be done. And what I did at that time was, reach out to NDTV. And Sonia is sitting here. I saw her after many years. And NDTV was of great, immense help. We together launched this campaign for justice for Priyadarshini Matu after a decade. And the justice delivery mechanism and system had to move within days. And today, when I look back, we have YouTube, we have Twitter, we have Facebook, and a common person can
can raise questions. If you term a particular media as biased, he doesn't have to care about it. He can ask questions, he can make his own videos and question the system. That's how far we have come, and we are only growing. Of course, there are elements who will create trouble, and we'll have ways to deal with it. But I think impactful journalism continues to be there. You just need to have that conviction within you. But unfortunately, for the news channels, the revenue model, unfortunately, will remain, the advertisement will remain, and that will guide, unfortunately, the content delivery and editorial. Who do you follow on YouTube? Sorry? Who do you follow on YouTube? I follow News9 Plus, OTT, wherever. Thank you. It's a plug. Ma'am, No, I'm good. I'm just saying that at the end of who the do you day, follow? Who do you follow on YouTube? I follow multiple people, and I follow, again, I work with CNBC, I was with NDTV for 14 years, but I follow multiple channels, and I again feel that it's a great place. Journalism can always survive and thrive, but I do feel there is a little bit of a distinction to be made between each and every content creator and a seasoned journalist. So that's what I feel. Mr. Khan, who do you follow on YouTube? Well, I don't follow many YouTube news channels, but I follow a lot of other stuff on YouTube. I follow music channels. I follow channels of philosophy. A lot of things. But I would like to say one thing, that we, as responsible journalists, either trained or untrained, whatever, we are standing at the crossroads where we must decide whether we want to give our viewers the content which they are accustomed to liking, or should we, as responsible journalists, give them the content which we, as responsible journalists, should give. Thank you very much. That's been a great conversation with all four of you. Please give them a round of applause. We are ending on a very positive note after hearing about graveyards and end of the story and bad news. And somebody also said journalists are like cockroaches. I just can't. One of the earlier speakers. I couldn't make sense out of that. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, the louder the better. Can you please clap louder for all of them? Thank you so much. And being a content creator on YouTube myself, I'm so proud that these discussions are happening. Maybe 15 years back, nobody would have imagined. Thank you so much. I request Dr. to kindly give the token of appreciation to all of them over here. Can we please clap and appreciate this wonderful moment, ladies and gentlemen? Thank you. We'll also be having the group photo here. Thank you so much to all of you for being with us over here and sharing your thoughts. Truly insightful that was. Thank you so much to all of you. एक बार जोर से और ताली हो जाए, please, for all of them. Thank you. Perfect. Ladies and gentlemen, it's now time to quickly move to a fireside chat. I'll quickly give them some time to get this ordered on stage. We have a fireside chat right now. Let me tell you all the topic. The topic is bridging the trust gap in TV news. I'll repeat the topic for you all once again. It's bridging the trust gap in TV news. We have Sonia Singh, editorial director of NDTV Dialogue, joining us over here. And the session will be moderated by Chaineet Kaur, senior editor, Exchange for Media. Please give it up for both of them, all of you, ladies and gentlemen. As we stop this process, तालियों की गूंज, please, थोड़ा जोर से सुनाई नहीं दिया हम लोगों को. Yes, thank you. They deserve every bit of their appreciation. Good to go, Chaineet. Thank you. Stage is all yours. A very fun and engaging panel discussion by Bhuvan sir. Thank you everybody for gathering here and trying to keep the spirit of journalism alive. An honor to have Miss Sonia ma'am here. I've been following her since very long.
more than 3 decades in the newsroom, and there's nobody better than her to say how to make the evolving newsrooms get better. I would have to start the discussion with this, ma'am. I had a poll on Instagram, which, okay, I'll be honest, did not have a lot of reach, but I asked a very direct question. What do you believe TV news is credible anymore? And to my surprise, not even a single one said yes. 60 said no, 60% said no. And the remaining 40% said depends on the news channel, which was very surprising for me since I wanted to see at least one say yes, right? What is your viewpoint on the same? What are the primary factors that people this age don't believe in TV news anymore? So, thank you very much. And it's wonderful to be interviewed by you, Chairmeet. It's always great to see young, bright people. So, thank you for interviewing me today. I think, one, I'm not here to write the obituary of TV news. I'm always an optimist. But now that I'm no longer an active participant, I guess I'm more an observer of television. And I think that there are things, of course, that television can do to reinvent itself. I think we now have to, we always talk about how the Prime Minister is a master of reinvention. It's, as someone said, that when the opposition is attacking PM Modi 1.0 and he's reached 3.0. So I think television news also has to now re-evolve and look at what can the new avatar of television be. And in fact, in a sense, the word television news itself is a misnomer because you will find that there is no company today which is just television. It will be journalism across platforms, whether that's your phone, whether that's your computer, or whether that's a television screen is now increasingly irrelevant. So in that sense, I think the word television news will also soon be passé. I think what's important for news and journalism today is something which we may have lost out in the fast-paced world in other areas as well, is authenticity. I think you have to be authentic. And I think if you're not authentic, viewers are very quick to sense that. And that will play out. So I think the authenticity and the credibility are key issues. And that is really stuff that no amount of marketing budgets or advertising budgets can buy. So I think that often we do find that strategies evolve around what will look good or what will get the most clicks or the most likes. But that is not something which you can predict or you can do it as part of a marketing strategy. It has to be done as part of a strong editorial backing and must have the content to be able to justify that. I think one of the other big issues is that I think India is such a huge country. And I think with this, and we can talk about this separately, but I think with the revenue models of television networks in the last decade, somehow we are not telling or reflecting the stories of that country of 1.4 crore people or 1.4 billion people, 140 crore people, in a way which is representative. And I think that is what, I mean, if we look at recent state elections, I always find it extremely odd that how even journalists can't sense the way the wind is blowing. So you'll have opinion polls, you'll have analysts, you'll have people all saying very confidently that this party will win. And then when the results come, a completely different party has won, which has not been reflected anywhere on the television analysis or reports. And then the same people will say, oh, this is why it happened. So I think if we did have that connect, you would not find increasingly this kind of almost dysfunctional analysis of events when the reality is so different from what is being projected. So I think that is a really important point. Authenticity and building your connect back with the people whose stories you're telling. Those are key. Very well said. I think I have a headline already which says marketing budgets can't buy trust. So very well said about that. My next question is, you know, we are in an era of TV news where we have heard people say, "Chain se sona hai to jaag jaiye," "Sansani khabar," "Nation wants to know." These are the taglines we know TV news and their anchors by. We have sort of blurred the lines between entertainment and information. It has become infotainment. What is this? How does this impact the trust factor on news TV, according to you? So when I had a daily show, my tagline was, "You don't have to shout to be heard." Now, I don't know if that necessarily stands true, because sometimes it is the loudest person, but there's also a saying that empty barrels make the most noise. But I think what is important, and I think we should be careful, that boring doesn't mean credible. So we also have to reinvent, in a sense, that you are talking the new language which people are talking. And I think you have to be very much in sync
with that, you have to, as I said, you're telling stories. What is the best way to tell stories? It's not like you're boring people with information and just facts and without having the human face to it. I think always in any story, it has to be that why are you telling the story? Who does it impact? I think that is the main reason of journalism, that what does it change? And I think that if you're basically just repeating the same thing that everyone knows, it doesn't really break new ground. I think that's really important. I think especially for young people today, I think whether it's Instagram, whether it's on X or others, they don't mind where they consume media from or journalism from. So I think in that sense, the television barrier had to be broken, because if they're watching a debate show which may have originated from television on X or anywhere else, how does it matter? That was exactly my next question. Thank you for coming to that. As much as TV news is losing its credibility, utna hi it's being very well impacted on YouTube and other social media channels for us to consume the news. But on the flip side, PIB recently blocked around 9 to 10 YouTube channels for fake news as well. So what is the whole scenario here? How does the lack of credibility on TV news impact consumption of news on other mediums of channels? So I wouldn't agree with lack of credibility of TV news channels. In fact, I would be much more nuanced on that. I would say that the news channels, and again, I won't use the word TV, but news networks are still the most credible source of news. Of course, in that there will be glitches, or there will still be some areas which I may not agree with. And I think debates are perhaps more culpable for that than actual news. So I think still for news, it has to be a credible source. And I think the credible source are still your news organizations, whether it's NDTV, whether it's India Today, whether it's the Indian Express, it will be news organizations. Now, you may access that news on a different platform than television, but news organizations are still definitely the most credible source. I think individual journalists are, of course, interesting to watch on YouTube, but often they're not necessarily news sources as much as news analysis, and through their prism. So I think that's a very different genre completely. It's an interesting genre, but it's a completely different genre from the news organization networks. And I think we've seen that many, many mistakes have happened when it's actually come from non-news sources, and mistakes, and especially in India, where you can have often communal clashes or other issues, or a person's life destroyed or jobs lost because of something that just comes up as a social media rumor. I think we need to be very, very careful. And I think you will find that the credible news organizations, that they, of course, everyone makes mistakes, but the level of mistakes or errors will be much, much lower than any kind of YouTube channel. You've been in the industry for too long now, more than 3 decades. According to you, have you ever come across such a meaning time to leave? No, not at all. Not at all. Yeah. Always relevant, always young. Thank you. My point is, you must have come across mistakes in your team, by yourself as well, where you felt like you have compromised on the quality of news. It may have happened sometime or the other that you came across something like that. How did you try to rectify that? How did you try to regain the trust of the viewer after that? See, I think everyone makes honest mistakes, or mistakes that, especially that when we began, as I said, when NDTV began doing news, it was the first independent news channel. We were the first Indian channel to actually do breaking news in that sense. And I think there were mistakes we made. I think there were genuine mistakes. I think for sure, when I look back at the terror attack in Mumbai, we would definitely not have covered us and other news channels in the way we did. And in fact, after that, guidelines came out. At that time, I was a member of the News Broadcasting Standards Authority headed by Justice Verma. Completely new standards came out to make sure that Indian television would never cover terror attacks like that again, that we would not cover it live. It would be deferred. There would be absolutely, there would be no unverified interviews done by people who didn't have knowledge. And the first focus was that no harm should be done. And I think at that point, because of live news, nobody realized that broadcasting live, the implications it could have, including the officials, the government authorities who were briefing. I think now government authorities have also learned, and news organizations have learned that as well. We saw it when when Captain Abhinandan, the Indian pilot who crash landed in Pakistan. All news organizations came together to make sure that none of the photographs of him in Pakistani territory, which could have been disturbing, were actually broadcast by us. Social media did it, but no news channel did it. So I think we have learned over the years. We are much, much better than we were. Especially guidelines again recently against hate speech, both against politicians, of course, by the Election Commission, but against news channels, are something that are self-imposed. So I think those are all very important factors, which people don't often give credit
to news organizations for. Right. Again, coming back to basics, I generally like to come back to point square one when we go too far in the discussion. How does this discussion matter in the real world out there? No, I think it matters a lot. I think it matters a lot because I find that increasingly people go into echo chambers. You know, they will want to watch a journalist who reflects their views, and they will believe that what he or she says is absolute gospel truth. They want to watch a news channel which they believe is on their side. I think that is something which again is a cause of introspection and self-correction. That if a news channel is seen to be on someone's side, then it's not doing its job. So I think that is something which all television journalists should be very careful of. So I think the biggest self-correction really is to make sure that every story has multiple sides, and the news needs to make sure that they're reflecting accurately all the multiple sides and complexities of a story. So I think that is very important, and especially in election season, I think it's crucial for the credibility or trust of any news organization. Which was also my next part of the question. We are coming up with general elections. Everybody is raced up for that. How do you think that news channels can this time make sure that there's the least possible credibility issue when it comes to the coverage? I think a level playing field. I think as in whether it's sports or news, I think a level playing field has to be given. The Election Commission, of course, will ensure that for election, but I think for television as well. And I am a big votary for the fact that I think India needs a media commission. And I've said this before, the revenue model is broken. Half the reason is because if you have the pressure, or newsroom has the pressure, the management has the pressure that you have to also be looking at what your ratings are, what your likes are, what your clicks are. You have to have a media commission model which can function in a way like the BBC, but the BBC, of course, is only one channel. But here we have to do it where there is taxpayer funded in terms of a subscription model, which goes across television networks and is then run, in a sense, through that media commission. The TV networks, of course, can be private management, but there will be national channels, there will be regional channels, and we need to look at a media commission for India now, not, of course, in time for these elections. I think in the years to come, we'll find that this is something that's definitely needed because of the influence and impact that media has. I think this media discussion topic can go for another 1 hour. We can have a separate panel discussion on the same. But I think we only have last 2.5 minutes left. I would like to wrap this up and open the stage for audience after that. How do you envision the future of TV news as to coming back to the state where the trust is blind with the viewers and the audience? Firstly, I don't think any trust should be blind. I think that's the biggest challenge to credibility and trust is when that somebody believes in you blindly. You have to, I mean, just as we question politicians or government authorities, in that way, we should be open to being questioned as well by our viewers. And I think that, as I've made that point, that I think authenticity, credibility, and connect are the key areas where the media has to build up and talk, as I said, tell news stories. Because I think the problem still is, and this is not just India, but global, we've seen that Elon Musk on X has made the point that our mainstream media, the viewers are collapsing. And the recent Oxford Reuters survey made the same point that people aren't watching television because they feel it's only about bad news. I think we need to be reflecting the news stories of a new generation and of a changing India and also of a changing world. I think, yeah, that's a good ending. We can open the stage for the audience now. Any questions, please? Any questions from the audience over here? We have a bandwidth of questions. Anybody wants to ask anything over here? Please raise your hand. Over there. Can you please kindly pass on the mic? Sir, over there. Yeah, this is Prince. Nice to hear. Just tell me, news and views, there's a two separate bucket or it can be mixed up? I think views has killed news. No, I said, I have said this before, that talk is cheap. And I think that when the debate format came in must have been about now almost 2 decades ago, it was seen as new and exciting, also because of the credibility of the panelists who came on. I think now what it's become, it's almost a shouting shop, and it often replaces news. You will see that prime time is often dominated by talk shows or shouting shows with people who don't necessarily have the best knowledge of the topic. So I think that if news can actually replace views, it would help all of us much more. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. On that note,
I think over there, please, we have space for one last question. We are really running short of time. Hello. How powerful is the media in bringing about social change in the country? Thank you so much. I think very powerful. I think it's part, of course, of a larger social ecosystem, but I think Aditya had made that point with Priyadashini Mattu, but NDTV had led the campaign, I think, for Jessica Lal as well. And I don't think that was recognized because that really changed, in a sense, the whole case. We had a full investigation reopened because of the media impact then. Also, after the Nirbhaya case, where we saw new laws come in, those were also very extremely important. So we have seen that media has brought about a lot of change on what was seen as socially acceptable at one time. For instance, fairness ads. I mean, we saw it once that it was considered, I mean, every channel or network would carry them. But again, at NDTV, we decided not to, and that spread. And now you will see that even Fair and Lovely now, I think, has a different name or has changed it. So I think media has huge social impact. Often we don't realize how powerful that is. But I think that is something we need to be really careful about, especially when we, as I said, broadcast news which may be irresponsible or communal or toxic. We need to be very aware of that responsibility. Thank you so much, sir, for that question. Thank you so much, ma'am, for the answer. Please have the loudest amount of appreciation for them, please. Thank you so much. Very well pointed out that real life instance. I'll request Shani to kindly give over the token of appreciation. Thank you, please, in this very powerful moment. Thank you. Thank you so much to both of you. That was indeed an intriguing discussion. Now it's time for a very special keynote. And when I say very special, I truly mean it from the bottom of my heart. We have a special keynote session from the man himself, one and only Mr. Sumit Awasthi, consulting editor of NDTV. As you all know, he's been working as a journalist for more than 25 years. He has also worked with Network 18, Z News, Aaj and Indian Express in the past, and reports in India. He has a special keynote session on the topic, Alochna Kya Patrakaron Ke Liye Chinta Ka Vishay Hai. I'll repeat the topic once again. Alochna Kya Patrakaron Ke Liye Chinta Ka Vishay Hai. Please give it up for Mr. Sumit Awasthi, ladies and gentlemen. Also, please. Thank you. Thank you so much, sir. हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए. You prefer this or this mic? No, this. Okay, thank you. Good afternoon. Am I audible? Okay, thank you. तो शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले तो इस टीम को अनुराग जी के साथ कई साल पुरानी दोस्ती है, संबंध है, और एक्सचेंज फॉर मीडिया ने वो कुछ करके दिखा दिया है बीते सालों में जो अच्छे बड़े बड़े मीडिया हाउस नहीं कर पाए हैं. तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और साल दर साल मजबूत करने के लिए मैं पूरी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं. और आप लोगों की मेहनत यहाँ दिखाई देती है जब साल भर के बाद हम लोग दोबारा यहाँ इकट्ठा होते हैं. मैं उन कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि हर बार मुझे तंग करने बुला लिया जाता है, मतलब आप लोग को तंग करने के लिए. मैं तो तंग नहीं होता हूँ. हो सकता है कि कुछ बातें मैं बोलूं और जो लोग पिछली बार मौजूद थे उनको लगे कि मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं. तो रिपीट टेलीकास्ट का भी मजा होता है. कई बार अच्छे मैचेस जो हैं वो बार बार देखे जाते हैं. 1983 का वर्ल्ड कप की भारत की वेस्ट इंडीज में जो जीत थी और कपिल देव का जो कैच था वो बार बार देखने में आनंद आता है. अगर कुछ चीज पुरानी लगे तो उसके लिए बुरी लगे पुरानी के साथ साथ तो मैं माफी चाहता हूँ. बट मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ. और जब तक कुछ बदल नहीं पाता हूँ, जब तक कुछ ढूंढेगा नहीं बीत पाता हूँ तो उसको रिपीट करता रहता हूँ. कम से कम अपने जहन में वो जहन की बातें बाहर आती रहती हैं. टॉपिक है मेरा बड़ा कि क्या आलोचनाओं से पत्रकारों को घबराना चाहिए, परेशान होना चाहिए. और ये टॉपिक मैंने खुद लिया है. इस जलती भट्टी में खुद मैंने हाथ डाला है क्योंकि हम लोग आलोचनाओं को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. सबको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है. सवाल यह कि आलोचना कौन कर रहा है, आलोचना क्या हो रही है इंपॉर्टेंट नहीं है. आलोचना क्रिटिसिज्म कहां से आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम मेरे लिए. क्योंकि उसके पीछे की कोई कहानी होती है, उसके पीछे का कोई रीजन होता है, उसके पीछे की कोई फिलॉसफी होती है, शायद तभी ऐसा कहा जाता है. तो मैं बारी बारी से अपने इस टॉपिक को
2 या 3 हिस्सों में बांटते हुए अगले 10-11 मिनट में जो समय मेरे पास है आपको अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बातों से पूरी तरह सहमत ना हो, तो हम लोकतंत्र में रहते हैं और इतनी असहमति तो बहुत जरूरी भी है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग असहमत रहें और मेरी बातों को बिल्कुल शब्दशः ना भी माने। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट अवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हमको उत्सव बनाना चाहिए कि हमारे विचार अलग अलग हैं, इसीलिए हम आजाद हैं, इसीलिए हम लोकतंत्र में, इसीलिए हम भारत में। तो शुरुआत करता हूं आलोचना से। मैंने एक शो किया, उदाहरण के लिए मैंने एक शो किया और तुरंत उसी वक्त एक्स पर, फेसबुक पर, अब तो इतने प्लेटफॉर्म में नाम लेने की जरूरत नहीं, आप लोग सुबह तो सुन के परेशान भी हो गए होंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कमेंट आया और उसने आपको एक जगह पे कैटेगराइज कर दिया कि आप तो ऐसे हैं। उसी के नीचे 5-6 कमेंट के बाद एक और कमेंट आया, नहीं आप तो ऐसे हैं। तो अगर दोनों तरफ से आपको तौल के हिसाब किताब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो मेरा अपना मानना यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप यहां से भी गाली खा रहे हैं, अगर आप इस पक्ष से भी गाली खा रहे हैं, तो इसका मतलब आप दोनों को परेशान कर रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, आप कम से कम सही रास्ते पे चल रहे हैं। दिक्कत तब होती है जब एक ही जगह से एक तरह की चीजें कही जाएं आपको। जैसे आज सुबह में शायद एक क्लिप मैंने देखी, किसी सीनियर जर्नलिस्ट के नाम मैं भूल रहा हूं, या कल की बात है, तो उसमें वो कहा गया कि आजकल पेंट कर दिया जाता है, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। अगर ऐसा काम हो रहा है तो पेंट किया जाएगा, एक तरफ से पेंट किया जाएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं आप, दोनों तरफ से आप पेंट हो रहे हैं, तो वो भी ठीक है। तो कभी कभी कहानियां जो होती हैं वो अपने आप में इतनी मजबूत होती हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपने ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा सोनिया जी से किसी ने, सेकंड क्वेश्चन जो था, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा सवाल था। इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो था, टॉक शोज या न्यूज और व्यूज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हम ही दोषी हैं। आज से 15-20 साल पहले जब ये व्यूज आने शुरू हुए, टीवी डिबेट्स में बड़े बड़े नेता बैठने लगे, मुझे याद है एज अ तब रिपोर्टर, मैं आज से 25 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, अब इस प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 30 साल होने आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं 98, 99, 2000 उस एरा की। बड़े बड़े मंत्री टीवी पे आने के लिए आतुर रहते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसको हम कहते हैं ना कि जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, वो वाले मिनिस्टर्स उत्साहित रहते थे कि हमको टीवी पे कोई आधा घंटा मिल जाए, कहीं प्राइम टाइम मिल जाए, कहीं हमारी बात चली जाए। और वो उनके सामने अगर आप शर्त रख दो कि आपके काउंटर करने के लिए हम अपोजिशन का नेता भी बिठाएंगे, तो भी तैयार हो जाते थे, कि उनको डर नहीं था कि हाँ ठीक है मेरी लाइव डिबेट करा दो। अब उल्टा हो गया है, अब ऐसा नहीं है, अब आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब स्थिति ऐसी है कि एक पक्ष बैठता है और गनीमत है कि उसके जाने के बाद वो इस बात की अलाउ कर देता है कि दूसरे पक्ष को आप बिठा लो, वरना तो ये भी होता है कि नहीं उसको मत बिठाओ, एक ही पक्ष को चलने दो। तो समय बदल चुका है। और ये जो मैं लाइव डिबेट की बात कर रहा था, टीवी शोज की बात कर रहा था, उसके लिए हम सब अपने अंदर झांक के देखें कि हमने वो आसान मतलब मैं एज अ टीवी का इस तरफ हुई हूं और एक ऑडियंस की तरह भी बात कर रहा हूं, व्यूअर की तरह भी बात कर रहा हूं। हमने आसान रास्ता दे दिया अच्छे जर्नलिज्म को किल होने का। हमको बग झकझक में मजा आने लगा। हम एज ए दर्शक अपने गिरेबान में आप सब झांकिएगा, सोचिएगा जरूर कि कितने आप दोषी हैं इस चीज के लिए। आपको क्यों अच्छा जर्नलिज्म, मेहनत वाला जर्नलिज्म, ग्राउंड रिपोर्ट्स पसंद नहीं आई, और आपको 2 या 3 या 4 नेता बैठ के आपस में तू मैं कर रहे हैं, जो टॉपिक के दाएं बाएं बात कर रहे हैं, टॉपिक पर आते ही नहीं है। उनको पता है कि ये डिबेट शो 18 मिनट में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे का टाइम है, मुझे 18 मिनट का समय काट देना है इस डिबेट शो में बैठ के और मेरी आज की नौकरी पक्की। वो इस माइंडसेट से आता है, उसको पता है कि आप कैसे रिवर्स काउंट कर रहा है। हमने वो होने दिया, हमने इस तरह के शोज को अप्रिशिएट किया, हमने इस तरह की चीजों को हो सकता है आप में से तो कमरे में कुछ लोग बैठे हो जो इस तरह के क्लिप्स को फॉरवर्ड भी करते हो कि यार ये इसको देखा था, देखो कल उसकी कैसे बैंड बजा दी, कल उसने क्या बोला था, कल तो वो छा गया, कल तो वो हो गया।
तो टीवी तो दोषी है ही है, हम जो कैमरे के इधर लोग हैं, मैं अपने आप को इसमें पाक साफ नहीं कह रहा हूं, हम तो एक नंबर पे हैं, कल्पित नंबर 1 हम हैं, पर कल्पित नंबर 2 आप लोग अपने आप को मानने को तैयार हो कि नहीं हो, इस पर भी सोचिएगा। क्योंकि आप लोगों ने एज ए दर्शक, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों ने ऐसी चीजों को आगे बढ़ने दिया। अब आदत हो गई है, सोनिया जी ने बहुत अच्छा कहा, अब आदत हो गई है कि सबसे आसान तरीका है कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे न्यूज चैनल्स पे डिबेट शोज कर दो, डिबेट कह लो, डिस्कशन कह लो, क्या करना है। अब तो आपको ओबी वैन भी नहीं भेजनी पड़ती है, अब तो आपका कैमरामैन गाड़ी में बैठ के भी जाता है, अब तो वो जूम लिंक भेज देते हैं, यहां से जूम लिंक क्लिक करके गेस्ट बैठ जाता है, उसी की बिजली, उसी का डेटा, उसी की शक्ल, और आपकी विंडो में दिख रहा है वो। अब तो हम लोगों को इतना आसान हो गया है, फोन किया, अरे सर आज ये टॉपिक है, 1 घंटे के लिए आपका समय चाहिए, फला से फला, अच्छा ठीक है, जूम लिंक भेज दिया, दुनिया के किसी भी कोने में आप जूम लिंक से कनेक्ट हो गए। हमारा काम, हमको काहिल बना दिया आप लोगों ने, हम लोगों को बुरा जर्नलिज्म करने के लिए प्रेरित कर दिया आप लोगों ने, इस तरह के शोज को आगे देखकर, आगे बढ़ाकर। हम हैं दोषी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कल्पित नंबर 1 हूं, पर कल्पित नंबर 2 आप लोग भी हैं, इसको जरा सोचिएगा एक बार। अब क्या होता है, फिक्की की विमेन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते क्या, अभी 3 या 4 दिन पहले, आप में से शायद 1% लोगों को इस हॉल में पता हो तो बड़ी बात होगी, पर अगर मैं ये बोलूं कि किसने पार्टी छोड़ी और कहां ज्वाइन की और क्यों वहां से वहां चला गया और कौन से राज्य में क्या हो रहा, आपको सब पता होगा, और उसने डिबेट शो में क्या बोला आप सब जानते होंगे। फिक्की की उस रिपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे देश के लिए, और इस पर काम करने की जरूरत है। मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं, इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह के जर्नलिज्म अब सामने नहीं आते हैं, और ये किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, फिक्की की बात कर रहा हूं मैं, फिक्की की विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया हिंदुस्तान की औरतों के बीच में, और कहा कि हिंदुस्तान की औरतें जो घर में रहकर काम करती हैं, बच्चे पालना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, खाना बनाना, स्कूल ले जाना, साफ सफाई करना, इनको सैलरी अगर मिले, अगर हम इनको तनख्वाह देने लगे, तो हिंदुस्तान की जीडीपी 7% से बढ़कर 12% हो जाएगी। कभी सोचा हम लोगों ने इस तरह की रिपोर्ट के बाद? सोचते हैं हम सब महिलाओं पे जाके काम करवाएंगे, हम सब, हम में मैं भी आता हूं, हम सब उनको आदेश देंगे, खुद कितनी मदद करते हैं मुझे नहीं पता, पर क्या इस तरह की रिपोर्ट्स को प्राइम टाइम में जगह देने की जरूरत है कि नहीं, कि वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, या सिर्फ कह देने से कि नेता ने महिला रैली में ये कहा, फला नेता ने उस महिला का अपमान कर दिया, फला नेता ने अपमान कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये टिट्स बिट्स हैं, ये अखबार के बॉक्स आइटम है छोटे से, जो रियल स्टडीज हो रही है, ग्राउंड में जाके साल साल पर मेहनत की जा रही है, उन रिपोर्ट्स को जगह क्यों नहीं दी जाती है? क्यों? क्योंकि दर्शक नहीं है। मैं ये शो करता हूं, मुझे अपने एवरेज व्यूअरशिप से 70% कम व्यूअरशिप आती है। अगर मैं वही उल्टा 2 नेताओं की तू मैं दिखा दूं महिलाओं को लेकर, उसने ये कहा उसने वो कहा, तो वो 70% प्लस हो जाएगा। ये दिक्कत अपने अंदर भी है। तो अगर मैं खराब जर्नलिज्म कर रहा हूं और मेरी आलोचना हो रही है, तो मैं उसके लिए स्वीकार है मुझे कि आपने मुझे मेरी लगाम खींची, मुझे याद दिलाया कि आपको सही काम क्या करना चाहिए। इसीलिए तो वो कबीर का मशहूर दोहा है, निंदक नियरे राखिए। तो मैं तो निंदक के तौर पर आप सबको पास रखना चाहता हूं कि मुझे आप हमेशा सिखाते रहिए, बताते रहिए, आलोचना करते रहिए कि कब आप सही रास्ते पे जा सकते हैं। इस चीज को लेकर भी हम सब के अंदर ये विचार, ये सोच होनी चाहिए कि क्या हम सब वाकई में संतुष्ट हैं अपने जीवन से? क्या हम लोग इस चीज को लेकर खुश हैं कि हम जो कर पा रहे हैं वो वही है जो हम करना चाहते थे? क्या हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास की परिस्थितियां, हमारे आसपास के हालात ऐसे हैं कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? हम जीवन में वो अचीव कर पाएंगे जो हमने सोचा था? सबके मन में एक नया ख्वाब होगा कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो अपने आप को कहां देखना चाहता है या चाहती है। क्या हम
वो एनवायरनमेंट हमको मिल रहा है, उस एटमॉस्फेयर में हम रह पा रहे हैं। दिल्ली में रहकर इस 5 सितारा होटल के 5 सितारा कमरे में बैठकर ये विचार, हो सकता है मुझे आप लोगों को त्वरित ना कर रहे हो, जब बाहर निकलिएगा 40 डिग्री 45 डिग्री में जाइएगा दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर, और वहां पर जब पानी नहीं मिलता है, वहां पर जब आपको आपकी फसल सड़ जाती है बारिश आने से, उन लोगों को देखिए जाके, आप दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर जाना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे पा रहे हैं? वो काम कौन करेगा? वो काम हमको करना है, और मुझे उस काम को करने के लिए आपको मेरे ऊपर चेक रखना है कि आप करिए जाके। हम आपसे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, और जब तक वो चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे हमारे जीवन में, तब तक हम इस सस्ती आसान जर्नलिज्म में आगे बढ़ते रहेंगे। बड़ा आसान होता है 2 महिलाओं को बिठा के महिलाओं पर डिबेट कर लेना, बड़ा मुश्किल होता है मणिपुर जाके महिलाओं की रिपोर्ट जाके दिखाना कि मणिपुर में महिलाओं की क्या स्थिति गुजरी थी। उस चीज के लिए हमें आपकी ताकत चाहिए, हमें आपका बैकअप चाहिए, हमें आपका हेल्प चाहिए। अगर आप अच्छा जर्नलिज्म देखना चाहते हो, जर्नलिज्म दोनों तरफ से हो सकता है कि इस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं। और बहुत अच्छी बात सोनिया ने बोली, सोनिया ने, कि हमको आज के बदलते, मैं लास्ट 2 सेकंड बच्चे, मैं 3-4 मिनट ले लूं, थैंक यू। हमको इस चीज को लेकर सोचना चाहिए कि क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं आने वाले वक्त में एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, जब हम जाएं आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, तो कम से कम तसल्ली से जाएं कि हम एक अच्छा काम करके गए हैं। हम स्पोक्स पर्सन बन के ना रह जाएं, चाहे एक्स के चाहे वाई के। दिक्कत वही हो गई है, स्पोक्स पर्सन बनने को ताकत माना जा रहा है, सवाल पूछने वाले को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं और दोनों तरफ के लोग मुझसे सवाल पूछने के लिए मेरी आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसी आलोचना को मैं गले लगाता हूं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जोर से ताली होनी चाहिए कि नहीं? थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए पर्सपेक्टिव रखना आगे टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। थैंक यू सो मच। वी हैव स्पेस फॉर 1 क्वेश्चन। किसी को पूछना है, आई थिंक वहां पे प्लीज पास ऑन द माइक, समबडी ओवर देयर। वी जस्ट हैव स्पेस फॉर 1 क्वेश्चन, उनको प्लीज दीजिए। इधर इधर आपके सामने है, ओवर देयर। हाँ, एक सवाल। नमस्कार अवस्थी जी। जैसा कि जानते, आप काफी लीडिंग पब्लिकेशन का हिस्सा रहे, लीडिंग न्यूज चैनल का, न्यूज 18 और एनडीटीवी। तो एक आपने अभी जब आपका स्पीच चल रहा था, उसमें आपने 1983 वर्ल्ड कप के बारे में बात की थी। एनडीटीवी और सीएनएन न्यूज 18 दोनों को स्पोर्ट्स के लिए जाते थे, स्पोर्ट्स शो करते थे, लेकिन अब दोनों चैनल से, और जो चैनल में पहले थोड़े बहुत भी थे, वो खत्म होता है, एकदम ना के बराबर हो गया है। तो उसका दोषी किसको मानते हैं आप? सॉरी, आपका नाम बताइए। लक्ष्मीकांत तिवारी। तिवारी जी, क्रोध के साथ आपको आईना दिखा रहा हूं, माफी, बुरा नहीं मानिएगा। आप एनडीटीवी इंडिया को देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब। अगर आप एनडीटीवी इंडिया को देखेंगे तो जितना स्पोर्ट्स हम कवर करते हैं, आज भी जब आईपीएल चल रहा है, मेरे चैनल पे कम से कम 4 शोज हाफ एन आवर के, 3 शोज हाफ एन आवर के हर स्लॉट में चल रहे हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। प्राइम टाइम में 6:30 का शो डेडिकेटेडली क्रिकेट पे है। पर सिर्फ क्रिकेट पे नहीं है, हम लोग जो भी स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें इंडिया अच्छा करता है, चाहे कोई भी एथलीट, कोई भी गेम हो, चाहे वो जेवलिन हो, चाहे वो चेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ इस मंच से खड़ा होके, वो एनडीटीवी कवर करता है। मैं बाकियों के बारे में नहीं बोल सकता। आपने न्यूज 18 का भी नाम लिया, न्यूज 18 मेरा पास्ट है। मैं बीते 30 सालों में 5 चैनलों में काम कर चुका हूं, तो उनके बारे में अब क्या चल रहा है मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा। पर स्पोर्ट्स दिखाया जा रहा है। स्पोर्ट्स में एक दिक्कत हुई है दोस्त तिवारी जी, और वो ये कि कॉपीराइट का बहुत तगड़ा इशू हो गया है। जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स चैनल के पास उनके कॉपीराइट्स हैं। वो 1 सेकंड का फुटेज आपको, क्योंकि आप ऑडियो विजुअल मीडियम में है, अगर आप विजुअल नहीं दिखा रहे हैं कि कैसे छक्का मारा वेंकटेश अय्यर ने या कैसे छक्का मारा विराट कोहली ने, तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। आपको स्टिल पिक्चर्स दिखानी पड़ती है, वो भी फाइल पिक्चर्स, पुरानी गेटी की इमेजेस। तो ये बड़ा चैलेंज हुआ है कि दर्शक को जो कुछ टीवी का न्यूज पे एनालिसिस मिलता था स्पोर्ट्स में, वो उसको स्पोर्ट्स चैनल पे मिलने लगा है। तो उसको जरूरत ही नहीं है कि न्यूज चैनल को देखे। बट इसके बावजूद भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास 5 दर्शक भी है, उन 5 में से अगर एक आदमी भी क्रिकेट देखता है या स्पोर्ट्स देखता है, तो मुझे उसको केटर करना चाहिए। 24 घंटे नहीं कर सकता हूं तो कम से कम 1 घंटा तो कर सकता हूं दिन में।
तो वी आर डूइंग इट डेडिकेटेडली। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित सर। एंड आई बिलीव कॉपीराइट का वो जो पॉइंट है बहुत लोगों को पता नहीं होगा। थैंक यू सो मच उसके बारे में बताने के लिए। सर प्लीज रुकिए, आई रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन स्टेज। मैं बुलाना चाहूंगा प्रियंका भदौरिया मैम को, एसोसिएट डायरेक्टर इवेंट्स एंड मार्केटिंग एक्सचेंज फॉर मीडिया, टू काइंडली कम अप ऑन स्टेज एंड गिव अस द टोकन ऑफ appreciation to sir. Give it up for ma'am once again, ladies and gentlemen. थैंक यू सो मच। एक और बार सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। All right, fiery conversation indeed from sir, right? Agree करते हैं आप लोग? Over there at the back? Yes. We have a panel discussion right now. I'll quickly give the team over here some time to do the setup. In the meantime, I'll announce the topic for all of you. The topic for the moment for this panel discussion is Beneath the Surface, How TV Newsrooms Function Smoothly in High-Stress Environments. I'll repeat the topic for you all once again. It's Beneath the Surface, How TV Newsrooms Function Smoothly in High-Stress Environments. And before we get started with this one, I'll request all of you once again to please kindly keep your phones in silent mode. We've been hearing some vibrations and phone ringing noises, which I believe was a source of distraction for our speakers. So let's ensure that doesn't happen once again. I request everybody to kindly keep your phones in silent mode. And also, sir ने भी कहा, सब ने कहा कि this is indeed relevant to social media. So please keep tweeting as well. Hashtag @E4M News Next. That is the hashtag that we have for today. आप लोग जिधर भी post डाल, especially on Twitter, if you're posting, please use the hashtag E4M News Next. That's the hashtag for the day. And I believe we're sorted with the panel. Topic मैंने announce करके now it's quickly time to call on stage the speakers and the moderator. Please give it up, ladies and gentlemen, for Tehseen Munawar, senior journalist, Prafulla Kumar Mishra, Times Now, Navbharat, senior individual. We have Janardhan Pandey, founder and managing director from Net Value Media. And the session is going to be moderated by Anand Prashar, deputy editor, Samachar for Media. In Sharo ke liye zor se taali, please, ek aur baar. Zor se, when I say zor se, I request all of you over there at the back to engage as well, please. Zor se, over there. Thank you. Over to you, sir. Ready? Thank you. सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। हमारे साथ जनार्दन पांडे जी है, मीडिया में इनका काफी लंबा अनुभव, नेट वैल्यू मीडिया के संस्थापक हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ तहसीन मुनव्वर जी हैं, बहुत इनका भी मीडिया का काफी लंबा अनुभव रहा है, उर्दू के कवि हैं, शायर हैं, लेखक हैं, बड़े पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी हैं, जो टाइम्स नाउ नवभारत में फिलहाल गेस्ट कोऑर्डिनेटर का काम देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच पे। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फिलहाल जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल मीडिया में बहुत तेजी से होने लगा है, न्यूज रूम में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तो उस स्थिति में किस प्रकार से जो है पत्रकार काम करते हैं, किन चीजों को वो चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं पांडे जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। आपका काफी अनुभव रहा है, तो आप इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मीडिया में तकनीक के प्रभाव से जो मैन पावर है उनके ऊपर काफी चैलेंजेस फिलहाल आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। थैंक यू आनंद जी। जनार्दन पांडे, मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। आनंद, आपने जो पूछा है, देखिए बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो न्यूज रूम के बादशाह हैं सभी। मैं मीडिया प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा ये मानना है कि देखिए कोई भी प्रोडक्शन का काम है वो बहुत मुश्किल का होता है। इसके पहले कि हम कोई कमेंट करें या कुछ भी बोलें, और आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपका शेड्यूल कितना भी पक्का रहे, प्लानिंग रहे, लेकिन वहाँ इंसिडेंसेस होते रहते हैं, चैलेंजेस हर सेकंड आते रहते हैं, क्योंकि आप 24/7 इवेंट हैंडल कर रहे हो। एक बस जहाँ तक मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैंने स्टेज शोज काफी हैंडल किए हैं, कि आपको एक्सीडेंट्स बचाने रहते हैं। रही बात, जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से जो देखिए हर न्यूज रूम में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सो जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग है अडॉप्ट करना
आप एक न्यूज चैनल से दूसरे न्यूज चैनल में मूव करते हो, या जब वो कंपनी अपग्रेड करती है न्यूज चैनल अपने टेक्नोलॉजी को, तो उसको अडॉप्ट करना, और उस अडॉप्टेशन और उस अपग्रेडेशन के दौरान बहुत बार जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है सभी। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए, ये जो पूरा न्यूज प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो आपके स्किल, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन पे चलता है। क्या आपको ये बिलीव होता है कि आप जो कंटेंट करना चाहते हो उसमें आपकी महारत है, तो ये चैलेंजेस हमेशा बने रहेंगे। टेक्नोलॉजी आती जाती रहेगी, लोगों को डिसिप्लिन रखना और उनको ट्रेंड रखना मुझे लगता है चैनल्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। और हर एक न्यूज जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको चाहिए कि अपने लोगों को हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे उनको ट्रेन करते रहें और नई नई टेक्नोलॉजी से उनको वाकिफ रखें, तो उसका प्रोडक्शन हमेशा अच्छा रहेगा। जी, अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो तहसीन मुनव्वर जी हैं वो इस टॉपिक पर कुछ अपने विचार रखें। बहुत शुक्रिया। नूर साहब का एक शेर बहुत मशहूर शेर है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा तब्दील करूंगा, जर्नल से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बढ़ चुका हुआ है, हिस्सा में कुछ बचा ही नहीं। ये जो पत्रकार बिरादरी है, हम लोग जो है, अगर आप फिल्म में देख रहे हैं पत्रकार को, सभी जगह जिक्र कर रहे थे इस तरीके से धूप में काम कर रहा है, आंधी बारिश तूफान। मैं उस जमाने में लाला का मीडिया एडवाइजर था रेलवे में, पुराने कहते थे ये फौज की तरह काम करते हैं, ये आर्मी की तरह काम करते हैं, ये पत्रकार है। हर वक्त इसको चाहते रहना होता है, हर वक्त इसको जो है खबर के पीछे भागना पड़ता रहता है। ये दबाव बहुत ज्यादा रहता है। कभी कहते हैं कि कभी ना खड़ा बाजार में लिए लुका चूहा, जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ। ना इनकी घर गृहस्थी सही तरीके से रह पाती है, और दबाव, सबसे बड़ा दबाव जो होता है सामने स्क्रीन पर, जो मुखालिफ चैनल है, जो विरोधी चैनल है, जो आपका राइवल चैनल है, उस पर कोई खबर आपके चैनल से पहले खबर आ गई है, यह सबसे बड़ा स्ट्रेस जो होता है वो इनपुट के लिए भी है, आउटपुट के लिए भी है, और असाइनमेंट उससे हिल जाता है और फील्ड का रिपोर्टर तक भी उससे हिल जाता है। स्ट्रेस बहुत रहता है, तनाव रहता है। लेकिन ये तनाव जो है, मैंने आज सुबह आईएमसी में अपने प्रोफेसर दोस्त से बात की, मैंने कहा क्या आपके किसी कोर्स में ये जो स्ट्रेस आता है जर्नलिस्ट को, ऐसा कोई सब्जेक्ट रखते हैं, ऐसा कोई चैप्टर आपके यहां है? ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते नहीं। तो ये जो नया लड़का आता है फील्ड में, जिसने दीपक चौरसिया को देखा हुआ है, जिसने अमीश डागर को देखा हुआ है, सुनील अवस्थी को देखा हुआ है, और इस तरह के उसने ख्वाब बना हुए हैं, वो इस तरह से जब यहां पर आता है और उसको वो चीज नहीं मिल पाती, क्योंकि असाइनमेंट उसको कह रहा तुम कहां हो, पहुंचो, फौरन रिपोर्ट करो, लोकेशन से रिपोर्ट करो। और कहीं पे टाइट क्लोजअप करके भी अगर कहेगा कि भाई हाँ मैं यहाँ फील्ड से बोलोगे, तो नहीं, वहां तो दूसरा जो है राइवल चैनल का रिपोर्टर पहुंच चुका, तो कहां हुआ। तो ये सारे प्रेशर दबाव के साथ, और ये दबाव फील्ड का है, लेकिन रूम में इससे बड़ा दबाव है। उसमें जो है, एक तो हमने आज दिन भर की जो खबर आनी है, वो मॉर्निंग मीटिंग में या एक दिन पहले से, एक हफ्ता पहले से जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी तैयारी पहले से चल रही होती है, पूरी प्लानिंग होती है, कोई जजमेंट है कोर्ट का, तो ये वो जजमेंट या तो हाँ में जाएगा या ना में जाएगा। अगर हम पहले से दोनों तैयारी करके रखें इसकी, तो ये हाँ क्या है, ये ना क्या है, तो उसमें थोड़ा सा
काम कम हो जाता है ग्राफिक्स टीम के पास, रन डाउन के पास, और इनका तनाव थोड़ा सा कम रहता है। ये प्री प्लानिंग स्टेजेस पे अगर बहुत सारा काम कर लिया जाए, ग्राफिक्स को पहले से तैयार कर लिया जाए, विंडोज को पहले से तैयार कर लिया जाए, गेस्ट कोऑर्डिनेटर जो है उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस दिन बड़े इवेंट के लिए उसने सारे गेस्ट जो बड़े गेस्ट जो उसके चैनल पे होने चाहिए उनको उसने मार्क कर लिया है, उससे बात कर ली है। उस दिन की पॉलिसी क्या चैनल की है, डू नॉट वो जो है वो पहले से तैयार कर लिए गए, ताकि किसी को इंस्ट्रक्शंस के लिए किसी की तरफ देखना ना पड़े। और यह सारा काम टीम लीडर का होता है। टीम लीडर के पास अगर स्ट्रेस लेने की ताकत है, डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं, टीम लीडर के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रेस अपने ऊपर लेता है। न्यूज देखिए, अगर जब तक चिल्ला चिल्ली ना हो, जब तक शोर शराबा ना हो, जब तक धंधा बाजार ना बने, न्यूज रूम रखता नहीं है। और ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, तो रूटीन में काम चल ही रहा होता है, अचानक जैसे कहीं पर किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी बड़े लीडर को, और वो लाइव टीवी कैमरे पर गोली मारी गई है, तो उसके बाद और वो अचानक ऐसे वक्त पे मारी गई है कि जहां पर आपके रिपोर्टर्स, आपके एंकर्स वो कहीं पर अपना आराम से जो है जाके बैठ गए हैं। अब सबको वापस बुलाना, सबको लाना, सबको और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना, उसके साथ ये सारा एक पूरा, अगर ये पहले से प्लान स्टेजेस होती है, जैसे हम लोग इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसी तरह अगर कोई लॉन्च होती है, उसके बाद से सबका अगर काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये रिकवरी प्रोसेस में भी हम देख रहे हैं कि कौन सा जो हमारा टैलेंट है वो कहाँ के लिए सुटेबल है, और क्या वो इतना स्ट्रेस ले पाएगा इस वक्त में, क्या वो स्ट्रेस ले पाएगा इस बुलेटिन के लिए, इस न्यूज के लिए, क्या वो स्ट्रेस ले पाएगा। ये सारी चीजें अगर हम पहले से तय कर लेते हैं और पहले से सारी चीजें प्लान कर लेते हैं, तो फिर जो है सब कुछ बहुत आसान सा होने लगता है। लेकिन इतना आसान है नहीं। ये फूल हमें कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। रातें जो है, जो टीम लीडर होता है, जो एडिटर होता है, जिसके ऊपर पूरे चैनल की जिम्मेदारी होती है, उसकी रातें भी करवटों में बीतती है। वो जब तक उस चैनल उसके साथ रुके, देखिए हमारे यहाँ एक बार ये गुरु का दिन है, लेकिन ये दिन हम सबको तड़पाने के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसी दिन बैटिंग्स आती है सारी, उसी दिन तैयारी आती है, रात की रात बहुत तड़प के साथ रखेंगे। तो जो सारा वेटिंग का ख्याल है, उसके पीछे सारी जिम्मेदारी वही सारा स्ट्रेस देता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर टीम लीडर अच्छा है, टीम लीडर जो है अपने ऊपर वो सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस जल्ब करता है और अपनी टीम पर थोड़ा बहुत प्रेशर डालता है, और वो पहले से सारी चीजें प्लान करके रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज रूम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत है। एक और बात होती है, जब हमारे पास लोग कम होते हैं, कॉस्ट कटिंग होती है, एक का जो अकेले का काम था वो कर रहे हैं, एंकर को भी हम कॉपी में बैठा देते हैं, एंकर से भी हम दूसरे काम ले रहे हैं, हम जो है मल्टी एंकर को के तौर पर भी यूज कर रहे हैं। तो सारे काम उसको एक आदमी से बहुत सारे काम लेने लगते हैं, तब उसके पास स्ट्रेस होती है, फैमिली लाइफ में रहता है उसकी, वो स्ट्रेस में रहता है, घर में प्रॉब्लम होती है, इश्यूज आते हैं। फौजी जैसे मैंने कहा फौज की तरह काम करता है, तो फौज को बहुत सारी पर्क्स भी मिलती हैं, बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं जिसमें उसको छुट्टियां भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे मामला देखे गए हैं कि जहाँ पे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि आपको जब छुट्टी चाहिए तब आपका रिन्यूअल नहीं है, या आपके पास रिन्यूअल नहीं है, आप जो कम लोगों में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी है। एक तो हमें कोशिश करनी है जो जितने भी है, जहाँ पर मीडिया जितने भी है, वहां पे एक चैप्टर जो है प्रेशर को किस तरीके से लिया जाए, और जो इस तरह की चीज है उसमें किस तरह से वो इससे निकल सकता है,
तो ये स्ट्रेस मेंटेन कैसे करें, साइकोलॉजिकल एनालिसिस का कैसे किया जाए और किस प्रकार से उसके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहे हैं वो किस प्रकार उससे निकल सकता है, उसका भी हो। और मैंने देखा हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं रहा तो वहां पर भी ये मैंने देखा है कि टाइम टू टाइम इस तरह के कोर्सेज होते हैं, इस तरह के लेक्चर्स होते हैं जिसमें आप जो इन सब चीजों से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूँ कि लीडर का है कि लीडर का अगर प्रेशर होगा ऊपर से वो प्रेशर नीचे भी डालेगा, लेकिन अगर प्लान स्टेज पर बहुत सारी चीजें करके रखेगा और सही आपको सही जगह पर बिठा के रखेगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इस तरह का बहुत बड़ा स्ट्रेस आ सकता है। थैंक यू। अब मैं इस चर्चा में प्रफुल्ल जी को शामिल करना चाहूंगा। जैसा कि सर ने बताया कि स्ट्रेस तो वैसे रहता है, लेकिन जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है। जैसे कि कोई बड़ा दिन है, आप ये मान लीजिए कि बजट आ रहा है या प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं या कोई बड़ी पार्टी मीटिंग्स होती है, तो उसमें हर पार्टी के प्रवक्ता को लाना, उनको एंगेज करना, आपके सामने कई मुश्किलात जो है आती होंगी। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से न्यूज रूम में स्ट्रेस को महसूस करते हैं और क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं इस चीजों को लेकर। अभी जो है हमारे जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन का जो रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एडिटर इन चीफ हमारे अगर टीम लीडर अच्छा होता है, जैसे मैं अभी नवभारत में हूँ, मेरे टीम लीडर नविका कुमार जी हैं, उनको क्लियर है कि क्या चीज हमें चाहिए और क्या चाहिए। उन्होंने पहले से इंस्ट्रक्शन दे देती है कि ये चीज हमें चाहिए, यही चीज हम पे डिबेट करना है। उन्हें पता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उन्हें सब चीज पता रहता है, वो हमें बता देती हैं, हम लोग उसका इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कोई चीज अगर एडिटर इन चीफ क्लियर होता है, जो मुझे हमेशा अवसर मिला, इससे पहले भी अदर चैनलों में मैं था, वहां भी ऐसा ही रहा, तो आपको कोई भी काम जो है वो दिक्कत नहीं होता है। क्लियरिटी रहती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा। और मेरे साथ क्या है कि मैं 25 साल से ही काम कर रहा हूं और 15 घंटे 12 घंटे मैक्स जो है ना, मैं रहता ही रहता हूँ ऑफिस में, हो ना काम या हो। और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा तैयार रहता है। आज बजट है तो अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। अगर आप ये क्लियरिटी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। कभी आप ऐसा फेस करते हैं कि आप किसी प्रवक्ता को बुलाते हैं और आप उसको दूसरे प्रवक्ता का नाम देते हैं, मना करते हैं कि इसके साथ नहीं बैठूंगा? ये तो जनरली अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। और हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टू बेस्ट हो वो हमें हमारे शोज में हमेशा रहे और सही से वो अपनी बात। जनार्दन जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। फिलहाल टीवी डिबेट्स को लेकर के बहुत चर्चाएं चलती हैं। सुमित अवस्थी जी भी इस चीज को बोल करके गए कि 4 नेता लोग अगर टीवी डिबेट में लड़ रहे हैं तो आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आ रही है तो उसको दर्शक नहीं मिलते। उन्होंने अपनी शो की बात की। तो आप जब बाहर से इन टीवी डिबेट्स वगैरह को देखते हैं और ये शोर शराबा जो एक तरीके से, चूंकि सोशल मीडिया पे व्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसको लेकर के आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, न्यूज एक कैटेगरी है, पता है, ये सारी दुनिया नहीं देखती है। हर हर न्यूज का ऑडियंस हर कोई नहीं होता है। सो पिछले 2 दशक में, क्योंकि पहले न्यूज आता था अखबारों में, मतलब न्यूज विदाउट नॉइज था। फिर न्यूज और नॉइज आया, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडिया में तो बिना आवाज के तो न्यूज हो नहीं सकता, उसका इम्पैक्ट बढ़ा, न्यूज सुनने वाले बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, न्यूज बन गया जीसी। सो ऑडियंस बहुत बढ़ गए उसके, क्योंकि ऑडियंस बहुत इवॉल्व है। हम लोग मीडिया की तरफ से डेटा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, हमको लगता है ऑडियंस को हम बेवकूफ बना रहे हैं। ऑडियंस हमारे साथ खेलता है, वो अपनी चीजें हमारे में से कंज्यूम करता है और बाकी सब छोड़ देता है। और धीरे धीरे अब तो पिछले 1 दशक में बहुत इवॉल्व हो गया है, ठीक है, बहुत समझदार है। अब क्या हो रहा है कि अब नॉइज हो गई है और न्यूज बहुत कम हो गया है, ठीक है। ये परसेप्शन है, मेरा नहीं है, जनरल परसेप्शन है मार्केट का। तो अच्छा, दूसरा तो ये जो एक होता है, एक फैट बोलते हैं, एक लगता है कि हमको, हम जो बेच रहे हैं वो बिक रहा है, हमारा हल्ला गुल्ला बिक रहा है, हमारी गलत खबरें बिक रही है, हमारी सेंसेशनलिज्म बिक रहा है। वो बिकता नहीं है। वो एक दौर आता है कि जब वो चल जाता है कुछ भी, ठीक है। राखी सावंत, उनका एक अलग स्किल है, मैं एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हो गई, लेकिन वो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार या शाहरुख खान तो नहीं बन सकती। समय होता है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो दौर चल रहा है कंज्यूमर के हिसाब से, वो कंज्यूमर धीरे 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 अब उसको फिल्टर करेगा, ठीक है। ये जो
जीईसी बनने की, कॉमेडी चैनल बनने की और सेंसेशनल चैनल बनने की जो होड़ लगी थी वो धीरे धीरे बैकफायर करेगी और वापस चैनल्स जो भी ये सब चीजें बेच रहे थे न्यूज के बहुत ज्यादा दूर जा करके वो अपनी जगह पे वापस आने को मजबूर हो जाएंगे। वो दर्शक उन्हें लेके आएगा। तो ठीक है, दर्शक इतना बड़ा हुजूम है, इतने करोड़ों लोगों का देश है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन वो धीरे धीरे समझदारी से आपको अपनी जगह पे पहुंचा देता है। तो न्यूज की लीक से हट करके अगर कोई काम कर रहा है तो उसको यही मार्केट वापस उसको न्यूज पे लाके खड़ा करेगा, नहीं तो मार्केट से बाहर करेगा। और बहुत लोग बाहर चले भी गए। एक सवाल तहसीन सर मैं आपसे लेना चाहूंगा। आपने ये तो बताया कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, आपका टीवी का एक्सपीरियंस आपने बताया कि आपने काफी काम किया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत एक तरीके से क्रांति आई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने भी डीप फेक को लेकर के काफी चिंता जताई। डिजिटल में हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि डिजिटल में अगर आपने कोई खबर गलती से पोस्ट कर दी या वीडियो पोस्ट कर दिया तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन टीवी के मामले में ये उल्टा है। टीवी में अगर गलती से कोई फेक न्यूज आपके पास आ गई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, डीप फेक का यूज करके किसी भी नेता का कोई बयान किसी भी तरीके से वो चल गया अगर संपादक की गलती से या आउटपुट हेड की गलती से, तो वहां फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की होड़ है कि सबसे पहले हमको खबर ब्रेक करनी है। आपने बताया कि आपका जो दूसरा जो प्रतिद्वंदी चैनल है वो उस खबर को कैसे पहले ब्रेक कर गया। तो इस चीज को लेकर के सरकार भी चिंतित है, मीडिया भी चिंतित है, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत अच्छी चीज है माफी। अगर गलती से चल गया है तो माफी मांग लेनी चाहिए। वैसे मालूम है कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म से उसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर लोगों को रिकॉर्ड कर लिया है फिर वहां से इतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं एक बात बताता हूँ, आज से तब टीवी न्यूज ऊपर आ रही थी, एक बहुत बड़ा चैनल। तो मैं तब मेरा सलाहकार था रेलवे में, रेलवे मंत्री का। तो मैंने उनसे पूछा कि अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग ब्रेकिंग में गलत खबर चल जाती है और उसके बाद वो हट जाती है, फिर वो दिखाई नहीं देती, ऐसा कैसे होता है? तो मैंने कहा कि मैं कहता हूँ चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसको ब्रेक कर दो। गलत हो जो हटा लेंगे और तब तक जो है अगर सही होगी तो जितने आई बॉल्स हैं वो हमारे पास रुक जाएंगी। तो ये सारा खेल जो है आई बॉल्स का है और वहां पर पांच कर कभी कभी जो है हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत है और धीरे जो है टेलीविजन से लोग अब जो होते जा रहे हैं वहीं पर वन का जो है और आ रहा है। मैं आपको बात बताता हूँ कि हमने उस जमाने में रेडियो में काम किया, मैंने दूरदर्शन में काम किया, दूरदर्शन पे खबरें पढ़ता था मैं रेडियो के शुरू से दिल्ली से खबर पढ़ता था जब वहाँ पे हालात खराब हुए 90s में। तो मुझे एक लव लेटर आया था वेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें उसने लिखा कि अपने आप को सैयद मोहम्मद तंसीम करने वाले के मौत के परवाने पर दस्तखत किए जा चुके हैं और हमारे कनाट प्लेस, मंडल हाउस और पार्लियामेंट स्ट्रीट यहाँ तक पहुंच चुके हैं। उनको लगा रेडियो वहीं से जाता है तो यहाँ करके तपाक से ऐसा जमाना आया कि 90 से 96 तक मैं कश्मीर में खबरें पढ़ने चला गया। मैंने अपने डायरी में लिखा कि चलो तंसीम मौत के बाद में जिंदगी की तलाश करते हैं। और बहुत ही फेक न्यूज़ का पकड़ था और वहां पे मैंने लगातार 3 दिन खबरें पढ़ी और वो मेरा बेस्ट पीरियड रहा। देखिए, स्ट्रेस की बात करते हैं ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में जाके आपको इतना बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, आप इतना जान जाते हैं जिंदगी के बारे में, हर चीज के बारे में, किसी कॉन्फ्लिक्ट को समझने में आपको जो सहूलियत होती है। और स्ट्रेस, अब इससे ज्यादा स्ट्रेस क्या हुआ कि आपके बगल में जो है एक मिसाइल रखा हुआ है न्यूज़रूम और आप खबर पढ़ रहे हैं। मेरे पास कौन आता है, दरबार में होता है, दरबार में सबसे पहले मेरे साथ क्या रहता थे, मेरे करीब जिसको में रहता था, तो हमने अल अब्बास मिसाइल पकड़ा है, तो लेके आ जाए न्यूज। मैंने कहा सर अब तो न्यूज जाने वाली है, वो 1 बजे का आता था शाम को। मैंने कहा आपको बिल्कुल जाने वाला है तो कल मैं लेके आ जाऊँ। मैंने कहा अब वो लेकर आ गए, मैं खबर पढ़ने बैठ गया हूँ और वो बराबर में रख दिया और हल्के से मैंने इशारा किया कि इसका जो लाल पानी है से मिलना चाहिए। अब बताइए 15 मिनट के बाद आपके पास एक रखा हुआ और आप खबर पढ़ रहे हैं।
तो इस तरह की सिचुएशन सबके साथ किसी ना किसी लेवल पर आते हैं, और जितना आप तजुर्बा आपका बढ़ता चला जाता है, तजुर्बा बढ़ता चला जाता है। मेरा स्ट्रेस लेवल, मतलब स्ट्रेस को झेलने का तजुर्बा इतना बड़ा कि मैंने 2.5 साल ममता बनर्जी के साथ उनके मीडिया एडवाइजर के तौर पर भी काम किया रेलवे में, और मुझे कभी स्ट्रेस हुआ मैं उनके साथ अच्छा तरह काम किया, जबकि लोग उनके बारे में क्या क्या नहीं कहते, और उनका लेकिन तारीफ भी करती थी। तो बेसिकली ये देखिए, आपको ये तजुर्बे के साथ सारी चीजें आती है, आपको अपने अंदर, आप अगर, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो कि आप लोग चले हमारे साथ इस फील्ड में अगर आप आए। मेरे वाले साहब उर्दू के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, मरहूम परवाना दौलवी साहब, वो कहते थे सहाफत के लिए यानी पत्रकारिता के लिए आपको सिर्फ जरूरत की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उन्हें जिंदगी भर कुछ नहीं लिया। अपना जो है एक इनका पहला होता था कान में कलम, जो उस जमाने के लोग हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोग तैयार किए उर्दू जर्नलिस्ट ने जो आज भी जगह जगह उनका नाम लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको बहुत से लोग हमारे से हालात ऐसे होंगे कि वो स्ट्रेस नहीं ले पाए। अगर आप कहीं पर भी बैठ के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, उसका मतलब ये कि आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं। सुमित जी बहुत अच्छी बात कह के गए हैं, लेकिन उन्होंने कितनी बार स्ट्रेस लिया उस तरह का जो आपसे कह के गए। मैं कहता हूं गूगल के पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कि उसके पास एक रिमोट कंट्रोल होता है, जब चाहे चैनल चेंज कर दे। हमें क्यों इल्जाम दे रहा है वो? जिस दिन वो चैनल चेंज करना शुरू कर देगा, टीआरपी नीचे जाएगी, उस दिन से सबकी जो है सबके टॉपिक्स लीक हो जाएंगे। जिस तरह अपोजिशन जो है वो मीडिया को ब्लेम करती है, आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? आप क्यों नहीं सड़क पर उतरते लगते हैं हुकूमत से अगर वो आपके साथ गलत कर रही है? आप मीडिया को क्यों अपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो बेसिकली सब लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर जब काम करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ने लगती है। मेरा सीधा सीधा मानना यह है कि आप जो है जितना स्ट्रेस ला सकते हैं अपने परिजन, अगर आप टीम लीडर है, आपकी टीम ऐसा ही परेशान है, उसको वो अपने घर से दूर है या कहीं पर है, उसको उसकी सैलरी आपसे कम है, वो किस तरीके से चल रहा है, उसकी लड़ाई कितनी उसको सता रही है, उसको क्या क्या चीजें सता रही है, वो वैसे ही स्ट्रेस है। जितना आप एज ए टीम लीडर अपने ऊपर स्ट्रेस लेंगे और अपनी टीम को कम स्ट्रेस देंगे, उतना ही आपका न्यूज रूम जो है वो कूल रहेगा। वो बहुत जब मैंने उर्दू में था तो हमारे साथ न्यूज एटीन की मैं टीम को देखता था, उनके जो लीडर थे मैंने उनको देखा, अक्सर हम लोग भड़कते हैं और एकदम से भड़कते, अरे भड़कने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, अरे ये खबर क्यों नहीं आई, ये लगाओ, अरे ब्रेकिंग क्यों, अरे क्या कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता वहां पर। अरे इसको काटो, उसको ले लो, हम यही काटपीट कर रहे होते। लेकिन उसके बाद मैंने उनको देखा, जब सब कुछ सिचुएशन सेटल हो जाती है, वो बुलाते हैं सबको, उनसे कहते हैं सब ठीक ठाक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। ये जो एनकरेजमेंट है, आपको हौसला जो बढ़ाना है अपनी टीम का, सब कुछ होने के बाद में आपको उनका हौसला बढ़ाना है, उनसे कहना वेरी गुड, गुड जॉब, तुम्हारा दिन आज अच्छा नहीं था लेकिन तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उससे जो है उसका दिन भर का स्ट्रेस जो है वो नीचे आ जाएगा, नहीं तो वो उसी स्ट्रेस के साथ अपने घर जाएगा। वो स्ट्रेस जो है अपने घर में हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करे, या वो अगर घर में डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो स्ट्रेस लेने का टाइम सब हो गया। टाइम तक हो गया है, समय समाप्ति की घोषणा है। बस आखिरी 1 मिनट प्रफुल्ल जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि जो न्यू कमर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप तो गेस्ट कोऑर्डिनेट काम देखते हैं, तो अगर वो किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कम कर सकती है, उनके लिए आपको एडवाइस देंगे? आखिरी 1 मिनट बस। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए चैलेंजिंग चीज है और चैलेंजिंग ही जीवन, अगर चैलेंज नहीं लेंगे तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो मीडिया में आप आए क्यों। और डेडिकेशन सबसे जरूरी है। ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी काम है आपको जो दिया गया है वो अच्छे से करिए और अच्छे से अपना जो भी टारगेट है वो करिए। अब हम लोगों को 2-3 चीज आपने देखा होगा कि आपने मीडिया में था, एक बार एक बच्चे की डेथ हुई थी गुड़गांव में, वहां पे हर एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर जाके लड़ने लगे थे क्योंकि उनको एडिटर इन चीफ बोल रहे थे कि हमें चाहिए तो हमें चाहिए। लेकिन पेशेंस नहीं होता, सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। प्यार से आप बात करके टाइम पे आपको मिल जाता है, तो इसलिए उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। जो काम करेगा उसी को स्ट्रेस होगा, जो नहीं काम करेगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसमें स्ट्रेस की क्या बात। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन पांडे जी, तहसीन मुनव्वर जी और प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत जोर से ताली बजा दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। हाँ, इतना ही जोर से मैं कह रहा था। थैंक यू सो मच।
आप ये प्लीज काइंडली स्टेज पे रुकिए। आई रिक्वेस्ट सैयद कासिम जी, फाउंडर, राजपत भाई, सैयद कासिम, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा ताकि वो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे हमारे गेस्ट को। गिव इट अप फॉर हिम प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और बार जोर से तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, थैंक यू सो मच। एक ग्रुप फोटो भी करेंगे हम लोग अभी। Thank you so much. Give it up for this wonderful panel once again, ladies and gentlemen. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। Quickly, I'll give them some time to get sorted. Ladies and gentlemen, धीरे धीरे it's been a great day so far. The first half has been quite amazing. हमारा lunch भी है कुछ देर बाद, but before that we have a very interesting keynote session as well, and then we move forward to lunch. The keynote is by none other than Mr. Rana Yashwant, who's the editor-in-chief of India News. To tell you all a bit about him, introduction की उनको भी जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा, he is responsible for branded content, brand integration, brand innovation and events along with daily special shows, weekend programs. Sir, इधर ही है, जोर से ताली बजाइए for sir, please. He's ready over here, all energized and charged up. Thank you, sir. आप सबों को मेरा नमस्कार। वो मुनव्वर साहब कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर पढ़ के गए कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इस गजल का आगे एक शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो सच में थोड़ा या ज्यादा अगर मिलावट होती है तो फिर वो झूठ होता है, और एक बड़ा सच है कि हम सब इसी झूठ का पेशेवर धंधा करते हैं। हमको लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी है, और देश को लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। वो कूड़े का भाव है। और कहीं कोई बुनियादी फर्क है। हिंदुस्तान जो सोचता है, हिंदुस्तान जो समझता है, आज की तारीख में देश इस रफ्तार से बदलता चला गया है। टेक्नोलॉजी और सूचना के तमाम जरिए इन्होंने दूर दराज के गांवों और दिल्ली जैसी राजधानी, इनके बीच का फासला लगभग खत्म कर दिया है। जो खबर मुझे और आपको अभी मिलती है वो खबर गांव में बैठे आदमी को मोबाइल पर तुरंत मिलती है। तो वो इसलिए नहीं हमारे आपके पास आता है कि आपने वो खबर उसको दी क्या, वो शायद इसलिए आता है कि उसके आगे खबर आपके पास है क्या। अगर नहीं है तो फिर वो हमसे सवाल करता है, और हम एक पारंपरिक तरीके से बनी बनाई लीड पर चलने के आदी हो गए हैं। तो खतरा शायद कुछ लोगों के लिए भी है कि ये जोखिम टीआरपी का है, ये बाजार का दबाव है, बिना ये जाने कि जो देख रहा है उसको देखने की जरूरत है भी या नहीं। सुमित ने सही कहा कि यहां से 50 मीटर दूर आप जाएंगे तो पानी का बड़ा संकट है, और यह संकट गहराता चला जा रहा है। हमें आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आज की तारीख में हिंदुस्तान को पानी की जो सप्लाई होती है 7 साल बाद 2 गुना जरूरत है उसकी, और पानी लगातार खत्म होता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में गांव है हिवरे बाजार, उस गांव में एक सरपंच है, वो कटराव। हिवरे बाजार अहमदनगर जिले में है। ये हिंदुस्तान का वो जिला है जहां धूल उड़ती है, घर घर में फाका चला करता था।
दरवाजों के ऊपर सलाखें लगने लगी थी, लोग जाने लगे थे घर छोड़ करके, पानी नहीं। उस आदमी ने अपने गांव के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को समेटा, सहेजा और प्लांटेशन का काम शुरू हुआ। खेती जो बहुत पानी मांगती है, जो ट्रेडिशनल खेती होती है धान की, गेहूं की, उसको बंद किया और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जो होता है, जिसमें फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी है, उसको शुरू किया गया। और हिवरे बाजार हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में इकलौता ऐसा गांव है जो सबसे ज्यादा पानी से लबालब है, खुशहाल है और उसका अपना सेल्फ डिपेंडेंट गांव है। खाली होते घरों, आंगनों को फिर से बसा देने की जो ताकत है, वहीं के लोगों के बीच में स्टार तो हमारे लिए पोपट राव जैसे लोग हैं, वो गांव है। हमने अपने नायक नहीं बदले। ये पॉलिटिशियंस जो खड़े होते हैं, जिसके एक बयान को लेकर के हम लगातार दिन भर जो है आपाधापी मचाए रहते हैं, पता नहीं कितने लोग खड़ा कर दो, यहाँ विंडो वहां विंडो, ये नेता, 2 घंटे के बाद उसका क्या सिला है, उस बहस के क्या मायने हैं। लेकिन एक गांव का सरपंच 2200 लोगों की जिंदगी बदलता है। हमारे हीरो वो होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि हमको टीआरपी नहीं मिलती। सुमित ने सही कहा कि मैं अपने चैनल के एवरेज टीआरपी से 70% कम पाता हूं, क्योंकि मैं बुनियादी सवाल लेकर चलता हूं। और देश को बड़े बुनियादी सवालों को लेकर के जो आदमी चलता है गंभीरता से, लोग उसको सुनते नहीं है। मुनव्वर साहब सही कह रहे थे कि आपके पास रिमोट है, आप हमारे संपादक है, अब बदलते क्यों नहीं? आप नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारे ऊपर बदलने के लिए आपका दबाव रहता है। हम आपकी खातिर नहीं कर रहे हैं, इस बात का सवाल आप हमारे ऊपर उठाते हैं, लेकिन आप अपनी जो बेसिक टेम्परामेंट टेस्ट है उससे अलग नहीं होते। इस देश में 135 पावर प्लांट से 135 1.5 मिलियन टन जो कोयला है 40 दिनों के रखा जाता है। और जो हमारी पावर जनरेशन है 70% कोयले से होती है। टोटल पावर जनरेशन का 3/4 कोयला से प्रोड्यूस होता है। कोयला जो ग्लोबल कंडीशन अभी है उसके लिहाज से आपको भी नीचे लाना है। पावर क्राइसिस कैसे? सुबह मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24 के बीच में 20%, 15 से 20% पर एनम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो कोयले का कंजम्पशन बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इंटरनेशनल कमिटमेंट जो हमारा है उसको पूरा करने के लिए हमको कोयले का एक सीमा में उसका इस्तेमाल करना है। तो हम नीचे जाएंगे तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या है? बिहार के जहानाबाद में गांव है धरनाई, कोई नहीं जानता है वो गांव। जहानाबाद में कहता हूं, लक्ष्मणपुर बात है, एक कांड हुआ था, लालू प्रसाद यादव सीएम करते थे। नक्सलियों के लिए बिहार का जो इलाका खून खराबी से लगातार रंगा रहता था, उसी में धरनाई गांव है। और 100 किलोवाट सोलर पावर जनरेशन करके ना सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट है, बल्कि आसपास उसने अपने गांव के भीतर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी लगा रखी। वो गांव हमारा नायक क्यों नहीं हो सकता है? हमारा हीरो क्यों नहीं है? क्योंकि हम हीरो बनाना नहीं चाहते हैं। अगर हम हीरो बनाएंगे तो आप देखना नहीं चाहते। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई सुनामी आ रही हो और आप समंदर के किनारे सरसों कर रहे हैं ये मान करके कि आने में तो 8 घंटे की देरी है, मैं मजा ले लूं। हिंदुस्तान के इंसान की जो बेसिक फितरत है, बुनियादी फितरत होती है, वो मजे लेने की है। बड़े और बुनियादी सवालों पर समझने, बूझने, जिरा करने और कोई रास्ता निकालने का नहीं। 140 करोड़ का देश है ये। मैं बिहार से आता हूं, मेरा एक जिला है सीतामढ़ी, और मैं जितनी चीजें आपसे अभी चर्चा में ले आ रहा हूं ये मेरे शो का हिस्सा रही। 68 घंटे का वाला शुरू होता है रात में 8 से 9 का, और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। 1 घंटे सिर्फ बोलता हूं। मैं प्रोड्यूसर जानता है कि यहाँ विजुअल होगा, यहाँ ग्राफिक्स होगा, यहाँ वाइट होगा, उसी सिलसिले में चलता रहता है।
लेकिन बुनियादी समझ से बहुत साफ होना बहुत जरूरी है। हम दरअसल ऐसी बहस में आ गए हैं जो बहस कहीं नहीं जाती है और कभी खत्म नहीं होती है, चलती रहती है। वो मौत का कुआं होता है, मौत के कुएं में आदमी जितनी तेज से चलता रहता है, उसकी मोटरसाइकिल की आवाज जितनी ऊंची होती है, उसकी रफ्तार जितनी ज्यादा होती है, लोग उतना ही तन के देखते हैं, उनकी सांसें टंगी रहती हैं, उनको लगता है कि यही जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है, वो तमाशा दिखा रहा होता है। हम सब वहां के फंस गए हैं। कुछ बड़े सवाल थे, मैं चूंकि आंदोलन सुन रहा हूं, तो सीतामढ़ी में सुरेंद्र है, सुरेंद्र पढ़े लिखे आदमी है, एमबीए है, 2 बीघे में वो खेती करते हैं। मेरा टाइम हो जाएगा तो बता दीजिए, 2 मिनट पहले खत्म कर दूंगा। 4 कट्ठे में, जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, 4 कट्ठे में परवल अगर बोते हैं 25 से 30 हजार महीने वो कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने खेती साइंटिफिकली की है, पढ़ा लिखा आदमी है। 2 बीघे से 60 से 65 हजार रुपये महीने का वो आदमी अपनी सब्जियां उगा करके कमाता है। सुरेंद्र कुमार हमारे लिए क्यों नहीं है? इस राष्ट्र में आप किसानों का आंदोलन बड़ा खड़ा कर देते हैं, एमएसपी प्रिजर्व होती है, क्रॉप पैटर्न आप बदलेंगे नहीं, धान गेहूं मकई बाजरा ज्वार बोते रहेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है देश को। देश को और दुनिया को जिन फसलों की जरूरत है, जिससे बाजार व्यापार बढ़ सकता है, उनकी खेती क्यों नहीं हो सकती है? दरभंगा में मेरे जानने वाले 2-3 ऐसे दोस्त हैं मेरे, जो दिल्ली और मुंबई में नौकरी करते थे, वो गए और मखाना की खेती करते हैं, साइंटिफिक भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करते हैं। शाम को गाड़ी उठाते हैं, बाजार पर जाते हैं, बढ़िया से चाय पीते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, गांव जाते हैं, और फिर वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीते हैं। ये जिंदगी नसीब हो सकती है अगर सुरेंद्र कुमार जैसे लोगों को भी हम अपना हीरो बनाए, तो हम नहीं बनाते। मैं ये नहीं कहता हूं कि सत्ता से आप अलग होकर के जाएं। किसी भी देश की सत्ता होती है, आखिरी पायदान पर जो आदमी खड़ा है, उसकी नीतियां बनाती है, उन नीतियों का असर या फायदा उस तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, यह देखना मीडिया की जिम्मेदारी है, होना चाहिए। सत्ता के सवाल से बाहर मीडिया नहीं हो सकता है। लेकिन जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को लेकर के आपकी अपनी समझ, अपना नजरिया कहाँ है, यह भी जरूरी है। और जो जनता हमारी दर्शक है, वो कितना स्वीकार करता है, यह भी देखना आदमी। कश्मीर 370 के बाद एक बड़ा मसाइल रहा है कि 2019 के बाद कश्मीर क्या बदला। कश्मीर में जो हालात बदले हैं, जैसे बदले हैं, जिस तरीके से बदले हैं, जितने बदले हैं, उसको हिंदुस्तान नहीं दुनिया को भी दिखाना चाहिए। तो किसी सरकार या हुकूमत की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर फैसले लिए जाते हैं और जमीन पर उनका असर दिखता है, आपकी मंशा बदलाव की दिखती है, फिर उसका जिक्र होना चाहिए। आप नॉर्थ कश्मीर में जो हाईवे बना है, जो उड़ी तक जा रहा है, श्रीनगर से बारामूला उड़ी तक, उड़ी तक ट्रेन का रास्ता जा रहा है, बारामूला में स्टेडियम बन रहा है, साउथ कश्मीर में हाईवे चल रहा है, वहां एक ईंट रखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आज की तारीख में रात भर काम होता है, क्या वो अपने आप में बड़ा बदलाव नहीं है? लेकिन हम नहीं देखते। हमारा सवाल ये नहीं है ना, हमारा सवाल ये है कि यहाँ कोई बहुत ही वाहियात सा आदमी एक बहुत ही वाहियात बयान दे गया है, उस पर हम कितने घंटे तक काट सकते हैं और कितने घंटे गाली गलौज कर सकते हैं। कश्मीर के ऐसे 2 लड़के हैं जो केसर की खेती आज की तारीख में करते हैं। जमीन पर, जिन जमीनों पर कभी कोई खेती कर नहीं रहा था, क्योंकि दहशत का माहौल था। अभी मनोहर भाई कह रहे थे कि 90 to 96, शायद मैं सही कह रहा हूं, तो मैं कश्मीर में था, दहशत था, और मेरे बगल में मिसाइल पड़ी हुई थी। आज तो ऐसा नहीं चलता है, पत्थरबाज नहीं है। हिंदुस्तान में कभी कोई दहशतगर्द नहीं हुआ, घटनाएं नहीं हुई, कश्मीर में हुई, लेकिन पिछले कई वर्षों में नहीं हुई।
कश्मीर में जो बुनियादी बदलाव हो रहा है वो हिंदुस्तान के एक ऐसे फैसले का नतीजा है जिसको दुनिया को भी देखा जाना चाहिए, उसको भी दिखाया जाना चाहिए। और बहुत बदला है। इसलिए जो बदलता हुआ हिंदुस्तान है और बदलते हुए हिंदुस्तान के साथ लोगों की बदलती हुई मानसिकता है, उनके अपने सरोकार हैं, सवाल हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनकी पसंद है। अगर हम उनको नहीं समझते हैं तो वो भी हमें नहीं समझते। हम अपनी डफली बजाएं, वो आएंगे, सुनेंगे। टीवी कोई नहीं देखता है, दुनिया यहां है। उसको जब जरूरत पड़ेगी हमें देखेगा, अच्छा लगेगा तो देखेगा, नहीं तो फिर तमाशा देखने आएगा। मौत के कुएं में थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर चला जाएगा। इसलिए जानना ही जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और मैं जो कह रहा हूं शायद मेरी बात हो सकता है कि उससे वाकिफ आप सब हों और आप इत्तेफाक रखते हो, लेकिन हम लौट करके जाएंगे तो फिर हम वही करेंगे जो हम करते रहे हैं। और हम बदल जाएंगे तो अच्छा होगा। आखिर में वो गालिब कहते हैं ना कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, ये खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। तो हमारे बदलने और आपके मुताबिक चलने की बात मेरे एतबार के लायक नहीं है, फिर भी मैंने अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर के लिए जोर से तालियां प्लीज। एंड सर मतलब इतने खूबसूरत तरीके से आपने एंड किया। आई थिंक वी मस्ट ऑल प्रेज हिम फॉर हिज ब्यूटीफुल वॉइस एज वेल, राइट? इट फ्लोज लाइक हनी। ऐसा लग रहा है, मन करता है कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट मिस्टर जनार्दन पांडे, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, नेट वैल्यू मीडिया, टू काइंडली कम अप ऑन stage and give away the token of appreciation to Rana sir. Give it up for him, please, ladies and gentlemen, and both of them over here. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, the event is going really well and smooth, and it's important that we thank our partners who have supported us right from the word go. So today, our partners, it's very impressively. I think it's important that we support them, and they've been brilliant so far. Our powered by partner, Blue Star associate partner, Vistar News. अब खबरें होंगे विस्तार से, Vistar News आपका अपना चैनल. Can I please request the team to kindly play the intro for all of us? So लगा जानवर. So this is going to be making sure. Why not? फास्ट कूलिंग इन्वर्टर एसी अब गर्मी की छुट्टी। You start fast cooling inverter AC अब गर्मी की छुट्टी।
Director, Vishesh, promoters, and the session is going to be moderated by Mr. Vivek Malhotra, Group CMO and COO, India Today Group. Ladies and gentlemen, the highest intensity of applause for all of them, please, over here. And let's keep the energy alive. The first session after lunch, we need that energy and vibe. Thank you, sir. Over to you. Can you please have the mics open? And can we please request silence in the room? The panel discussion is beginning. So can we please request people over there at the back to kindly settle down and have silence in the room, please? I really don't want to sound like a school principal, but then this is important. Thank you. So indeed a delight to sit amongst all of you, and quite a fantastic, unique year to have. And you know, as it is said that amongst the biggest mass aggregators, cricket and elections are the two big properties that bring masses from across the country together onto one event. And both these events actually stretch over between 40 to 90 days. Now, in this peculiar year, both the elections and IPL are happening side by side. So in such an amazing year, it's just phenomenal to have an eminent panel, starting with the forever young Rajiv Dubey, who consumes only Dabur health products. He used to look like this 20 years back and is amongst the biggest advertisers in the TV industry. Then another very dear friend of mine, Deepali. So while what she does and wields power in the corporate circle, she runs a podcast called Being CEO with Deepali. So I haven't yet qualified, but I'm waiting for that day. Ever since she started as a young professional at Tata Motors, she's just been revving up her engine, and now she's at the helm of the CK Birla Group. So fantastic to have her. Then we have Mr. Khullar. He runs a group of industries and is an avid consumer, and is the only one on the panel who's yet not sent me an arrow. So we're going to try that over the next half an hour. We convince him, and we'd like to know his views about this. And we have Mehraj, who is, I think, amongst the only 4-5 people who've had the unique ability to play both sides of the news spectrum. So he's been a part of the business side, he's been a part of the editorial side. He understands the power on both sides and the challenges on both sides. So, ladies and gentlemen, with this, I promise you an amazing panel. And after this panel, we look forward to a very strong Q&A. So, as I said, I'm going to take this discussion with the power of live content. As all of us know that, you know, there are things that you can wait and watch, or you know, if you missed it, now you can go back and watch. But live content is not like that. You have to watch it when it is unfolding. And therefore, in the advertising fraternity, there's a lot of premium, there's a lot of attention, and it goes beyond reach and frequency into actually delivering impact for an advertiser. So I'm going to push this question on to Rajiv, who's amongst the most intellectual friends and people in the fraternity I know, to sort of give me an idea of how he used to look at news earlier, the journey of news. And now that we become all-time live, we've connected to you through TV, we're also connected to you through apps, we're connected to you through social media. How has that journey changed, and how is the advertiser interpreting this change of journey in news? Hi, everyone. I hope everybody had a good lunch. I still can hear some people eating. Good for you. That moderator is not eating, by the way. He's hungry. So, might finish soon. Yeah. So, moderator Vivek, CEO of Ashtar Group, and we've had a long journey. Like you said, young guy. He's been youngest amongst all of us, and always sending you some information, data, like I think he's a data Nazi, keep sending you data, and
keep flooding with data, industry data, and learn so much from him. It's not the first time he's sitting on a panel like this, like been multiple nights, like with Deepali and with Maharaj as well. Sanat, we are meeting for the first time today. I was just discussing on the sidelines, how is the discovery of news happens to a consumer, right? So if you look back 30 years back, you used to discover news through a newspaper, or say there used to be one news bulletin at 9 o'clock. One used to sit and watch and used to understand and discover what is happening in the country. Versus today, your news is on the go. So you have a pop-up on the screen every second, every minute of the day. If something happens, you don't have to wait for your friends to tell you what has happened. You immediately get to know. So that's the first step of getting the news to a consumer. Then what happens is that thereafter, you want to reaffirm on your bias, reaffirm on your the thing which you have learned. You go back to television, then you start watching news on television, and thereafter, probably you would like to listen to debate at times, and sometimes you don't. You basically then one tries to form an opinion about the whole thing. So where does the brand fit in, and where does say advertising plug fits in? So that's where we come in as an advertiser. We try to be there wherever there is a best opportunity to buy, in the sense that the most number of viewers present. So journey is long. As a news provider, as a news channel, a news provider, one has to look at how does the consumer journey maps up, and where all advertiser can fit in. And for us advertisers, what matters the most is that every rupee I spend should result into some business for us. That's the only thing which matters for an advertiser. Nothing else matters beyond this. In short, that's what I thought I should. No, that's very well articulated, because I think that's where everything starts. I think we're all chasing the consumer, whether as a product or as an advertiser. So that's a great start, Rajiv. Thank you for that start, and I think we'll take it from there. And over to Deepali. I think the journey is the starting point, and therefore, like you have a journey on the consumer side, you obviously have a funnel on the media planning side, and news does come at some stage in the funnel. So what I'd like to understand is, how was it previously, and how does 24 change things, and how do you actually, at what level does news come, and then how do you pick up the ones that you want to invest on? Vivek, first of all, thank you. And I might just start a podcast, which is being COO with Deepali Nair, for your sake. Thank you so much. Okay. On the question of the selection of media, what I want to share is, as an advertiser, and Rajiv would agree with me, it's become far more complex. Because in the good old days, 30 years ago when I started working, it was simple. There were, very few channels. The media fragmentation was not to the level that it is today. And you understood your consumer cohorts extremely well in terms of where they were spending time. And then you actually worked with the media publications, be it print, be it TV, to say, okay, how can we create impact properties apart from the ROI, the day-to-day ROI numbers that we were looking at. Now, that as an advertiser has completely morphed into a completely different game. And let me just paint a picture for all of you. Today, for example, at the group where I work at CK Birla, we are trying to talk to couples who are dealing with infertility on one side. Okay. Then we are dealing with masons and plumbers because we have pipes that we sell in our businesses. How to get these influencers to know about the pipes that we sell, the putty that we sell, the cement that we sell. We're also talking to automotive. We also have a lot of automotive components. We have, India's largest automotive bearing that we sell, which is NBC bearing, which is where, by the way, we find that, the digital news do very, very well. To our surprise, what is interesting and why I'm giving you these pictures is, surprises keep coming to us every 12 to 18 months whenever we kind of look at what's working. 24 months ago, we would have been surprised to say, we would have thought that, look, TV, Aaj Tak and TV news would do very well with this, let's say, the socio-economic class that we're talking about, which is, plumbers, repairers, automotive, component, retailers, and the trade, community.
but we are finding that a lot more of that is actually moving to digital news. So news as a genre is still extremely popular with this set of people, but where they're consuming the news, now whether that is on YouTube News, whether that's on apps, whether that is on links that are getting sent to them on WhatsApp is further fragmentation, that we're kind of, looking at. So one is you may buy into the genre, but which platform do you buy into that genre itself is becoming an issue. And the other thing is this, free to air channel thing. So when you mentioned IPL and news, I think you yourself were saying that that's a major difference, right? The people who are consuming IPL on certain select channels are very different from people who are going to consume TV news, which is free to air. And you may think of only IPL and, TV news as a genre that we need to look at. But in my world, films have become also very important. A lot more fragmentation on the film opportunities that are available to us. I'm not talking about cinema, but I'm talking about, what's happening once again on digital channels and on, TV channels. So the genres may remain the same, but the further fragmentation that has happened on account of the platforms that are available has made our job extremely complex as an advertiser. Now, that's just on the numbers. The number two issue now is, how do I do an innovation? How do I do that impact property? Right? There are not too many, and that's where I expect the media channels to come up with ideas. Just doing so the brand on the laptop, or the inside studio branding, things like those are all now tricks of the trade which have been seen before. What's new, what can be done for a brand which is very meaningful for my brand to become memorable is an area that I find today that I think we struggle. I'll leave it here, Vivek, for a moment. Yeah. So two things. One is fragmentation of platforms, even if we buy into the genres. And second is how do we do impact and innovation? So Dipali just went on to prove what I sort of said about her in the introduction. So you can see how detailed her analysis and control over the subject is. So she's actually put forth two very important points, and therefore they in a way reflect very importantly for publishers and broadcasters like us that is very important to be an omni-channel brand now. So if you're a brand only on one platform, chances are you're going to lose the consumer on any other platform, and therefore the only way to keep him engaged is to be present everywhere. So over to Sanat now. Sanat, you're looking in, you're coming into this fold recently, and you're now looking at expanding your brand and starting to spend on advertising and looking at news as a genre, and therefore it's far more complex than people like us who entered about 20-25 years back. Now there is news like Dipali said, like Rajiv said, where there are different points in the journey. There are different ways. So there are various parameters. Now there is news which is perhaps chosen for another reason. There's a news which is chosen for maybe sake of trust or credibility. And then obviously ROI on digital and ROI on TV and reach numbers are different. So now coming in new and fresh when you look at this genre and also in the year of elections, how are you looking at this whole thing? How is it panning out? Is it perplexing, or have you been able to make sense of this? So talking about the new trends going upon, this is a very important year this year, as you mentioned, that we have the IPL 2, we have the T20 World Cup coming in, we have the general elections, perhaps the biggest festival of democracy. We have pre-state elections coming in. This is, I think, a very important year in the Indian media industry. Talking about revenue, the revenue will definitely increase because the viewerships are increasing day by day, and it will definitely even more increase to get what's happening on ground with the war happening in Russia, Ukraine, and Israel. I mean, I cannot go to Israel and see what's happening, so I will put on your news channel because you have your reporters on ground reporting live from Israel or from Ukraine. Which gives a sense of credibility. And if the viewers go there, I have to definitely go. I have to have my company placed in your channel so that I get the target audience to watch my brand on your channel, and I can gain some visibility from that. Yeah, that makes sense. Yeah. So good luck to you, and we'll obviously help you plan your media. Mehraj, I'll have a little different question for you because you
sort of sat on both sides. Now, when you're actually seeing the Clash of the Titans, which is IPL, and there is election, so there's a little bit, I mean, there is loyalty on the teams you follow in IPL, and there are some new teams which perhaps don't enjoy the kind of loyalty like Chennai or KKR would. Whereas, in contrast, when you look at elections, the decision you're going to make is actually going to decide the quality of your life for the next 5 years. And therefore, on a journalist or on the editorial side of the media business, the pressure is going to be a lot more. And how do you handle that? And what, I mean, to what level would the quality of news, being on the ground, trust, credibility, how do you build that so that you actually stand out in a market that's fragmented, not just across platforms, but also I think within TV you have over 200 channels, you include regional, it's even more. Thank you, Vivek, and thank you, Ephraim, for inviting me and giving me the opportunity to share my thoughts. I think 2024, yes, we all have been looking and waiting for 2024, and I think a lot many among us thought 2024 will actually take away all of our problems, and perhaps we were sort of excited since 2022 to 24 about so many elections, etc. And allow me to speak my mind, Vivek, but I think 2024 is actually not doing the job because 2024 is very predictable, and news is all about being unpredictable. So I think it has taken a bit of an excitement away. And I think 2024 is definitely in that manner going to be a big influential year. And it's going to have influence over all of us of what we think and how we do and how we handle TV news, because it will force us to rethink and reinvent ourselves. Because I think even before revenue, product and perception really play a big role. So advertisers' perspective here and audiences' perception about us as in TV news, I think we've got a lot more to do there. And it doesn't mean that we haven't done enough. I mean, at least for me, TV news has put food on my plate for last 23 or 24 years. And so I have a lot of regard for people, what they've done and what they intend to do. But also we need to sort of, sell the power of news to people who are willing to buy a little bit from us. And for example, let's say I just met Sudhir, and that reminds me of his interview of Prime Minister Modi. And when he's asking about his health, and Prime Minister Modi is talking about what his doctors are telling him and that he's not sleeping enough, the kind of engagement that gives to the audience is not measurable in terms of frequency or reach or something that, typical advertising buyers, or advertisers are actually. Or the Creators Awards that were done recently, the kind of engagement it has created on social media. So I think there's so much more with news media. If only we could talk about it and highlight that fact that, the utility, the emotional utility that it gives to audiences. And of course, all of it has to be beyond politics. So I think 2024 is going to teach us this big lesson that sometimes politics is so predictable. That's the politicians' job. They've done well, and they are probably make the results of 2024 predictable for them. And so now it's news channels or TV news's turn to make it more worth waiting for that 9 o'clock or for 10 o'clock. So I think that's a lot more work needs to be done. And I think perception-wise, advertisers do demand more than just appearance and visibility on TV. And like you just touched upon that fact, and I've been a big, advocate for that fact that people don't even remember now where they watched news. But was it TV or was it digital? I think we, for the sake of accounting or for the sake of team, team building, we say, oh, this is TV, this is digital. I think what we've done in past, let's say if I count last 25 years of very flourishing TV news media, what we've done is we've built great brands. And now these brands have to go further, stretch themselves and find their next orbit. So that's what I think, Vivek. That's a good plug, next orbit. I want to say something here, Vivek. Taking a cue from what Mehraj said. There was a point of time when Hollywood movies were just movies, but then they became huge merchandise and marketing opportunities, to make money for the producers and also to create excitement for people. Sports events that happened. Sports events at one point of time used to be just the news events.
But sports events then became spectacles, and that again happened, in America. In my lifetime, elections at least got a flavor when psephologists come in. I know the term only because of the election analysis that got done. So that was something new that happened to the election news. What Miraj is saying, the way I will also say and make this appeal is that I think somewhere TV news have the opportunity of reinventing how elections are reported, in a completely different format and creating a very different experience, which perhaps can bring the attraction back to TV news. And maybe they do something which is either in the omni-channel version, like you're talking about, or it is something which is uniquely TV and cannot be, replicated on social media. That opportunity exists. What that is, I won't even answer. That's very poignant. And fantastic that Miraj has already pronounced the verdict for 24. And obviously he told me 3 months back that Kejriwal is going to jail because there's nothing uncertain, as he said. So now moving to Rajiv, Dipali gave us a very good sort of glimpse into the future. And in a way, she's not said it in as many words, but what she's saying is 2024 is not going to come back. And if news has to do something, then the time is now. Now we, as news players, we know certain things, but we've sort of not been able to communicate it to advertisers like you, and therefore, to some categories, we're not, so very relevant. So my question to you is, how do we now use the 2024 opportunity to not stop at the election cycle, but make this revenue a little more permanent? So there are things that are permanent here. For example, I will reach to 30% of the HSM, which IPL will not, which is free dish. Pankaj, correct me if I'm wrong. So around 30% in HSM will be free dish. So that is something that is uniquely in news. Then, today, if you go by search volumes, the search volume of keyword Modi is far more than search volume of the keyword Virat Kohli, for example. So there is this, real interest, and also for this time, it's a little more lengthy period. It started on the 16th of March when they were announced, and it's going to finish around 16th of May. So I'm taking another week forward from 4th of June, where the counting day comes in. Now, how do I make it so memorable for you, and how do I create so much value for you that I start enjoying the kind of the premium or the guarantee in a media plan that today, say for example, an IPL does? So first of all, advertisers should continue to advertise, on a genre. So, but you should spend enough money to have the impact felt. So what happens is that if I just look at one event, election, for example, I'll not do justice to a genre like this, like a news genre, which is like roughly about 6% of the total TV universe currently. Last elections, it had reached to a number of about 11%, 2019. 2019 May, it reached about 11%, reached to a level of 21% share during COVID time. That's a different thing because Modi used to come on TV every day, and that time we had measured that if Modi is speaking live on TV, all news channels put together, like all 199 news channels put together, used to generate rating equivalent of 21 in that 5-minute speech, right? So we found that thing very important, and we said, okay, if we dominate 20 news channels, will it give me at least 60 to 70% of the total GRPs which I generated, right? That point in time. We will leverage on that. We kept to leverage it on for time to come. But yes, so what happens is that coming back to election point. So election time is a time when you would like to increase the rates and you want to charge me higher money, right? Which I'm not going to give you, right? My job is not to give you money. So your job is to take money from my pocket, and my job is not to give you money, right? So I won't give you that money. What I'll do is as follows. I give you money over a period of time. I give you money over the period of next 1 year or 2 years or 3 years. So that's what we did last time also. We didn't spend so much money in elections.
But subsequent years, 2020, 2021, 2022, we spent disproportionately higher money on news genre. But not in 1 month, not in one event, but spread over the period of time. Because news kind of thing is slow burn. Like imagine, news is reaching out to just 6% of the universe of TV right now. Whereas cricket is reaching out almost 50% of the universe in that period. Maximum will go to 11%, 12%, right? So it's going to be slow burn. So if I spend say 100 crore rupees on news in 1 month, I'll not get that impact. If I spend that 100 crore rupees spread over a year, my impact will be much more. So if I spend example I'm trying to reach is that if I spend same money on cricket versus news, what happens? So if you spend same amount of money in 1 month, you'll get huge impact. It's good for say startup kind of brands and funded kind of companies. But companies like us, which have to be on TV every day, we are in a repeat order business. We have to reach out to the same consumers again and again, sell the same product. I want to come to you and sell that toothpaste to you every month, right? So I don't want to just sell it in 1 month and say, okay, good, I'm going to come back to you after 2 years now. No, I have to sell it to you every month. So I have to be present on news every month, every day of the year. So it's a slow burn. It'll take a while, but keep advertising. That's what my message will be. The question therefore, Vivek, is back onto the TV news channels to say, how do they utilize the opportunity of the election event to ensure that the 6% starts becoming 8 to 9% consistently? To take the debate further from where Rajiv is talking about. Yeah. Having said that, I just want to make a point here. Not all brands have the kind of threshold budgets which are required to be present in IPL. Okay. Now, the way we're looking at it, because, I have 12 businesses to look after. Some are big, some are small, some have mediocre sized budgets, So where you do not have the thresholds to be present in IPL, we will seriously look at the, TV news and the election as an opportunity, to create an impact. So that opportunity exists. Having said that, I also know that the good deals on election with the TV news are already done, So I know brands who've given you lots of arrows already. Yeah. No, so actually, both of you are, you're experts in your field, and therefore you caught this, you say it and demonstrate it like nobody else. Because when we see it, we also see the same thing that, I also advertise, so I wear two hats, I advertise for my brands. So when you go to say a GC, you keep advertising on that same soap for about, say, 30 days, while you're building frequency, but you're limited to a certain TG. But when it comes to say a news event or a sports event, the longer you spread your campaign, your audience keeps growing. And, collectively for the news broadcasters, the target this year obviously is to reach 100% of the TV audience. So like news can't reach out to 100% audience in a very short period of time. You have to take it over a period of say 6 months to a year. Correct. And also I think while we do that, we also create the spectacles like she spoke about in sports. So I think lately Ram Mandir was one such spectacle which brought the attention back to the genre. And I think we'll have to keep doing more and more. I mean, I talked to a lot of the CMOs. I think what happened on the Ram Mandir one is that I think the brand managers were caught napping. I don't think they got 2 to 3 months to prepare. No, you were there on TV, but nobody actually had a creative relevant to that one. So I really. So what I personally did while I was myself there in Ayodhya a few days before there. So I felt the pulse over there, and we translated the same thing on television. We were like during that time when it was coming live, we had prepared for it 3 months in advance. Because we knew the date and we prepared for it and we were there. So anybody who was watching TV said that, what have you guys done? So you were one of the just planned in advance. No, great. You were, excellent, and kudos to you. You were one of the rare advertisers. But when I speak to a lot of the brand managers, they say that, look, we didn't prepare, we didn't know much earlier, because a lot of them are dependent on the. Before we run on time, Vivek, I also want to highlight how people, a large part of population has also been exposed to digital for long enough. And so now a lot of people recognize the hierarchy of trust that we say, print and TV and then social media. And I think a lot of people are going to come back to TV news for the credibility or the respect it can command.
So that also, I think we're going to see in next few months or weeks happening. I hope Rajiv and Deepali agree on that. Maybe. So many audiences after being immersed to digital and now coming back to TV to get that to see the credible and respectable content there back on TV. But what's happening is that digital is becoming very mass now. And TV, says certain section of TV news is becoming very elite. So what I see is that, where an anchor can come and talk to the audience on one basis. Like, so there are like some examples, like there's one show by Sushant on Times Now Bharat, Sudhir's show on Aaj Tak. Then, there are some shows which are in digital media, like there's a channel called Mullen TV, but you might have heard about it, right? Yeah, and something like that. So people are invested into that thing, right? So if so, it's still I mean, good old days when NDTV used to run channels and like every anchor was a superstar, a star. So we need to create such kind of anchors who could come and talk to the audience and relate to them. So that kind of thing will work always. That's why people will come back to news, and news becomes more premium genre to be on. So I think, Vivek, it's not about aping what has happened earlier. I mean, I missed the Prannoy Roy and Dorav Sapariwala's, election analysis. It's not that I want that back, right? It is that I think the news channels need to find something innovative and as large as that to replace my nostalgia, which this younger generation will get caught on to, which gives us the numbers and the confidence to say, okay, there's something different happening, on TV news. I think that is important. I would also like to add that media should now act as a bridge. I mean, what is happening on the ground to relate to the people in power, especially for the election, to show what is happening on the ground, because you have the pan India in YouTube or all OTT platforms, and YouTube is doing 1 second to time. And if I'm on 4 June, if I have to see the election results, I will open YouTube and see what top anchors are saying, because there's some credibility. And the problem of fake news, that there can be fake news on YouTube and all. But on the credible channels like NDTV, ABP, there is no chance of having fake news or any wrong news. You might not report that news, but if you report that news, there is a guarantee that news will be 100% accurate. So I believe a consumer will definitely come back to your channel or the news channel to see that news, to at least confirm that okay, this is actually happening. This is not a real. That's very, very well said. In fact, we run out of time. One of the reasons I sort of chose to be a moderator here was that it will be less pressure. But as I told you, it's an amazing panel, and they've ensured that towards the end of this, the onus lies back onto the news broadcaster to make ourselves relevant and transform ourselves into bigger properties, into more ways of hooking audiences for longer, and to actually build our brands in this really important time of elections, and to stand out as sort of flag bearers for what is fact checked and what is not. So thank you, ladies and gentlemen, and most good looking people on this panel, including me. And the time's up. So if there is any Q&A, Merad would like to take it, because he seems to be sort of knowing everything well in advance. Nothing seems to be uncertain. Can we not give him a mic? Pass him a mic. You have a question, right? Yeah. Rajiv, you made a very good point on the 21 TV hours of the Prime Minister's speech. No, it's bang on. Yeah. But the reason it's less of a question, it's more of a comment and a question as well, because this reminds me of a conversation that Vivek and I were having during the last big season of cricket, where the sum total, I don't recall the exact digital numbers, but the sum total of the top 5 channels concurrent views were almost 90% of what cricket would deliver. It was last year. I don't remember the exact event, and we did an article story as well on that. But what that really says is cricket sells at about 10, 15, 20, 30 lakhs effective rates, whereas news, the sum total of those 5 top channels, would be a fraction of that. Yeah. So if you're looking at frequency building, I think it's a fantastic opportunity that you have. And brands like Babu, CK Birla as well, right? The advertisers here.
So news is a fantastic opportunity, right? No doubt about it. I mentioned it. We've given an arrow, but it's on digital news, not on TV news, you know. Yeah. There's no doubt in my mind, at least, Rajiv can speak. No doubt. Yeah, that news as a genre exists and works. I think it's also, like I said very clearly, there are very few brands in the country who have the kind of threshold monies to invest in IPL, to be, noticed over there. You don't have large advertisers. For them, news is a very good genre to be in. So it works in two ways, basically. One is that, you slow down the, like you keep advertising throughout the year, multiple channels, not be only in one channel because, news ratings can happen from anywhere. And the second is look at these opportunities when, there's a spike in the viewership, which is like Ranjan movie event, or say somebody significant coming and talking about on TV. Like, say, suppose there was one free speech given by one great leader in the country, he'll probably come and garner a lot of ratings, So provide an opportunity, and it should be live across all the channels, because what happens is one leader comes, says something somewhere else, and that somebody else interprets it in a different way. If the same guy is saying across different channels, might have a different impact. So those kind of opportunities are always welcome, and one should go behind them. And it's always well known in advance, because what happens is that as an advertiser, we were told that so-so's things going to happen in the next 2 hours. And 2 hours is a good enough time to put something on air, if you want to advertise. Yeah, actually, sorry, before Mehraj comes, that also builds a very strong case for you, Vivek, for at least the 5-6 big guys in the news broadcast to come up with some kind of a deal for advertising where you can actually offset a huge amount of ticket revenues towards news, because you deliver almost 90-95%. Correct. Right? And Pankaj, that this comes from you makes it even more relevant, because I think a lot of people in the audience don't know that Pankaj today, actually, his company Chrome has the only unified measurement panel. They're the only ones who run a unified measurement panel where they get the TV data, they get the digital data, they can actually remove the duplication and look at an incremental reach of what digital is giving over TV and TV is giving over digital. And also, secondly, he's the only one who's already ISEC enabled, which is a new classification which Rajiv, along with me, and we all, sort of launched. So, thanks, Pankaj. I think that's a very relevant point that I'm going to take back with me. Quickly, Vivek, Just one thing before you come in, because it's very important. I come from the news background. So while he's going to buy multiple channels, I'm going to start using multiple toothpastes. Yeah, over to you. See, one thing I cannot sort of be on stage and not speak about, right from Pankaj to Rajiv and Dipali, I am not willing to accept news as a low price medium. I mean, whatever the history, whatever the pricing so far, that's a step furtherly treatment to news. Because, we were just talking about the, same amount will buy you more frequency on news, but I think news still connects with the elite of this country so well, the masses. That's a medium that connects with heart of people and minds of people. And yes, there's so much, it's just my view. सस्ता नहीं, cost per view महंगा ही है. All right, I was saying that, there's a perception. I don't think that TV news has got its due in this market or in this country. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Please give it up for this wonderful panel. Really enlightening. Thank you so much. I'll request you all to kindly wait. And I'll invite Savita Raj, film producer of Khosla Ka Ghosla, and Jhul to kindly come up on stage and give them a token of appreciation to each one of them. Give it up for Savita Raj, please, ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen, photo moment indeed calls for appreciation. आप लोग ताली प्लीज जोर से बजाइए once again. Great discussion indeed. Thank you so much to all of you. I'll quickly request the team over there to kindly clear. All right, interesting panel discussion full of insights, full of knowledge from the industry stalwarts themselves. Now it's time for a very, very, very special keynote, something that you all have been waiting for quite a long time. We're all set to get going very soon. Ladies and gentlemen, it's time for a very interesting keynote session, something that you all have been waiting for quite a long time. An industry stalwart himself, the master himself, a man who knows it all in the true sense of the term with his vast experience. And officially, I declare the keynote over here. We have a very special keynote by the one and only Sudhir Chaudhary, consulting editor. Please. He truly needs no introduction, but as we all know, he's the consulting editor at the Hindi news channel Aaj Tak and holds the show Black and White. He started his career in Z News and then worked with Live India and MI Marathi before joining Z News again. Sir, it's a pleasure and privilege to have you over here. Over to you, sir. Thank you. Can you please have some silence in the room? Give it up for Sudhir sir once again, please, ladies and gentlemen. नमस्ते। खाना खाने के बाद अक्सर बहुत नींद आती है, तो ये सेशन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप सोने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सोने ना दूं। तो देखिए, आजकल किसी भी सार्वजनिक मंच पर बोलना, बात करना खतरे से खाली नहीं, और सच बात कहना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस ये जोखिम उठाते हुए कि हो सकता है कि यहां से निकलने के बाद ट्रोलिंग शुरू हो जाए और बहुत सारी चीजें सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन हम बात कर रहे थे, जो मुझे बताया गया कि ट्रस्ट, विश्वास, विश्वसनीयता, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब भी हम मीडिया की बात करते हैं तो विश्वसनीयता और ट्रस्ट का नाम अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हम जहां हैं वहां दर्शकों के ट्रस्ट और विश्वास की वजह से ही होते हैं। दर्शक हमारे ऊपर विश्वास करता है, इसलिए हमारी बात सुनता है। इकोनॉमिक्स में एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और वो लॉ ये कहता है कि अगर आप एक क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या लगातार आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार गिरती चली जाती है। और मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट के मामले में और मीडिया के मामले में भी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू हो रहा है। दर्शक लोग अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो रिटर्न शायद नहीं मिल रहा है। और ये लॉ मुझे ऐसा लगता है कि वहां लागू होता है। मान लीजिए आज आप बहुत बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं और आपको रातों रात सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो आप एक ऐसे डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं जिससे शायद आप मिले भी नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर के सामने आप लेट जाते हैं और वो सर्जरी करता है आपकी। कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा ट्रस्ट है। इसी तरीके से अगर आप किसी कानूनी मामले में फंस जाएं और आपको रातों रात एक वकील की आवश्यकता पड़े, तो आप एक बिल्कुल अनजान वकील जिसे आप जानते भी नहीं है उसे अपनी जिंदगी सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आप ये उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वो आपको बचाने के लिए सही फैसला लेगा। शायद मीडिया के ऊपर भी लोग ऐसा ही विश्वास करते थे, या हो सकता है अभी भी करते हों। लेकिन जब आप बच जाते हैं, देखिए, जिस डॉक्टर के ऊपर आप बार बार डॉक्टर साहब कहकर पूरा विश्वास रखते हैं कि एक बार मेरी जान बच जाए,
और वो सर्जरी करके आपकी जान बचा भी लेता है, और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो समय शुरू होता है, आपकी सर्जरी हो गई, डॉक्टर ने आपको कहा कि आप 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप 2 महीने में नहीं 4 महीने में ठीक हुए, अलग अलग कारणों की वजह से, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि उस डॉक्टर के ऊपर आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगता है, थोड़ा कम होने लगता है, आपको शक होने लगता है कि कहीं ये डॉक्टर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। इसी तरीके से अगर आपको रातों रात बेल चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो आप उस वकील पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन अगर बेल ना मिले उसके तमाम कोशिशों के बाद भी, तो आपको अपने वकील पर शक होता है। कई बार आप अपना डॉक्टर बदलते हैं, कई बार आप अपना वकील बदल लेते हैं, और कई बार आप अपना पत्रकार भी बदल लेते हैं उसी तरीके से। तो मैं इसका कोई बुरा नहीं मानता। ये शायद जैसे मैंने ये कहा, ये एक लॉ है और ये प्रैक्टिस में आएगा क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं। कभी कभी मैं अपने आप से ये पूछता हूं कि हम लोग मीडिया में क्यों, मैं मीडिया में क्यों हूं, क्या कर रहा हूं मैं मीडिया में। कोई मुझसे सवाल पूछे कि आप मीडिया में क्यों आए हैं, क्या जवाब होना चाहिए। जब नेता से लोग पूछते हैं आप राजनीति में क्यों हैं, तो तमाम नेता कहते हैं कि मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूं, गरीबों का, शोषित का जो वर्ग है उसकी सेवा करने के लिए आया हूं, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर आप किसी एक्टर से पूछेंगे तो वो कहेगा मैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए आया हूं, मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूं। कॉमेडियन से पूछेंगे तो कहेगा कि आजकल लोग कितने परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, मैं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, कितना बड़ा काम कर रहा है। वो ये नहीं बताएंगे आपको कि मैं पैसा कमाने के लिए आया हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। इसी तरीके से अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन से, किसी खिलाड़ी से पूछेंगे तो वो क्या कहता है, सारे खिलाड़ी यही कहते हैं कि मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। तो हम लोग जो मीडिया में, हम क्या करना चाहते हैं? बड़ा सवाल यह है कि हम मीडिया कर्मी हैं या हम पत्रकार हैं। अगर जिस दिन हमने इस सवाल का जवाब अपने लिए ढूंढ लिया कि मैं एक मीडिया कर्मी हूं, मैं एक मीडिया संस्थान में नौकरी करता हूं, जैसे आप लोग कहीं भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूं, और या मैं एक पत्रकार हूं, और पत्रकार भी मैं एक खास वजह से बना हूं और मैं कुछ करना चाहता हूं। तो अगर एक पत्रकार जब किसी से ये कहता है कि मैं भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो आप नेता की बात पर तो विश्वास कर लेते हैं, आप एक्टर की बात पर भी विश्वास कर लेते हैं। कपिल शर्मा से अगर आप इंटरव्यू करेंगे उसकी बात पर भी विश्वास कर लेंगे कि मैं करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। पर अगर कोई पत्रकार आपसे ये कहे तो शायद उसकी बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे। ये बात मुझे कई बार बहुत चुभती भी है, मुझे खराब भी लगती है, क्योंकि पत्रकार भी हैं हमारे देश में और वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब समस्या क्या है? अभी हाल ही में पिछले हफ्ते आपने देखा होगा 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि जुडिशरी पर अचानक से दबाव डालने की कोशिश हो रही है और एक वर्ग है जो ऐसा कर रहा है। अगर आप पिछले 10-15 वर्ष देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमला हुआ है, सबसे ज्यादा जो विश्वास को चोट पहुंची है, वो एक तो मीडिया पर और दूसरा न्यायपालिका पर। अगर न्यायपालिका पर आपको आपके पसंद का फैसला ना मिले तो सबसे पहले आप कहते हैं जज बिका हुआ है, अदालत बिक गई। और मीडिया अगर आपकी मनपसंद बात ना कहे तो आप कहते हैं कि ये बिका हुआ पत्रकार है। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस मुझे ऐसा लगता है एज अ होल जिस पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ है, जिसकी सबसे ज्यादा बदनामी करने की कोशिश हुई है। अब देखिए, जब आप कोर्ट की बदनामी करते हैं, कोर्ट के बारे में कुछ कहते हैं, तो उनके पास तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपको सीधे अंदर जेल में डाल सकते हैं। पर मीडिया के पास तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी अधिकार नहीं है। हमारे बारे में कोई कुछ कहता है, कुछ भी कह सकता है, पर आपके पास आप क्या जवाब देंगे? ये एक चुनौती है। और बात यह है कि सच की बात तो हम करते हैं, लेकिन सबका सच अलग अलग है। अगर इस कमरे में 500 लोग बैठे हुए हैं तो 500 अलग अलग तरह के सच यहां पर बैठे हुए हैं। 500 अलग अलग तरह की परिभाषाएं एक ही चीज की यहां बैठी हुई। इस समय मैं आपको कहूं कि भारत की स्थिति को परिभाषित कीजिए तो 500 अलग अलग परिभाषाएं आएंगी। भारत को डिफाइन कीजिए तो 500 अलग अलग सत्य इस कमरे से निकलेंगे और हर व्यक्ति को यह लगेगा कि मेरा वाला सच सही है और दूसरे का सच गलत है। शायद कुछ समय पहले तक हम अपना सच भी बताते थे और दूसरे के सच को भी सम्मान देते थे।
अभी हम सिर्फ अपना सच सुनना चाहते हैं और अपना सच बताना चाहते हैं, और अगर किसी और ने हमारे सामने अपना सच बताया तो फिर हम एक शब्द होता है कि बिका हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा एक शब्द आजकल बड़ा चलन में है, गोदी मीडिया। जैसे ही आपने सामने वाले के हिसाब से अपनी टिप्पणी, अपना फैसला नहीं सुनाया, वो आपको तुरंत गोदी मीडिया कह देगा। आजादी से पहले जो मीडिया था, जब राजा हुआ करते थे, तो मीडिया के उस रूप को आप कह सकते हैं कि मीडिया राजा के दरबार में हुआ करता था। जो भी जानकारी निकलती थी राजा के दरबार से निकलती थी, और राजा अपने पत्रकार रखते थे, राजा डिक्टेशन देता था और दरबार में जो आदमी होता था वो लिखता था। उसके बाद अंग्रेज आए और मीडिया का दूसरा रूप हमने देखा, उसका मकसद था आजादी हासिल करना। महात्मा गांधी खुद कई तरह के अखबार चलाते थे, तो मीडिया का एक मकसद था आजादी तक। आजादी के बाद सब कुछ बदला, मीडिया भी बदला। अब देखिए आजादी के बाद क्या बदलाव आया। ये जो जानकारी है, या आजादी से पहले हम कहते थे कि मीडिया एक अवेयरनेस पैदा कर रहा है, मीडिया लोगों को जगा रहा है, मीडिया लोगों को इकट्ठा कर रहा है ताकि लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकें। ये जो जानकारी है, अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है, ये एक प्रोडक्ट बन गई जो बाजार में बिकने लगी। और ये जो उद्योग है, ये उद्योगपतियों के हाथ में चला गया, तो मीडिया की फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई। इसलिए आप देखेंगे कि उस दौर में जितने भी अखबार थे ज्यादातर सब उद्योगपतियों के थे, और उद्योगपति उसे एक फैक्ट्री की तरह चलाते थे। समाज में अगर आप बदलाव देखेंगे 50 के और 60 के दशक में, जब आप हिंदी फिल्मों को मैं बहुत फॉलो करता हूं, क्योंकि हिंदी फिल्मों से आपको एकदम समाज का सही बदलाव पता चलता है। और जो हिंदी फिल्मों का डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर, अगर आप कुछ भी समझना चाहते हैं, आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, फिल्मों को देखिए, हिंदी क्या किसी भी फिल्म को देख लीजिए जो भारत में बन रही है। प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि वो उस बदलाव को दिखाने के लिए उस कहानी पर अपना पैसा लगाता है और गलत चीज पर पैसा नहीं लगाएगा। और राइटर और डायरेक्टर इसलिए क्योंकि वो अपने अनुभव के साथ उसे आपके सामने पेश करते हैं। तो 50 और 60 के दशक में आपने देखा होगा कि जो विलेन हुआ करता था फिल्मों में, वो जमींदार होता था, और जो हीरो होता था वो एक गरीब किसान होता था जो कर्जे में दबा हुआ है। फिर 70 के दशक में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जो खलनायक था फिल्मों में वो फैक्ट्री का मालिक हो गया, जो सफेद सूट और सफेद जूते पहन के आता था, सेठ जी। और जो नायक होता था वो फैक्ट्री का एक गरीब मजदूर होता था। तो मजदूर और फैक्ट्री के मालिक की लड़ाई हमने देखी। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर फिल्मों में जो खलनायक थे नेता बने, पुलिस बने। एक डाकुओं का समय आया था जब डाकू खलनायक हुआ करता था, और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन खलनायक बनने लगे। वो भी एक हमारे देश में दौर आया, क्योंकि समाज में वो सारे बदलाव हो रहे थे। फिर आपने देखा होगा अमीर और गरीब के बीच की खाई। और फिल्मों के नाम भी अगर आप देखेंगे तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये फिल्म का नाम था। एक फिल्म का नाम था रोटी, जिससे आपको पता चलता है कि मैं किस तरह के समाज में जी रहा हूं और लोग क्या चाहते हैं और आप कहां से आगे बढ़ रहे हैं। अभी रोटी, कपड़ा और मकान का समय चला गया, क्योंकि लोगों का पेट भरा हुआ है। रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया। अब जब ये सब मिलने के बाद फिर दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो तभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये एक्ट में आता है, क्योंकि अब आपकी जरूरतें बदल चुकी हैं। अब अगली चुनौती है कि जब ये सब हो रहा है तो मीडिया को डिफेंड कौन करेगा, कौन करेगा हमारा बचाव। ये चुनौती डॉक्टरों के सामने नहीं है, वकीलों के सामने भी नहीं है, और किसी प्रोफेशन के सामने नहीं है, सीए के सामने नहीं है, इंजीनियर के सामने नहीं है, किसी के सामने नहीं है, मीडिया के सामने है। और मीडिया के लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। सरकार मीडिया को कभी डिफेंड नहीं करेगी। किसी भी सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है कि मीडिया पर हमले होते रहें और मीडिया विभाजित रहे। जनता क्या आपके बचाव में आएगी? नहीं आएगी। मीडिया का बचाव या फिर कोर्ट आपको बचाएगा। शायद कोर्ट थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोशिश करता है मीडिया को बचाने के लिए, क्योंकि जब नेता आपको घसीटते हैं किसी कानूनी लड़ाई में, तो कई बार अदालत से आपको एक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अदालत रोज रोज आपके लिए खड़ी नहीं हो सकती।
तो मीडिया को बचाने का पहला जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो मुझे लगता है कि मीडिया की ही है, हम लोगों की है। पर हम क्या ऐसा करना चाहते हैं? मीडिया तो बढ़ चुका है। आज हमारे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सैकड़ों में होंगी, हजारों में भी हो सकती हैं, जितनी विचारधाराएं हैं, उतने ही टुकड़े मीडिया के हैं। आपको ऐसा लगता है कि मीडिया में भी पार्टियां चल रही हैं, मीडिया में भी उतने ही विचारधारा के अलग अलग लोग चल रहे हैं, और विचारधारा होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उस विचारधारा के आधार पर एक दूसरे पर हमले कर देना, उस मीडिया को काट देना, दूसरे वर्ग का अपमान करना, उसके बारे में उसे कमजोर करना, यह मीडिया में हो रहा है। और जिसको मीडिया में जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, स्तंभ हैं, कोई भी उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो आज जो मैं एक नई बात आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि मीडिया के लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी, मीडिया की विश्वसनीयता वो कैसे वापस ला सकते हैं। और अगर मीडिया में ही अपने को लेकर विश्वास नहीं है तो फिर दूसरा क्यों करेगा? और आज मैं मीडिया में पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन देखता हूं। मीडिया में भी राजनीति, असली राजनीति से ज्यादा राजनीति मीडिया में है, और उसका आप अंजाम आज मीडिया के लोग भुगत रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर यह भी हो सकता है कि अब लोगों के पास एक विकल्प आ गया है, और वो विकल्प है सोशल मीडिया का। आज से 10-15 साल पहले किसी भी अखबार और चैनल का जो एडिटर था वो तय करता था कि स्क्रीन पर क्या जाएगा, यानी वो पूरे कंटेंट को कंट्रोल करता था। और सरकार ने अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल हो गया। आपने 10-15 देश के लोगों को कंट्रोल कर लिया तो पूरा कंटेंट कंट्रोल हो गया। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद से अब कोई खबर ना तो दब सकती है ना रुक सकती है। ये एक अच्छी बात भी है और खराब बात भी है। अच्छी बात यह कि कंटेंट आजाद हो गया। अब कंटेंट किसी कमरे में बंद नहीं है, और कंटेंट को किसी कमरे में बंद करके किसी संपादक ने ताला नहीं लगा के रखा हुआ, या संपादक भी छोड़ दीजिए, जो मालिक है चैनल का, अखबार का, उद्योगपति, अब वो कमरे में कंटेंट को बंद करके ताला नहीं लगा सकता और बाहर चौकीदार के तौर पर संपादक को बैठा नहीं सकता कि इसकी रखवाली करो कि ये बाहर निकल ना जाए कहीं। अब ऐसा नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजादी बिना रेगुलेशन के, बिना नियमों के, वो ऐसी ही होगी जैसे आप ट्रैफिक रूल्स के बिना किसी को भी चलने के लिए सड़क पर कह देंगे। तो अब जो वेरीफाइड खबर है, जो वेरीफाइड जानकारी है, उसके लिए तो लोग आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, और राय देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए, या फिर जो वो सुनना चाहते हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया से रह गया वो जानने के लिए वो आते हैं सोशल मीडिया के पास, डिजिटल मीडिया के पास, यूट्यूब के पास आते हैं। अब फर्क यह है कि जब आप न्यूज चैनल में काम करते हैं या किसी अखबार में काम करते हैं तो आप नियमों से और ब्रॉडकास्ट कोड से बंधे हुए हैं। लेकिन जब आप यूट्यूब पर काम करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो आप किसी नियम से बंधे हुए नहीं हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये अच्छा भी है, खराब भी है। मैं और ज्यादा हार्ड और ज्यादा अग्रेसिव ओपिनियन जानना चाहता हूं जो मुझे नहीं मिल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो मैं सोशल मीडिया पर आता हूं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आए, मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे पत्रकार अब यूट्यूब पर आए हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने देश की जनता को एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव दिया है जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दे पा रहा था। अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसका कारण फंडिंग भी हो सकता है, उसका कारण रेगुलेशन भी हो सकता है, उसका कारण राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, उसका कारण आपके अपने चैनल के मालिक का दबाव भी हो सकता है, उसका कारण आपकी अपनी विचारधारा भी हो सकता है। अलग अलग कारण है, लेकिन एक स्पेस था जो खाली छूट गया था, और उस स्पेस को आज जो आपको डिजिटल मीडिया पर जो पत्रकार दिखाई देते हैं वो उस स्पेस को भरते हैं। लेकिन सभी लोग नहीं, कुछ लोग भर रहे हैं उसको, जो आज भी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जो आज भी एक संयम रखते हैं। बिना रेगुलेशन के भी उनका एक नैतिक रेगुलेशन है अपने ऊपर। तो नैतिक रेगुलेशन बहुत जरूरी है कि आप उस रेगुलेशन को बिना किसी नियम के मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे
सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया है, लांघ दिया है, और उनका जो मॉडल है वो यही है कि वो जितना लक्ष्मण रेखा से आगे जाएंगे उनकी व्यूअरशिप, उनका वायरल होने का चांस उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो अगर डॉक्टर के लिए लाइसेंस जरूरी है, वकील के लिए, यहां तक कि एक ड्राइवर के लिए भी लाइसेंस जरूरी है गाड़ी चलाने के लिए, तो एक ब्रॉडकास्टर के लिए भी लाइसेंस जरूरी होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसे सरकार के साथ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी को भी नियंत्रण दीजिए, किसी भी संस्था को दीजिए, लेकिन नियंत्रण तो जरूरी है, नियम तो जरूरी है। और आज अगर आप YouTube पर कुछ वीडियो डालते हैं, वो छोड़ दीजिए, अगर आप व्हाट्सएप पर भी एक वीडियो किसी को फॉरवर्ड करते हैं और आपके साथ व्हाट्सएप पर 500 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी एक ब्रॉडकास्टर हैं। मैं भी एक ब्रॉडकास्टर हूं क्योंकि मैं आज तक पर एक शो करता हूं। आप व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्टर हैं क्योंकि आपके पास भी 500,000 दर्शक हैं और आप भी एक क्षमता रखते हैं कि किसी संदेश को वायरल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर भी कोई ना कोई रेगुलेशन तो लागू करना पड़ेगा। या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ही ये तय करे कि क्या रेगुलेशन होगा, लेकिन कुछ हमको करना पड़ेगा। अगला पॉइंट मेरा यह है कि क्या यह ठीक हो सकता है? मुझे लगता है कि अब हम बहुत आगे आ गए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। और वो इसलिए क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका पूरा रेवेन्यू मॉडल वो या तो एडवर्टाइजर्स के ऊपर है, या इलेक्शन के ऊपर है, या राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये जब व्यूअरशिप लेती हैं तो उस व्यूअरशिप को बेचती हैं। किसको बेचती हैं? एडवर्टाइजर्स को बेचती हैं। और एडवर्टाइजर उनसे इस व्यूअरशिप को खरीदते हैं, यानी हमारा जो दर्शक है उसका सौदा होता है। ट्रांसफरेबल वोट है, मैंने पहले वोट इधर लिया और फिर मैंने उसको आगे पास ऑन कर दिया। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो दर्शक है, वो पैसा नहीं देना चाहता, उसको मुफ्त का कंटेंट चाहिए। नटशेल में हमारा जो कंज्यूमर है उसको भी स्टेक होल्डर बनना पड़ेगा इस पूरे खेल में। जब तक हमारे देश की जनता खुद स्टेक होल्डर नहीं बनना चाहती और उसको मुफ्त का ही सामान चाहिए, तब तक अब इस सिस्टम को ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा। और जैसे लोग कहते हैं कि इफ समथिंग इज फ्री फॉर यू देन यू आर द प्रोडक्ट, हमारे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो खुद प्रोडक्ट बन गए हैं। और आजकल जो फैक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं, फैक्ट्स होते तो हैं, लेकिन अगर किसी फैक्ट को बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना उसकी पृष्ठभूमि के आपके सामने रखा जाए तो तस्वीर अधूरी रहती है। जैसे आप सब लोग पार्टीज में अलग अलग जगह बात करते होंगे कि यार क्या जमाना था जब दूरदर्शन आया करता था। दूरदर्शन पर बहुत सारे लोग आजकल व्हाट्सएप पे दूरदर्शन की पुरानी क्लिप्स भेजते हैं, कितनी बढ़िया न्यूज आया करती थी। अब वो जमाना कहां चला गया? पर आप खुद सोच के देखिए कि दूरदर्शन तो पहले दिन से ही सरकार के कंट्रोल में था। दूरदर्शन कब आजाद हुआ? हर बार दूरदर्शन सरकार के कंट्रोल में ही रहा है। मुझे याद है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उसका नाम लोग मजाक में राजीव दर्शन रख दिया करते थे, क्योंकि सारे दिन उनकी खबरें चलती थी। पर आज जो लोग ये बात करते हैं वो उस जमाने को भूल चुके हैं। तो क्रांति की बात करना, आजादी की बात करना, रेवोल्यूशन की बात करना है तो बड़ा आसान, ये बड़ा एक रोमांटिक शब्द है। लेकिन अगर आप देखो अरब देशों में जो अरब स्प्रिंग हुआ उसका क्या नतीजा हुआ, वैसा भारत में भी हो सकता है और खासतौर पर मीडिया में भी हो सकता है। एक सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा संस्थान, अगर जर्नलिस्ट लेड संस्थान हमारे देश में आ जाएं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इफ दे आर लेड बाय जर्नलिस्ट्स, इफ दे आर ओन्ड बाय जर्नलिस्ट्स, तो एक बदलाव आ सकता है। तो मैं यहां कोई किसी विचारधारा को की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मैं एक सुझाव लेकर आया हूं। एक सुझाव यह हो सकता है कि दर्शक चाहे 5 पैसा ही सही, लेकिन कंटेंट के लिए पैसा देना शुरू करें। दूसरा यह हो सकता है कि हम कुछ ऐसी स्थिति पैदा करें कि हमारे जो अच्छे टैलेंटेड पत्रकार हैं उनको हम मौका दें, और हमारे देश में ये जो मीडिया है ये उद्योगपतियों से बाहर निकलकर ये पत्रकारों के हाथ में आए। और उसके लिए हमें पूरे इकोसिस्टम में उनकी मदद करनी पड़ेगी। जैसे आजकल देखिए सरकार स्टार्टअप्स की कितनी मदद कर रही है, कर ही रही है। मीडिया में भी अगर ऐसे स्टार्टअप्स आए और हम उनको एनकरेज करें, दर्शक भी उनको एनकरेज करें,
सरकार, हमारे इकोसिस्टम, हमारे उद्योगपति, विज्ञापन देने वाले लोग, वो उनको मदद करें खड़ा होने के लिए, तो शायद हम एक बहुत अच्छा विकल्प मेरे ख्याल से बना सकते हैं। अब आप सब लोग मुझसे ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाव में मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे बताया गया, बहुत सारे लोग बोल के गए हैं चुनाव की कवरेज कैसी होनी चाहिए। और ये जो गोदी मीडिया का जो टैग है, अगर आप कह दें कि बीजेपी जीत रही है तो आप गोदी मीडिया, उसी वक्त आपको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा। पर बड़ी बात यह है कि हम विपक्ष नहीं है। मैं विपक्ष की तरफ से नहीं कह सकता। विपक्ष जब तक मेहनत नहीं करेगा, विपक्ष जब तक जीतेगा नहीं, तब तक कोई भी पत्रकार, तब तक मैं भी कैसे विपक्ष का साथ दूं? ये काम तो विपक्ष को खुद करना पड़ेगा। अब विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के नेता खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, नया सोच नहीं रहे हैं, और मीडिया से उम्मीद करते हैं कि वो सब उनको मदद करे, उनको उतना ही वेटेज दे जितना कि सरकार को दिया जा रहा है। एक 300 लोकसभा सीटों की पार्टी है, और एक 30 लोकसभा सीटों की पार्टी है, और एक 3 लोकसभा सीटों की पार्टी है। क्या उनका बराबर वेटेज होना चाहिए? कैसे हो सकता है? बट आज भी अगर आप देखेंगे तो मीडिया में आपको ये असमानता दिखाई देगी। उदाहरण के तौर पर अरविंद केजरीवाल, एक लोकसभा सीट है, लेकिन उनको जो मीडिया में कवरेज मिलता है वो शायद 400 लोकसभा सीट वाली पार्टी वाला कवरेज मिलता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। शरद पवार है, छोटी पार्टी है, बहुत कम लोकसभा सीट है, कवरेज जब मिलता है तो उतना ही मिलता है जितना किसी बहुत बड़ी राष्ट्रीय 100-200 सीटों वाली पार्टी का कवरेज मिलता होगा। वेटेज है उनका। तो ये कहना गलत है। और अगर इसमें सच्चाई होती तो कांग्रेस आज 50 सीटों वाली पार्टी है, उसको वेटेज भी, उसको एयर टाइम भी वैसे ही उसी हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन आज 50 सीटों की पार्टी को भी 250-300 लोकसभा सीटों की पार्टी के बराबर आपको एयर टाइम मिलता है। तो गोदी मीडिया कहना बड़ा आसान है, ये एक अच्छा शब्द है, सुनने में बड़ा कैची लगता है। इसके बदले में मैं आज एक शब्द लेकर आया हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो। मैं सोच रहा था गाड़ी में आज आते हुए कि एक शब्द आज मैं आपके सामने रखता हूं, आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा। और मैंने सोचा उसका नाम है मलाई मीडिया। तो गोदी मीडिया तो आपको दिखाई दिया, जैसे मैंने आपको कहा कि आज जो हो रहा है आप देखते हैं, लेकिन आप पृष्ठभूमि, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं देखते आप कभी भी। तो हमारे देश में पीछे 70 साल तक एक मलाई मीडिया भी तो रहा है, जिसने बहुत मलाई खाई, जिसने खूब पुरस्कार बटोरे, अच्छे अच्छे पद लिए, बड़े बड़े बंगले लिए, सारे सरकार से उन्हें सुविधाएं मिली। और अब जब नहीं मिल रही है तो अचानक से उन्होंने एक नया टर्म खोज लिया, गोदी मीडिया। मतलब अगर नहीं मिल रहा है तो जिसको मिल रहा है वो गोदी मीडिया है। फिर तो लोग बहुत समझदार हैं, लोग बहुत सोच समझकर अपनी चॉइस बनाते हैं। हमें जो लोग देखते हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर, किसी के एहसान से नहीं देखते। आज सरकार चाहे भी तो किसी को स्टार नहीं बना सकती। कोई किसी को स्टार नहीं बना सकता, कोई किसी को बड़ा नहीं बना सकता, कोई किसी को छोटा नहीं बना सकता। इस देश के लोग तय करते हैं कि किस पत्रकार को कितना देखना है, किस न्यूज चैनल को कितना देखना है, किस अखबार को कितना पढ़ना है। थोड़ा बहुत पुश होता रहता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर के जो बेटे हैं वो उनसे भी बड़े खिलाड़ी बनते, सुनील गावस्कर के बेटे उनसे भी बड़े खिलाड़ी बनते, अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं वो उनसे भी बड़े स्टार बनते, और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो शायद उनके जो बच्चे हैं वो भी उनसे बड़े हो जाते। मेरा ऐसा मानना है कि यह असंभव है। लोग खुद तय करते हैं कि किसे देखना है, किसको कितनी ताकत देनी है और किसकी ताकत कितनी छीन लेनी है। तो ये मेरे कुछ विचार थे जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत बचते बचाते मैंने ये अपने विचार पेश किए हैं आपके सामने, क्योंकि अब जब मैं सुबह उठता हूं तो एक दौर था जब सबसे पहले हम व्हाट्सएप देखते हैं किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं। फिर जब सोशल मीडिया आया तो मैं सुबह उठ के देखते हैं भाई सोशल मीडिया पे क्या खबर चल रही है, क्या रात भर जो 7-8 घंटे से हम दूर रहे, देखें क्या है, क्या ट्रेंड कर रहा है। अब सबसे पहला डर ये लगता है सुबह उठते ही
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ट्रेंड कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में अपने शो के दौरान कुछ मुंह से निकल गया, किसी को बुरा लग गया और आज आपकी, हर बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। खास तौर पर मैंने देखा है कि ये सब चीजें शनिवार और रविवार को होती हैं, वीकेंड पे। आप बड़े एक्साइटेड हैं अपना अपने वीकेंड को लेकर और आप सोचते हैं कि यार आज कुछ आराम करेंगे या कुछ भी करेंगे, आज मैं रिलैक्स हूं, आज मेरा शो नहीं है। सुबह उठे, आपने कुछ प्लान बनाया हुआ है, कहीं लंच पे जाएंगे, डिनर पे जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, मूड बहुत अच्छा है। फोन देखा, देखा अरे अपना नाम देख रहा हूं मैं, अरे क्या हो गया। और यकीन मानिए 90% सैटरडे या संडे को होता है। तो पता नहीं शुक्रवार में ऐसा क्या है कि मैं शुक्रवार रात को ही कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलता हूं जो किसी को चुभ जाती है और फिर वो मेरा वीकेंड अगले 2 दिन के खराब हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश तो की कि ऐसी बात मैं आपके सामने करूं जो शायद किसी को बुरी ना लगे, और इतना तो सहन करने की क्षमता होनी ही चाहिए हमारे समाज में। तो आपके इतने सच अगर सुने जा रहे हैं तो आप एक सच मेरा भी सुन लीजिए और बाकी लोगों का भी सुन लीजिए। बट जो 2 सॉल्यूशन मैंने आज आपको सुझाए हैं, कलेक्टिवली अगर हम उस पर विचार करें और एक इकोसिस्टम बनाएं और हम अपने मीडिया के स्टार्टअप्स को अगर हम उनको पुश देते हैं, तो अब यकीन मानिए कि आप हमारे जो देश में हमारा जो समाज है उसके लिए भी बहुत अच्छा करेंगे, हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे और एक बहुत अच्छा बैलेंस आप क्रिएट करके रख सकेंगे। और जो आपकी उम्मीदें हैं अपने मीडिया से, वो उम्मीदें काफी हद तक आप पूरी कर पाएंगे। इसलिए इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा, थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन एनकरेज जर्नलिस्ट लेड ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वेट। सर ने मलाई के बारे में बोला, आप लोग थोड़ा और मिठास के साथ ताली तो बजा दीजिए। यस, थैंक यू। एंड ही स्पोक अबाउट ट्रेंड्स, नो वंडर सर यू आर अ ट्रेंड सेटर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर सैयद कासिम जी को, फाउंडर राजपथ बाय सैयद कासिम, टू काइंडली गिव अवे द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू सर। गिव इट अप फॉर हिम प्लीज। जोर से ताली बजाइए लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। We also will be having questions for Sudhir sir. So अगर किसी के पास कुछ सवाल है, I think over there, ये फोटो हो जाए, then we'll be having the questions as well, sir. माइक उधर लेके जाइए प्लीज, over there. Sir, I'll hold it for you. कुछ सवाल दर्शकों के होंगे, ये लीजिए माइक। वहां पे किसी का सवाल है? Yes. Hello, sir. Shazia this side from Galgottias University. And firstly, I'm very honored कि आपको टीवी पे देखा था, आज फर्स्ट फेस टू फेस देख रहे हैं। So, sir, क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली बीजेपी का पीआर एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया जो कि काफी वायरल हुआ। I'm sure यहाँ पे मौजूद सबने देखा होगा वो स्टेटमेंट की नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यूक्रेन में वॉर रुकवा दी सो दैट यूक्रेन के स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जा सके। बट एट द सेम टाइम हमने वीडियोस देखी यूक्रेन के स्टूडेंट्स की जो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। एंड कहीं ना कहीं मीडिया ने भी स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा दिखाया, इंक्लूडिंग आज तक ऑल्सो। सो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है पब्लिक को किसी हद तक? ओके, देखिए इस पे बड़ी चर्चा होती है, खास तौर पर इस उदाहरण पर। मीडिया के लिए इसे क्रॉस चेक करना बहुत मुश्किल काम है। और आप इसको इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए दिल्ली से लेकर और आगे 500 किलोमीटर तक अगर कहीं कोई युद्ध चल रहा है और उसमें किसी एक कॉरिडोर पर लड़ाई रुकी है और दूसरे कॉरिडोर पर नहीं रुकी है। मैं इसको ऐसे करता हूं, मान लीजिए मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा में लड़ाई रुक गई लेकिन सहारनपुर में चल रही थी, वहां नहीं रुकी, सब जगह नहीं रुकी, ये युद्ध पूरा नहीं रुका, एक कॉरिडोर में रुक गया मान लीजिए। तो एक इसकी संभावना तो ये हो सकती है कि हो सकता है एक कॉरिडोर में रुक गया हो थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए रुक भी गया होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इसका कंफर्मेशन दूसरे लोगों से भी आता है, जैसे अगर आपने देखा हो अभी थोड़े दिन पहले जब खबर चली थी तो ये भारत की मीडिया ने इसे उठाया CNN से, राइट, याद है आपको? यस सर। और CNN ने ऐसा छापा, उसके बाद कुछ
सरकार में बड़े लोगों ने उसका कंफर्मेशन भी किया, भारत सरकार के कुछ मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर उसके बारे में कहा भी, और मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है उसको रिपोर्ट करना। फैक्ट चेक भी है सर। फैक्ट चेक, 3 चीज आपको बताता हूं। एक स्थिति है, उस स्थिति को आप एक खास नजरिए से देखते हैं। मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रही हैं, और बाकी लोग भी देख रहे हैं। यानी उस स्थिति को मैं किस नजरिए से देखता हूं, पहला चैलेंज। उस स्थिति पर मेरा रिएक्शन क्या होता है, सबका अलग अलग रिएक्शन होगा। डेफिनेटली। तीसरा, उस स्थिति में कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में है और कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, यह तय करना। और क्या मुझे उसमें स्पष्टता है कि ये जो चीज है ये मेरे नियंत्रण के बाहर है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर है। जैसे मुख्तार अंसारी की कल मृत्यु हुई, दोनों चीजें चल रही हैं, जहर दे दिया गया, हाँ, यस सर, और ये नेचुरल डेथ थी। सरकार क्या कह रही है? नेचुरल डेथ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हार्ट अटैक से मरे हैं, जहर नहीं दिया गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जहर दिया गया। मैं मीडिया हूं, मुझे रिपोर्ट करना है। क्या करना चाहिए मुझे? आज आप पूरे मीडिया में ये सुन रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि जहर दिया है। ये आया है ना अखबार में? यस सर। आया? यस सर। क्यों आया? हम तो क्रॉस चेक नहीं कर सकते। मैंने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, ना मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरूर देखी है, ना ही मैं जेल में था, ना ही मुझे पता है कि इनको जहर दिया गया या नहीं दिया गया। सो बहुत बार आपको ये पता है कि ये चीज क्रॉस चेक करना असंभव है। तो आप क्या करेंगे? आपके जो ऑफिशियल चैनल्स हैं जो आपको वो जानकारी दे रहे हैं, आप उसको जानकारी को प्रसारित करेंगे। तो ये स्थिति जो आप बता रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे साथ एक नहीं हर रोज होती है। ये स्थिति इसलिए बढ़ गई क्योंकि विपक्ष जो है उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए विपक्ष ना हो तो सारे लोग क्या कहेंगे? भारत के लिए कितनी बड़ी बात है, देखिए कि आज हमारा कद कितना बढ़ गया कि हमारे कहने पर हमने थोड़ी देर के लिए युद्ध रुकवा दिया। वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता, हाँ, तो आपको कितना अच्छा लगता? ऑब्वियसली लगता। हाँ। पर आप सच में रुकी होती तो। हाँ, तो वही है। थैंक यू सो मच क्वेश्चन के लिए। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? अरे बाप रे, बहुत सारे हाथ है सर, थोड़ा और रुकना पड़ेगा। या। उनको माइक दे दीजिए प्लीज, देन वी कैन गो बिहाइंड। Sudhir ji, I'm KK Roy Chaudhary. I had great satisfaction for last half an hour in listening to your deliberation, finding it totally non-partisan. So you have observed about the situation in this subcontinent. I would like to equally learn from you about your views, how the Western media perspective is presently being adopted with the changing paradigm shift globally. Thank you. मैं नहीं समझ पाया आपका सवाल। अगर आप मुझे एक लाइन में अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा। मतलब ग्लोबल वेस्टर्न मीडिया ग्लोबल चेंजिंग पैराडाइम, ग्लोबली जो पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, हाउ दे आर अडॉप्टिंग विद द चेंजिंग सिचुएशन ग्लोबली, वेस्टर्न मीडिया वी हैव लर्न फ्रॉम यू हाउ वी आर अडॉप्टिंग हियर, how the Western media is adopting parallel scenario. We have learned from you how the Western media doing that. आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि वेस्टर्न मीडिया से हम क्या सीख रहे हैं या वेस्टर्न मीडिया हमसे क्या सीख रहा है? You got it rightly. What we can learn from them. What we can learn from them. Yes. Oh. देखिए बहुत मैं तो उनसे कुछ नहीं सीखना चाहूंगा। बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मिसयूज्ड और हाइप्ड जो शब्द है वो है न्यूट्रलिटी। और ये न्यूट्रलिटी का जो रोमांस है, ये जो हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा किया गया है कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए और आपको न्यूट्रल होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इसका जो चैंपियन है ये पश्चिमी मीडिया ही है। लेकिन हमने बहुत बार ऐसा देखा है
कि पश्चिमी मीडिया न्यूट्रलिटी के नाम पर असल में सबसे कम न्यूट्रल होता है। जैसे भारत के प्रति अगर आप देखेंगे तो उनकी एक दुर्भावना आपको उनकी रिपोर्टाज में नजर आती है ना? और कैसे वो सेलेक्टिव हो सकते हैं? आपको इसी हफ्ते का मैं उदाहरण देता हूं। जब हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए तो ना यूएन को कोई चिंता थी, ना जर्मनी को थी, ना अमेरिका को थी, और ना ही वहां के किसी मीडिया को थी। लेकिन जब केजरीवाल जी अरेस्ट हुए तो सबको अचानक से चिंता आ गई, पूरे उनके मीडिया को इस बात की चिंता आ गई कि केजरीवाल जी कैसे अरेस्ट हो गए और उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। तो शायद पहले विकल्प नहीं थे। हमारे ही देश में लोग जब बीबीसी रेडियो सुना करते थे तो मानते नहीं थे किसी खबर को जब तक बीबीसी रेडियो से प्रसारित ना कर दे। तो हमने अपनी इतनी ज्यादा निर्भरता उनके ऊपर बना ली थी कि उससे हमें निकलने में समय लगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी हद तक उस निर्भरता से निकल चुके हैं। अब हमें वेस्टर्न मीडिया की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। हम सक्षम हैं और हमारा मीडिया बहुत अच्छा कर रहा है और हमारा अपना जो सिस्टम है वो इतना वाइब्रेंट है। जैसे मैंने आपको कहा, आज आप भारत में किसी खबर को छुपा नहीं सकते, किसी खबर को आप दबा नहीं सकते। आपके पास दोनों पक्ष आएंगे। आपके पास जहर दिया गया है ये पक्ष भी आएगा और ये नेचुरल डेथ है ये पक्ष भी आएगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम वेस्टर्न मीडिया। बहुत अच्छे से आंसर दिया सर। एनी मोर क्वेश्चंस ओवर हियर प्लीज? एक्सक्यूज मी, इधर इधर इधर, यहाँ पे। अच्छा जी जी जी। हाँ हाय सर, मैं अमृत हूँ विस्तार न्यूज से। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं जब फील्ड में जाते हैं तो एक चीज का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बड़ी मतलब बुरी तरह से सामना करना पड़ता है। लोग हमसे ये पूछते हैं जब आम पब्लिक के बीच में जाते हैं, खासतौर पे किसान आंदोलन के बाद में, और ये नॉर्थ में हम ज्यादा फेस करते हैं, आप प्रो सरकार हैं या अगेंस्ट सरकार? और जो आप लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारे लोग आके अभी भी हुटिंग करते हैं, गोदी मीडिया हो क्या तुम? या फिर ये जो नैरेटिव है, क्या आप जो आज तक के स्टूडियो में रहते हैं, चाहे बाहर भी जाते होंगे, आप ये फेस करते हैं? आपका क्या आंसर होता है? या फिर इससे निपटने का लार्जर कोई ऐसा तरीका है कि हाँ इससे निपटा जा सके? क्योंकि एक पत्रकार है, वो तो जॉब कर रहा है, जा रहा है, लोगों के बीच से इंफॉर्मेशन ला रहा है, दे रहा है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव बना है लोगों में वो बड़ा ही एक तरह से गलत बना है और हम लोग रोजाना इससे फील करते हैं और महसूस करते हैं और सामना भी करते हैं। जी थैंक यू। इसमें पहले तो ये समझना जरूरी है, मैं जानता हूं ऐसा होता है और लगभग हर चैनल के पत्रकार के साथ ऐसा होता है, और आपको ये सब चुनौती सामना करनी पड़ती है। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो बात आपको ये कह रहा है या जो भीड़ आपको ये कह रही है वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, किसी पार्टी के वर्कर हैं या दर्शक हैं। मैं हमेशा हर फीडबैक को दो तरीके से बांटता हूं। अगर मुझे सोशल मीडिया पर या बाहर एक राजनीतिक कार्यकर्ता मिलता है और वो मुझे कहता है कि कुछ भी कहता है, उसे मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, तो मैं उसको अलग दृष्टि से देखता हूं। और अगर एक दर्शक मुझे आकर एक फीडबैक देता है तो मैं अलग दृष्टि से देखता हूं। और अब इतने दिन से ये करते करते मुझे काफी हद तक समझ में आ जाता है कि ये एक दर्शक है या ये एक कार्यकर्ता है। अगर कार्यकर्ता कहता है तो मैं उसे माफ कर देता हूं और उस पर तरस खाता हूं। अगर वो दर्शक है तो मैं चिंतित हो जाता हूं और फिर मैं सोचता हूं कि दर्शक अगर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब इसके बारे में विचार करना आवश्यक है। असल में ये जैसा मैं आपको बता रहा था कि इतना ज्यादा कुछ लोग सिस्टम में हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। मैं सिस्टम में हूं, आप सिस्टम में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। अब जो लोग सिस्टम से बाहर हैं वो ये नैरेटिव फैलाते हैं कि सिस्टम के अंदर जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये सब बिक चुके हैं। यानी एक जो सर्विंग जज है उस पर आप लांछन लगाते हो कि आप बिक चुके हो, और ये कौन लगा रहा है? एक रिटायर्ड जज। इसको आप इस तरीके से देखिए। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर विश्वास खो दिया, अगर आपने अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर दिया, तो फिर लोग आपसे झूठ बुलवाना शुरू कर देंगे और आप सिर्फ इसलिए कुछ बात कहना शुरू कर दोगे कि कहीं कोई आपको गोदी मीडिया ना कह दे। ये बहुत बड़ा एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है मीडिया के ऊपर कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपको बिका हुआ घोषित कर देंगे। कोर्ट में
अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपको बिका हुआ जज घोषित कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही नैरेटिव है। इसका हमें पूरा मुकाबला करना चाहिए। मैं मेरे साथ जो हमारे रिपोर्टर्स आते हैं मैं उनको भी हमेशा यही कहता हूं कि आपको उसका मुकाबला करना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। और ये सारे लोग जो ज्यादातर ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं 90% ये किसी ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि आप ऐसा करेंगे, आप मीडिया को इंसल्ट करेंगे। सही मीडिया, मैं यहां आपसे इतनी देर मैं बात कर रहा हूं, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैं हर विचारधारा का सम्मान करता हूं। जो लोग मुझे गाली देते हैं उनका भी सम्मान करता हूं। ऐसा होना चाहिए। तो आप अपने ऊपर विश्वास मत खोइए। आपने कुछ गलत नहीं किया और वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास खो दो और आप ये समझने लगो कि मैं वाकई में बिक गया हूं। एक देखिए, आज जमाना वो है, सच को भी प्रचार की आवश्यकता होती है, वरना उसे भी झूठ मान लिया जाएगा। फिर आप जेन्युइनली अपने बायो में मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐड कर सकते हो जेन्युइनली, बिकॉज़ सो मेनी पीपल ओवर हियर आर मोटिवेटेड, राइट? एम आई सेइंग द करेक्ट थिंग? आप लोग ताली बजा के वैलिडेट कर सकते हो। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। एंड वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक एंड देन ओवर देयर द लेडी ओवर देयर, उनको पीछे दीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। देखिए, मैं जब एक अपना जो शो करता हूँ 1 घंटे का, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ आया और मैंने खबर आपको दे दी और मेरा काम हो गया। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं अब ऐसा सोचता हूं कि अगर 1 घंटे का मौका मुझे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, एक इतने बड़े चैनल पर अगर मुझे मिल रहा है, तो मुझे आपका पार्टनर बनना चाहिए, मुझे आपका भागीदार बनना चाहिए और मुझे हर फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं जो मेरा सिलेक्शन ऑफ न्यूज है वो इस तरीके से देता हूं ताकि उस फैमिली में जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो युवा हैं, सबके काम की कोई ना कोई चीज हो। और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैंने लास्ट में एक पॉजिटिव कोट देना शुरू किया। लोग कहते हैं कि न्यूज तो बहुत नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव न्यूज बिकती है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं जो लास्ट में मैं पॉजिटिव कोट देता हूं वो सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। इसका मतलब ये जो समाज है ये पॉजिटिविटी की तलाश में है, उसे कुछ अच्छा भी सुनना है जो उसको मोटिवेट कर सके। हाँ, अब कौन सवाल पूछ रहा था? So Ashtik is having AI anchor. So my question is, AI anchor can replace human anchors in future? आपके जॉब पे भी खतरा हो सकता है? भाई, हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज जो है वो एक, आज भी हमारे देश में कम से कम, एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है। लोग उस न्यूज को सुनना चाहते हैं एक खास एंकर से। न्यूज की ब्यूटी क्या है? न्यूज तो एक ही है। आज दिन भर की सबसे बड़ी कोई भी एक खबर है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि इस खबर को ये एंकर कैसे बोलेगा, ये एंकर कैसे बोलेगा, ये एंकर कैसे बोलेगा। और जो उस एंकर से सुनने के लिए चाहते हैं कि वो आए, वो आपके पास आते हैं। यानी आपका एक पर्सनल स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग विल ऑलवेज बी देयर। और ये जो पर्सनल स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं छीन सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ये स्टाइल है, किसी का भी, सब लोगों का, हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है, वो स्टाइल एआई आपसे नहीं ले पाएगा। लेकिन जिन लोगों का कोई स्टाइल ही नहीं है, जो लोग सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ते चले जाते हैं, जो लोग दूसरों का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, वो लोग खतरे में आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो एक होता है न्यूज रीडर और एक होता है एंकर। मुझे लगता है एंकर खतरे में नहीं आएगा, लेकिन न्यूज रीडर खतरे में आ जाएगा। सो अच्छा होगा कि न्यूज रीडर्स धीरे 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 एंकर बन जाएं, अपना स्टाइल डेवलप करें, जैसा भी वो करना चाहते हैं, किसी की नकल ना करें, तो वो बच जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते रहेंगे जीवन भर, तो फिर एआई एक दिन आपकी नौकरी ले लेगा। और जोर से ताली होती चाहिए, है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, ऑनर एंड प्रिविलेज टू हियर यू, थैंक यू सो मच। All right, ladies and gentlemen, what interesting, insightful session from the man himself. Now it's time for an interesting fireside chat. We have the topic of misinformation, how it's created and consumed, and how to counter it. I'll repeat the topic for all of you once again. It's a fireside chat.
misinformation, how it's created and consumed, and how to counter it. We have the privilege of having Anjana Om Kashyap, Senior Executive Editor, Aaj and she'll be in conversation with Shohini Ganguly, Senior Correspondent, Exchange for Media. उन दोनों के लिए जोर से ताली please for this nice chat. Can I request Shohini and Anjana ma'am to come up on stage? Yeah. So there they are. Right now is the moment. Please also bajaye thali. Thank you. All yours. Hi, everyone. I think we are here at one of the most awaited sessions for today, aren't we? Can I hear some noise, guys? Thank you. Welcome, Anjana. So we are here to discuss something very important for the media landscape today, which is misinformation. So since morning, we have been hearing a lot about credibility, trust, news, noise, and misinformation. I want to understand from you, how do you perceive today's media landscape as with respect to this misinformation buzzword? How much do you think it's prevalent in today's media landscape? Hi, everyone. So I think it's the biggest challenge that the media industry faces today. I would like to put my answer in 3 different categories. The first begins with the fact that apart from mainstream media, social media is huge now. It's on our keyboard. It's in our fingers, like so many of you are even now glued to your mobiles. It keeps us this habit of, I just got hold of a magazine, jo hamara Bazaar magazine hai, and I liked something, and I almost enlarged the image. That's how addicted we are to our mobile phones. So what does that speak about us? That says that we are ready to believe, see, and probably indulge in everything that's coming onto our hands via the mobile. So I think media faces a huge challenge because of the social media onslaught. I call it onslaught on purpose because I feel that there are some very good parts to it, like everybody has a voice, but also a lot of propaganda and misinformation is being spread via that media. Now, how do we counter it, and what is misinformation? We should first understand what is misinformation. Any information that is not based on facts is definitely misinformation. That is holding the other part of the truth and just putting forth one side of the truth, misinformation? I think it is. Any information, at least in the media industry, if it purposely holds back one side of the truth, is misinformation according to me. चाहे वो कोई मर्डर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो इस देश की न्यायालयों का मामला हो, अगर एक तरफ की सच्चाई को कोई भी मीडिया हाउस छिपाता है या दबाता है और एक तरफ की सच्चाई को पुरजोर तरीके से रखता है, तो वो भी मिस इन्फॉर्मेशन है. कई बार हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं. इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और खास तौर पर जिस मीडिया हाउस के साथ मैं काम कर रही हूं, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप, चाहे वो मर्डर से रिलेटेड इशू हो, क्योंकि मुझे आज भी याद है सुशांत सिंह राजपूत में हर कोई एक तरह की भाषा बोल रहा था, तब भी प्रेजेंटिंग बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी इज आवर जॉब. इट इज आवर, ये हमारा काम है. और कोई भी अगर आपको इसके लिए जज करके आपको पुल डाउन करता है, तो बी रेडी टू फेस इट. ये आपका काम है भाई, उसको मत भूलिए. दोनों हिस्से आपको दिखाने ही दिखाने हैं. आपको इधर भी सवाल वैसे पूछने, उधर के भी पूछने. जब उधर पूछेंगे तो वो गाली देंगे, जब इधर पूछेंगे तो वो गाली देंगे. तो दूसरा हिस्सा ये है मिस इन्फॉर्मेशन का, जो मैं सबसे बड़ा थ्रेट मानती हूँ, वो यही है. और कई सारे तो मीडिया हाउसेस के अलावा यूट्यूबर्स हैं जो आजकल बहुत बड़े हो गए हैं, तो उनके ऊपर तो कोई अंकुश भी नहीं है. वो मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देते हैं, लेकिन आप उनके थंबनेल्स देखिए. क्लिकबेट छोटे थंबनेल्स तो होते ही नहीं है यूट्यूब पे.
क्लिक बेट्स होते हैं, दुनिया पिघल रही है, दुनिया खत्म हो रही है, या वन साइडेड स्टोरी। और फिर आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया को पुल डाउन कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। तीसरा, मिस इन्फॉर्मेशन और मीडिया के क्षेत्र में मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती, द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट देयर इज अ वेरी वेल डिजाइंड मशीनरी एट वर्क टू डिस्क्रेडिट मीडिया राइट नाउ। पूरे अगर आप देखेंगे समाज में भी शायद मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि कई लोग, बस अभी हाल में मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कोई सडन खबर थी, मुझे खबर याद नहीं आ रही है, बट वट एवर इट वॉज आई हैड 4 स्पीकर्स विद मी। सो यू नो, आज तक इज वेरी फॉर्म, 4 गेस्ट तुरंत दे दिए, ऐसे 4 गेस्ट नाम शुरू हो जाएंगे। तो 2 गेस्ट के बीच में यूजुअली बीजेपी एंड कांग्रेस वर एट लॉगर, सो आई डिडंट वांट टू गो टू द अदर गेस्ट बिकॉज आई वांटेड अ प्रॉपर डिबेट बिटवीन देम। तो वो 2 गेस्ट बचे हुए थे। अच्छा, पीसीआर ने बोलना शुरू किया, टाइम खत्म हो गया है। तो मैं ऑनरी थी और मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा 2 गेस्ट अभी बोल नहीं पाए हैं। और उस समय इंसिडेंटली आलोक शर्मा अपनी बात कह रहे थे और वो प्रधानमंत्री को घेर रहे थे। अब वो मेरा इशारा करके, अभी तक वीडियो चल रहा है कि मैंने इशारा किया पीसीआर को कि आलोक शर्मा की आवाज बंद करो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहे थे। That is a misinformation. So either I go back telling everyone, I do a tweet every morning, evening, lunch, I was not doing this, I was doing this, or I just let it be. But then that misinformation is spreading via a lot of media, from Instagram posts. So there was this very famous music director, I don't want to name him, he also put it on his story. So then I wrote to him what had happened. He said, okay, I'm deleting it. But then knowingly, unknowingly, people with more followers, less followers, unknown, so even part of society, different parts of society, without verifying the information, I don't like her. She's bold, she's rude. कितना चिल्लाती है औरतों के. Like we've also probably made boxes in which we want our journalists to fit. Men can be decisive, they can be outspoken, they can be rude. I like him, he's so arrogant. Wow. And if a woman chooses to even be anything beyond kind, nice, humble, very polite, very space giving, then she's questioned for that very behavior. So I think there are a lot of challenges that we need to face. And it's not been an easy journey. I started long back, as I keep talking, कि एक ज़माना ऐसा था जब हम लोग कर रहे थे, तो women were already considered just for, you know, the second half of the bulletin when we were running light news or the soft news. वहां से लेके election, hardcore news करना, fighting people every day, not that it's very enjoyable. I'm trying every day to bring in a little more humor to politics and trying to make my shows more interactive and interesting. I tell my speakers, spokespersons from different parties also to add a little humor, because I think that the screeching and the noise takes us nowhere. But then these are 3 big challenges. So the first challenge is what is misinformation? Withholding one side of the information is a huge challenge. Then social media and the various platforms. WhatsApp है, आपने 100 लोगों को एक ग्रुप पे कुछ भेज दिया, मेरे परिवार में कितने लोग हैं जो मुझे कुछ भेजते हैं, ये देखो ऐसा हो रहा है, and I know it's false news, but they're not ready to believe me. तो कहते हैं कि अरे मैंने देखा है, इंस्टा पे था, इंस्टा कब से सही हो गया, अरे व्हाट्सएप पे भी आया था, फेसबुक पे भी देखा है मैं कहा हर जगह झूठ फैल रहा था, आप तो पता नहीं चला. So that's the challenge we face. And the third is this, that you know, everybody is playing a part in discrediting media. And I think it's very important कि मीडिया के लोगों को एकजुट होना जरूरी है, कि हम सब ये समझें, और हर कोई थोड़ा सा, you know, when you go back, just think, was I okay today? It's okay, it's okay. We can have, like, we're just human beings. कभी भी आपको लगता है कि ऐसा मैंने शायद गलत किया, मैंने शायद वो पोजीशन ले ली जो मेरी आइडियोलॉजी है, मुझे उधर भी ऐसा करना चाहिए, तो make amends the next day. We all need to rethink and not think that we are gods. I have seen so many media people who think they're gods, and I've seen those gods fall also. So the day a media person thinks he is God, then also I think he falls into a trap, and we are not gods. We are just like the guy who serves you tea in office, you're just an employee.
Come there, use your brain, do a nice job, go home, sleep well, spend time with your family. But beyond that, you're not gods. You're not gods, you're humans. Very, very well said, Anjana. I mean, there are a lot of points that we can pick from here for the audience, because we have a lot of young people in the audience as well. And one pertinent question here. So I was at at an ad agency party, and I had heard from a very senior official there that media is sort of forgetting the line between sensationalism, the sunsani, and misinformation. So do you think that line is getting blurred, and the hunger for this sunsani and sensationalism is sort of feeding the misinformation? Who was this gentleman you were talking to? I can't name, but there was a very senior official. Tell us his profession at least. He's in advertising. He's in advertising. Oh wow, an advertising guy telling us that media people are looking for sensation. But I think you probably talked to him in the wrong time, because if he would have said this 10 years back, then probably I would have countered it, or I would have said that, not countered it, I would have accepted it and been more humble. But I think that post the Anna Andolan, media has by and large, or largely if we can say, been focused on news and politics and elections, and the viewers are also watching that. They're really hungry for news, which is a great thing for us. So I think the sensationalism has gone down quite a bit, a few notches for sure, but I can't tell you that, yeah, it's completely gone. That's something that we need to continuously work on, yeah. Okay. And Anjana, also you mentioned how you've been in the industry for a while now, right? And when you joined, can you give us a picture of how fact checking was done then versus how fact checking is done now, right? How has the landscape there changed? So now we have fact checking teams in offices. That's the kind of challenge we face. We never had fact checking teams because your reporters were your fact checkers. But now, because so much of misinformation, अब तो मेरे वीडियो चल रहे हैं, मैं घुटनों के दर्द का भी दवा बेच रही हूँ AI में, और मैं डायबिटीज की भी दवा बेच रही हूँ AI versions में. So how do you counter that? You need fact checking teams for that. So the biggest first difference is that तब fact checking teams नहीं होती थी, अब fact checking teams है. So that is the kind of कितना बड़ा ये issue हो चुका है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं. दूसरा, ये बात सच है, और आज तक मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो एडिटर इन चीफ है मिस्टर अरुण पुरी, उनका एक इंस्ट्रक्शन और उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे लगता है हर मीडिया हाउस को याद रखनी चाहिए. जब भी वो कोई भी स्टोरी देखते थे जिसको कोई रिपोर्टर ओन नहीं करता है, लाइक यू डोंट हैव अ रिपोर्टर PTC टू इट, ही वुड से whose story is this, and then he would ask questions, whose story, कैसे ये स्टोरी बनाई आपने. So make a reporter accountable for every story that you are running. तो उससे वो फैक्ट चेकिंग खुद ही हो जाती है कि एक ह्यूमन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ गई भाई. अब उसके माथे पे, उसके सिर पे, अगर ये खबर गलत निकली या इसमें लिखी हुई एक भी लाइन गलत हुई तो वो उसके माथे पे है. तो जब अपनी नौकरी पे आती है तो हम सबको चिंता होती है. तो फिर उसी तरह से प्रोपोर्शन में फैक्ट चेकिंग होता है. तो अब उस तरीके से उसको आप हैंडल करते हैं. पहले इतना नहीं था, मुझे लगता है कि पहले खबरों को लेकर एक तो उतनी ज्यादा तेजी भी नहीं थी, या उतना ज्यादा मीडिया हाउसेस भी नहीं थे. अब तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल, उतनी मीडिया हाउसेस हो जाएंगी. तो देयर इज अ रेस गोइंग ऑन. बट हाँ, वो चैलेंजेस पहले इतने नहीं थे, अब बहुत ज्यादा है. टाइम जितना इवॉल्व हो गया. बट अगेन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यू मेंशन, यहाँ पे हमारी फैमिलीज को भी हमने देखा है कि अरे व्हाट्सएप पे देख लिया, इंस्टा पे देख लिया, मतलब खबर सच है. So as a person who's been in the industry and as an expert in this industry, what would you advise to common people to behave in the news? What should they look for in a news to believe that ये सच है और randomly इंस्टा पे आई हुई चीज नहीं है? I think एक तो सोर्स, कि किसने वो खबर डाली है. And you have to build your pool of credible channels, media sources, individuals that you trust. Because आजकल ओपिनियन ज्यादा है, फैक्ट्स कम है. बट जब भी आप न्यूज कंज्यूम करें तो आप आज तक देखें. Nice. So choose your media house very, very carefully. Whom are you going to trust? That is the best way, because and all the media houses which have credible reporters or faces who are, taking accountability for that news are usually the ones who will put forth the best facts for you.
Superb. And as we are closing in and the timer is ticking, I have one last question for you. Anjana, and since morning, a lot of people have mentioned the need for a regulatory body to hold, like you said, a reporter needs to be held accountable for this story. A lot of people mentioned about an industry body being there to hold the media outlets accountable for the stories they're putting out. Do you feel that is a need in today's time of misinformation, an industry body? I think there are broadcasters associations and etc. which take care of following regulations, and if anything is going too berserk, I say a complete no to any governmental regulation for sure, because I think that will only be that is not welcome at all. But within the media, if people think that they need such a body, then why not? I mean, we already have such bodies existing. And I think each one has to be accountable. We have to just remember who we are. We are not here. Our job is in one line, to put both parts of the story in front. हमारा पूरा काम बस यही है कि आपको हर स्टोरी के दोनों हिस्से बताने हैं. जो भी स्टोरी आपका फिल्टर अपने दिमाग का अलग हो सकता है, उनका फिल्टर अलग हो सकता है, उनका फिल्टर अलग हो सकता है. आपको एक खबर अच्छी लग सकती है, इंपॉर्टेंट लग सकती है, उनको नहीं लग सकती है. लेकिन जब भी आप वो खबर दिखाएं, प्लीज टेल बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी. एंड जब भी आप अपनी चूज की हुई खबर दिखाएं, प्लीज टेल बोथ. सो दैट फिल्टर वी हैव टू बिल्ड. इफ वी आर गुड विद दैट फिल्टर, then I don't think we need. And फिर ऊपर से एसोसिएशन से डाली हुई कोई भी बात, prejudices, biases, बहुत सारे complications आएंगे. I think media houses and individuals have to look within themselves. That's the best way forward, according to me. Very, very well said. With that, I am done. Do we have time for questions? Yes, of course we do. How can we let her go without questions? Anybody has any questions over here? किसी के पास कुछ सवाल है और? I think there's one person over there. उनको एक बार mic please दे दो. She's been very diligent since morning. Yeah, very patient and asking some good questions as well. Very good question. Yeah. Hi. Can we get the mic sorted? Hello. Yeah. Ma'am, Shazia this side from Galgottias University. And ma'am, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि एज अ जर्नलिस्ट आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके थ्रू कभी कोई फैक्ट चेक की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी वजह से कोई मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची हो ऑडियंस तक? नहीं, किसी ने जवाब दे दिया आपको पीछे से? नहीं. ओके मैम, एक्चुअली वन मोर क्वेश्चन प्लीज. मेरा चेहरा वैसे लोग मिस्टेक कर लेते हैं दूसरे से, और दूसरों की दोष भी मेरे ऊपर डाल देते हैं. तो इट्स गुड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. और मैंने ऐसा कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अभी तक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट ऑन टीवी, not on any social media platform, not because of me. I am doubly careful. मुझे पीसीआर में भी जब बताता है जजमेंट आ गया और जो खबर आ रही है वो ऐसा कह रही है कि उन्हें 5 दिनों की जमानत मिली है, I am so careful. I can't tell you, क्योंकि वो एक लाइन निकाल के ये बोला था, इसको तो समझ ही नहीं आता, ये तो ऐसी है वैसी है, शुरू हो जाता है. So I'm very careful. यार, your next question. Okay, ma'am, being a journalism student I am, so मैं जब भी न्यूज चैनल्स देखती हूँ तो एक टर्म मुझे बहुत सुनने को मिलता है, मोदी सरकार. Why we use Modi Sarkar instead of his party name Bharatiya Janata Party, ma'am? Isn't it a misleading type of term जो लोगों को लगने लगता है, बच्चा बोलता है मोदी सरकार instead of Bharatiya Janata Party? So as a student of journalism, you should know that the government and the party are two different things. So they can't be replaceable. So your question is essentially wrong. No, she didn't say that. No. In news we mentioned Modi Sarkar is Sarkar and BJP is party. You want to reframe your question? I can. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay, I think one question over there as well, please. Hi, ma'am. I am from a security background, and deepfakes is something which really interests me. So I want to understand, considering that AI-generated deepfakes have become very common, and they're going to be more such deepfakes in the future. Does your news organization use any deepfake detection methodology, or calling an expert to evaluate videos? Absolutely, we have them, and we also have a legal head, and every second day I send him one video that I get कि सर ये एक और AI का मेरा fake video चल रहा है.
So we take up those cases as legally as of now. इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, suing the people who are using our name or our brand to sell their product. But it's a massive challenge, as you're saying, because in coming days it's going to be. We are very joyous about the fact कि मेरा AI anchor आया और मैं field में भी, studio में भी, लेकिन अब वो मेरी आवाज क्लोन करके, मेरा चेहरा क्लोन करके और भी एंकर्स का हो रहा है, दवाएं बेच रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है. We need to really stop that and see how it goes. All right, thank you so much. I guess we're done with the questions right now. And please, thank you so much. Give it up for Shohini. Can I hear more? Yes, please. मुझे पीछे वाले लोगों का ताली सुनाई नहीं दे रहा है, और जोर से बजा सकते हो आप लोग, प्लीज. Thank you so much. We have, I request you to kindly wait. May I please request Mr. NQ Syed, CMD, Exicon Events Media Solutions Limited, to kindly come up on stage and give away the token of appreciation to Anjana Kashyap. Zor se taali, please, once again, ladies and gentlemen. Thank you so much, ma'am, for joining us over here. Absolute privilege over here. Thank you so much. Request them to kindly get this cleared. Thank you. All right, interesting fireside chat. Moving on to another very interesting keynote session, coming from somebody who's really, really experienced and has seen it all, been through it all, and has done well right from the word go. We have a special keynote session, ladies and gentlemen, with the one and only Sanket Upadhyay, co-founder of the Red Mic. Unke liye please zor se taali again. He's been there. Thank you so much, sir, for being with us over here. So looking forward to hear from you. कुर्सी एक रख दीजिए उनके लिए प्लीज. Anyone with the hand mic? बिल्कुल सर. Thank you. Pleasure. Thank you. I think if it is in the middle, then it would be better. Why don't we remove this? You don't want to. I'll stand. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. Thank you very much for inviting me. मुझे इस प्रोफेशन में मेरे ख्याल 22 साल हो चुके हैं, और 22 साल में एक जो अच्छा अनुभव मिला है वो है अलग अलग न्यूज रूम्स में काम करने का. एक अखबार में भी काम किया, न्यूज एजेंसी में भी काम किया, उसके बाद अलग अलग टेलीविजन चैनल्स में अलग अलग भूमिकाओं में, रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, उसके बाद एंकर, उसके बाद फिर आउटपुट चैनल हेड करने का एक मौका, और अब ये सारा एक्सपीरियंस लेकर के और अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक न्यूज मीडिया स्टार्टअप शुरू करने का. और मेरा आज जो पूरा ध्येय होगा पिछले अगले 10 मिनट में, वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अब हम लोगों को या किसी को भी एक बड़े मीडिया संगठन की जरूरत नहीं है. देयर इज अ मैसिव लिबरलाइजेशन व्हेन इट कम्स टू न्यूज मीडिया. हम लोग ट्रूली, और आप यकीन नहीं मानेंगे अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं, पत्रकारों के लिए ये एक स्वर्णिम काल है. हम लोगों के लिए इससे ज्यादा पॉजिटिव समय और कुछ नहीं हो सकता है. और अब मैं अगले कुछ मिनट जो हैं वो उसी पर फोकस करने के लिए करूं. देखिए, इतने सालों का जो अलग अलग न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस का जो तजुर्बा रहा, वो तजुर्बा कुछ इस तरीके का था कि हर जगह अलग लोगों से उनके विचार जाने, उनके बायसेस भी जाने. बायस होना कोई बुरी बात नहीं है. अगर आपको कोई भी आज आकर के ये बोले कि आप अनबायस्ड हो जाइए, बायस मत होइए, तो देखिए सीधी सी बात है, एनीवन हु इज सेइंग दैट ही इज ट्रूली न्यूट्रल या वो बिल्कुल अनबायस्ड हैं, वो झूठ बोल रहे हैं. वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं बिकॉज देयर इज ओनली वन कंडीशन इन विच यू विल बी ट्रूली न्यूट्रल एंड बायस्ड. क्या कोई गेस करना चाहेगा वो क्या कंडीशन है? एनीवन? हम कब पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाते हैं? थैंक यू वेरी मच. जिस दिन हम मर जाते हैं, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप ट्रूली अनबायस्ड हो जाएंगे. और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप बायस रहेंगे.
हाँ, बस आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आपका जो बायस है या ओपिनियन है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स। प्रॉब्लम ये हो गई थी इन सारे न्यूज रूम्स में दैट द ओपिनियन बिकेम एब्सोल्यूट, और फिर आप रेट्रोफिट करते थे उन फैक्ट्स को। मैंने पहले ही मान लिया है कि ये मेरा सच है, और अब मैं जा रहा हूं खोजने कि इसमें तथ्य कहां है, मेरे ओपिनियन को जस्टिफाई करने वाले तथ्य कहां है। तो जब ये सारी चीजें न्यूज रूम्स में होने लगी, और इसको मैं गलत नहीं मानता, जिसका जैसा ईमान, जो जिस तरीके से करना चाहता है, देयर विल बी एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग। ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरी तरीके से न्यूज मीडियम जो है वो ऑपरेट करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकप्रियता, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलैरिटी। आप पॉपुलर होंगे तभी आपको लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो आप पॉपुलर होंगे, पॉपुलर होंगे तो लोगों की वजह से एडवर्टाइजर्स आएंगे, एडवर्टाइजर्स आएंगे, आप पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, आप विस्तार करेंगे। यही मॉडल है ना। प्रॉब्लम ये हो गई कि लोकप्रियता चेस करते करते द कैजुअलिटी बिकेम द ट्रूथ। अब आपका पूरा फोकस लोकप्रिय हो जाना है, और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जरूरी नहीं है कि वो हर लोकप्रिय बात जो है वो सच हो। आप सच बोल रहे हैं, सच कहीं ना कहीं लोकप्रिय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट्स अ रिस्क दैट यू हैव टू टेक, और यही बेसिक्स हैं जर्नलिज्म के। जरूरी नहीं है कि आप हर समय लोकप्रिय बात करें, और इसी वजह से बहुत सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पर मेरा तजुर्बा है ये, दिस इज माय ओन अंडरस्टैंडिंग, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, आई कैन बी चैलेंज्ड ऑन दीज फैक्ट्स ऑल्सो। मेरा यह मानना था कि उस लोकप्रियता के पीछे सच एक कैजुअलिटी बनी, और जब वो कैजुअलिटी बनी तो बहुत सारे ऐसे मेरे पत्रकार मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं जो कि फील्ड में साथ में मिले हैं, वो ये चीज जानेंगे कि जो ट्रू स्पिरिट में जर्नलिज्म करना चाहते हैं, उनको एक दिल से एक आवाज आ जाती है, आज मजा नहीं आया, आज अच्छी नींद नहीं आ रही है। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर इज्जत वर्सेस ईएमआई बैटल जो हम लोग लड़ते हैं ना अपनी नौकरियों में। और क्या है कि आज नौकरी के लिए चलो ये भी सह लें, वो भी सह लें, इस इकोसिस्टम की वो भी बात कर लें। इकोसिस्टम्स आपको क्या देते हैं? इकोसिस्टम्स आपको एक सेट व्यूअरशिप दे देते हैं, उसके लिए फिर आप उनके जैसी बात बोलने लगते हैं, और जितनी बार आप ऐसे करेंगे उतनी बार आप दूर जा रहे हैं। आप आजाद हैं, अगर आप जेन्युइनली उसमें विश्वास करते हैं तो आप आजाद हैं, आप करिए। हमने ये जो नया मीडिया स्टार्टअप शुरू किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मंत्रा के साथ ये शुरू किया है, और वो मंत्रा है, बात जो सही हो लोकप्रिय नहीं। से व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज पॉपुलर। अब जाहिर सी बात है एक सवाल उठेगा, और ये उठ भी रहा था जब हम शुरू कर रहे थे, चले हीरो बनने, सच बात बोलेंगे, सुनेगा कौन? कौन सा एडवर्टाइजर पैसा लगाएगा? कोई देखेगा ही नहीं, सच कोई सुनना नहीं चाहता। सो माय पॉइंट इज, इन एवरी, और ये मेरा 21-22 साल का जो तजुर्बा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं क्यों कहता हूं कि अब ये एकदम स्वर्णिम काल है, भयंकर लिबरलाइजेशन है जर्नलिज्म के मीडियम में, और आप कर सकते हैं। जब बहुत सारे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस इन इकोसिस्टम ड्रिवन कैचमेंट एरियाज को कैप्चर करने में लग गए, ये पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो आपने अपनी ऑडियंस को रिड्यूस किया। आप में से कितने लोग हैं जो कि ऐसे लोगों से मिले हैं जो ये कहते हैं हमने तो न्यूज देखना ही छोड़ दिया? थैंक यू सर, यू प्रूव माय पॉइंट। ये वो लोग हैं जो कि ओपिनियनेटेड हैं, ये मरे नहीं हैं, इनका भी एक मत है। लेकिन जब 100 लोगों के ऑडियंस में होता क्या है ना कि लोग कुछ शोर ज्यादा मचाते हैं, तो 2 तरीके के लोग शोर मचा रहे हैं, उसमें 98 लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। ये वो चुपचाप लोग हैं जो कि सच सुनना चाहते हैं, भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो। और क्योंकि ये किसी इकोसिस्टम में नहीं आते, तो इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप इकोसिस्टम की तरफ चले गए क्योंकि आपको ये लग रहा है यहां से मुझे लोकप्रियता मिल जाएगी। और इस साइलेंट मेजॉरिटी का क्या? ये साइलेंट मेजॉरिटी कहां जाएगी? मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है द रेड माइक में, 3.5 महीने में, एंड आई डोंट बोस्ट, आपने यहां नोटिस किया होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है।
बिल्कुल जरूरत नहीं है. I am really, really grateful to the big media houses of this country for the way they have behaved themselves, that they have created an entrepreneur out of a person who would have never thought of doing this. हम इतने महफूज महसूस कर रहे थे अपने आप को. I was so ensconced in the comfort of a job. घबराहट होती है ना कि हम entrepreneur कैसे बने, वो कैसे कर लें. ये हम तो we are journalists, how can we be entrepreneurs? Thank you to these media houses that now they are creating an opportunity, and thanks to technology अब हम कर सकते हैं. और ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है, इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है, living shining example, वो है the red mic, where we say what is right and not what is popular. That in 3.5 months, I have an audience base, a subscription base of 5.5 lakh, sorry, 1 ने चाहा 1 million भी हो जाएगा, 5 lakh subscribers and millions of views. और ये कोई किसी इकोसिस्टम के लोग नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं उसमें बहुत सारे कमेंट्स. जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहां से आ रहा है. और अगर आ भी रहा है, अगर किसी कैचमेंट एरिया से आ भी रहा है, तो क्योंकि आप सच बोलेंगे तो उनको निराशा भी होगी. लेकिन धीरे धीरे करते 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 आप उस साइलेंट मेजॉरिटी को अट्रैक्ट करेंगे एक बार फिर से, जो किसी ना किसी कारण की वजह से मजबूर हो गई थी ये बोलने के लिए कि मैं तो न्यूज ही नहीं देखता, या मैं न्यूज ही नहीं देखती, या मैं तो कुछ और ही देखता हूं या देखती. ऐसा नहीं है कि इन लोगों को भूख नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये लोग बेरोजगारी की खबर नहीं सुनना चाहते. इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेरोजगारी सीरीज चलती है जिसके लाखों व्यूज होते हैं. प्रॉब्लम यह है कि न्यूज रूम्स में जब यह बोलना शुरू कर दिया जाता है कि ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है, कोई देखेगा नहीं. दरअसल खबर बोरिंग नहीं है, आपका बताने का तरीका बोरिंग है, आपका बात करने का तरीका बोरिंग है, क्योंकि आप लोकप्रियता के पीछे भाग रहे हैं. आपके इकोसिस्टम्स उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो आपको लगता है यही जनता है. ये जनता नहीं है. और मेरा ये कहना है, एन अपील टू ऑल दोज एडवर्टाइजर्स हु मे बी हियर, ऑल दोज पीपल हु जो सोच रहे हैं कि टेलीविजन पर जो डिबेट्स होती थी ना पहले, आज वो उस तरीके का तेज क्यों नहीं है, उसमें उस तरीके के व्यूज क्यों नहीं है. क्योंकि हर फॉर्मूले का एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है. हर फॉर्मूला एक टाइम तक चलता है, और जब आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे खत्म हो जाएगा. आज अगर आपको एक अच्छा एडवर्टाइजर अगर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो वो इसी में है. और ये एक ऐसी अमर चीज है जो कि कभी नहीं जा सकती, बिकॉज जब जब लोकप्रियता की होड़ होगी, तब सच के लिए एक अंदर से एक जज्बात जगेंगे लोगों की, सच तो जाने कि क्या हो रहा है. तो समय अब है, द टाइम इज नाउ. इस स्वर्णिम काल में कैच पीपल लाइक अस, कैच मेनी हु आर लाइक मी वेरी अर्ली ऑन. वी आर अवेलेबल, हम आपके सामने उपलब्ध हैं. इन्वेस्ट इन पीपल हु से व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज पॉपुलर. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. उसके लिए जोर से ताली प्लीज. Sir, I request you to kindly wait, please, and we have the token of appreciation as well for you. May I please request Mr. Rajiv Bhandari from AstroSaga Astrology Portal to kindly come up on stage and give away the token of appreciation to sir. Please उनके लिए जोर से ताली बजाएं. This is indeed the moment for him. Thank you. I'm sorry we are really short on time, so we really have to move forward. Thank you so much. So I think you can maybe take it offline, because we have to follow the timeline that we have, sir. I'm really sorry. I would love to accommodate, but next we have a special keynote session, ladies and gentlemen. The topic that's going to be discussed right now is navigating the new media landscape, opportunities and challenges for emerging news channels in India. We have the privilege of having Mr. Upendra Rai, CMD and Editor-in-Chief from Bharat News Network over here with us. Thank you so much, sir, for joining us. Upendra ji के लिए जोर से ताली प्लीज. और जोर से, मुझे पीछे की आवाज नहीं सुनाई दे रहा ताली का. Thank you, sir. You would prefer a hand mic or this? Yes. Thank you.
एक्सचेंज फॉर मीडिया। हेलो, बहुत धन्यवाद एक्सचेंज फॉर मीडिया का। और एक लंबा एसोसिएशन मुझे लगता है कि एक्सचेंज फॉर मीडिया के साथ मेरा हो गया है। करीब करीब 2009 से तो लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ और हर फंक्शन में आना होता है। तो जो मेरे से पहले बहुत सारे स्पीकर्स ने बात रखी और अभी संकेत जी ने भी बात रखी, ही स्टार्टेड हिज न्यू एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। इमर्जिंग मीडिया के सामने अवसर क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। सब्जेक्ट बहुत, अगर आप लोग चुप रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा, दरवाजे के बाहर बात करें। तो जैसे इमर्जिंग मीडिया क्या है और इमर्जिंग मीडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये टॉपिक दिया गया है। तो जैसे कोई ये प्रश्न ऐसा है कि कोई किसी अभिनेता से पूछे कि तुमसे पहले भी जो है बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेता हैं, तुम आकर यहाँ क्या करोगे। ये सवाल किसी उद्योगपति से भी पूछा जा सकता है जो नया एंटरप्रेन्योर हो कि भाई आपके लिए जगह कहाँ बची है, क्या करोगे यहाँ आके। और ये सवाल किसी जर्नलिस्ट से भी पूछा जा सकता है कि भाई तुमसे बड़े नाम है, प्राइम टाइम पे दिखने वाले बड़े बड़े चेहरे हैं, तो तुम्हारे लिए जगह कहाँ बचती है इस पूरे भीड़ में। और कहा जाता है कि जो जितनी चुनौती होती है वही चुनौती अवसर में बदलती है, और अवसर में बदलने के लिए हमें मौका तलाशना होता है। अब पहले दिलीप कुमार भाई ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे, वो थे और वो पहले पर्दे पे, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार आए, भाई राजेश खन्ना भी आए, उनके समकालीन सुनील दत्त साहब भी रहे, बलराज साहनी भी रहे, और आगे अमिताभ बच्चन भी आए, बहुत कैरेक्टर, बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट भी आए, बड़े बड़े लोग आए, और सब रुपहले पर्दे पर बहुत ठीक से सफल रहे और सबने अपनी अदाकारी अच्छे से दिखाई। और शायद वो सफल ही इसीलिए रहे कि उन्होंने, हाँ उस दौरान और भी बहुत सारे एक्टर आए होंगे जिन्होंने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को कॉपी करने की कोशिश की, तो वो कॉपी बन के रह गए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी अदाकारी दिखाई, जिन लोगों ने अपना ओरिजिनल अंदर का टैलेंट निकाल के दिखाया, उन लोगों ने एक नया मुकाम हासिल किया, और उस नए मुकाम के कारण जो है लोग एक अलग स्तर पे पहुंचे, अलग लेवल पे पहुंचे। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का ही देना चाहूंगा, देना चाहिए क्योंकि हम सब मीडिया स्पेक्ट्रम से हैं, और एक सफलता की कहानी है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप अपने आप में। जब प्रदीप गुहा जी उसके सीईओ बने, एडिटर इन चीफ बने, तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए और कैसे सबसे पावरफुल अखबार बनाया जाए। तो अखबार तो पावरफुल था, लेकिन कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, कैसे उसकी पहुंच जो है हर हाथ तक हो, वो कमोडिटी प्रोडक्ट की तरह जो है लोग उसको सवेरे इंतजार करें। जैसे चाय पीने के लिए हम चाय पत्ती का और दूध का इंतजाम रखते हैं, तो चाय पत्ती और दूध के साथ कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार भी बगल में रखा रहे। तो प्रदीप गुहा जी को यह समझ में आया, उन्होंने इस बात का जिक्र भी कई जगह किया कि क्रिकेट और बॉलीवुड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर और चाहे जाने वाले विषय हैं। तो उन्होंने फिल्मी गॉसिप को बॉम्बे टाइम्स का एक सप्लीमेंट लगा करके शुरुआत की, और हर शहर में, जैसे दिल्ली में दिल्ली टाइम्स हो गया, लखनऊ में लखनऊ टाइम्स हो गया, लेकिन उसमें फ्रंट पेज पर फिल्मी गॉसिप ही दिखाने का मैंडेट था। उस एक प्रयोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान का कमोडिटी प्रोडक्ट बना दिया, और लोगों के घरों तक टाइम्स ऑफ इंडिया पहुंचने लगा। तो खबरों को पेश करने का, खबरों तक जाने का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हुआ, और मैं बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैं टाइम से करीब पूरे 1 घंटा पहले आया। पूरा 1 घंटे का सेशन मैंने सुना और बहुत मजा आया मुझे। अब 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे सामने चुनौतियां क्या है।
पहली बार कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद ये जो प्रेस शब्द जुड़ा कि ये 4 संस्थाएं होंगी जो देश को चलाएंगी, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तो थी, लेकिन ये प्रेस शब्द कब जोड़ा गया, इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1787 में पत्रकारों को बड़े पैमाने पर एक सेशन अटेंड करने के लिए बुलाया गया और ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियन थे, पॉलिटिकल थिंकर थे एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने पहली बार 1787 में ये कहा अपने भाषण में, और जहां से सर्वसम्मति से ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियन ने और मीडिया ने इस उनकी आवाज में आवाज मिलाई कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के ऊपर नजर रखने के लिए प्रेस को भी वो सारी शक्तियां दी जाएं और प्रेस को भी बड़ा बनाया जाए, ताकि कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को ठीक से निभा रही है कि नहीं निभा रही है, विधायिका उस पर अपना ठीक से लेजिस्लेचर कानून बना रही है कि नहीं बना रही है, और न्यायपालिका उस पर ठीक से निर्णय ले रही है कि नहीं ले रही है। इसको देखने के लिए एक तीसरी आंख होनी बड़ी जरूरी है, और वो तीसरी आंख 1787 के बाद पैदा हुई। तब भारत में भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, ये चौथा पिलर हमारे लोकतंत्र के आंगन में आकर के खड़ा हुआ, और इसके कारण हमें बड़ी मदद मिली। एक और मुझे बड़े महापुरुष की बात याद आती है, मैं कहना चाहूंगा कि जो अमेरिका के 4 फादर्स हुए, 4-5 जिनको फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा मिली, उसमें एक अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन भी हुए। थॉमस जेफरसन बहुत बड़े आदमी थे। उनका ये एक वाक्य मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करता है कि पहले के जमाने में पॉलिटिशियन कितने उदार और कितने उदात्त मन के थे कि उनके अंदर देने की गजब की भावना थी, छोड़ने की गजब की भावना थी। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हुए जो एक ट्रेन एक्सीडेंट पे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक डॉक्टरों की हड़ताल में लाल बहादुर शास्त्री जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो खुद जाकर के बैठ गए। तो थॉमस जेफरसन ने कहा कि अगर कोई ऐसी सरकार मैं बना रहा हूं जो प्रेस विहीन है, तो मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहूंगा। अगर मेरी जगह कोई भी ऐसी सरकार बना रहा है जहां प्रेस है, तो मैं उस सरकार का हाथ जोड़ के खुले हाथ से वेलकम करना चाहूंगा, बाहें फैला के स्वागत करना चाहूंगा। तो थॉमस जेफरसन को भी, चूंकि अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1976 को, और जो है 1787 में प्रेस चौथा पिलर बन चुका था ब्रिटेन में, और उसके बाद 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में थॉमस जेफरसन ये बात अगर कह रहे हैं और आगे के उनके राष्ट्रपति भी उनकी बात को समर्थन करके बढ़ा रहे हैं आगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि जहां बहुत आइडियलिज्म होता है, कई बार गिरावट भी वही देखने को मिलती है। उसी थॉमस जेफरसन के राष्ट्र अमेरिका में तो बड़े मीडिया हाउस हुए। मिस्टर पुलिजर, जो पुलिजर अवार्ड मिलता है, जो हम सब जानते हैं, पत्रकार है मिस्टर पुलिजर, और उसी के समकालीन एक और अखबार था विलियम हर्ट्ज का। और जब क्यूबा में और स्पेन में, यानी स्पेन जब क्यूबा के ऊपर काफी आक्रमण कर रहा था और अमेरिका उस वक्त स्पेक्टेटर की तरह सारी स्थितियों पर नजर रखे हुए था, उसी वक्त एक घटना घटी कि स्पेन के सी एरिया में एक अमेरिकी जहाज डूब गया, और विलियम हर्ट्ज के अखबार ने उस खबर को इतना बढ़ा चढ़ाकर छापा कि अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा। बाद में ये बात साबित हो गई कि वो बात पूरी तरह से सरासर झूठ थी, उससे स्पेन का कोई लेना देना नहीं था, वो एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था। लेकिन हजारों लोग उस लड़ाई में मारे गए और 2 देशों को युद्ध में उतरना पड़ा। ठीक उसी तरीके से एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो अमेरिका वियतनाम वार को दिखाती कि कैसे आधे कपड़े जले हुए थे एक छोटी बच्ची और सड़क पे चीखते हुए दौड़ रही थी। वो फोटो अमेरिका के अखबारों में छपा, और अमेरिका की जनता ही अमेरिकी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, और अमेरिका को वियतनाम के खिलाफ अपना युद्ध रातों रात रोकना पड़ा।
और उस घटना का, उस जो फोटो का जो कैप्शन था जो हम लोग लगाते हैं कि टेरर ऑफ द वॉर, तो एक कहानी ऐसी है अमेरिका से ही निकल के आती है जो युद्ध करवा देती है, और वहीं से निकल के आई एक कहानी है जो युद्ध रुकवा देती है। और उसी अमेरिका में जहां के राष्ट्रपति ने इतनी बड़ी बात कही, वहीं पीत पत्रकारिता की भी शुरुआत हुई। अब खबरों की विश्वसनीयता पे, और जो चूंकि एक जेटली जी का एक कथन मुझे याद आ रहा है, किसी संबोधन में उन्होंने कहा था कि रामनाथ गोयनका को इंदिरा गांधी इसलिए नहीं झुका पाई कि रामनाथ गोयनका का कोई और धंधा पानी नहीं था। उनका भी अगर कोई दूसरा धंधा पानी होता तो शायद और मीडिया हाउसेस की तरह उन्हें भी बीच का रास्ता लेना पड़ता या अपने कदम वापस खींचने पड़ते। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो इस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउस है और जो इमर्जिंग मीडिया हाउस है उनके सामने भी, कि एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक ने कहा था, मैं बहुत श्योर नहीं, उसके नाम नहीं ले रहा हूं, हमें क्षमा करिएगा, कि हम अखबार के धंधे में नहीं है, हम खबर के धंधे में नहीं है, हम विज्ञापन के धंधे में हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विज्ञापन की कोई किताब या अखबार छाप के घरों में भिजवा दिया जाए तो यहां हम में से बैठे कितने आदमी उसको पढ़ना पसंद करेंगे? एक नजर हो सकता है देख लें, विज्ञापन है तो, लेकिन केवल विज्ञापन होगा तो हम क्यों देखेंगे? उसके लिए और भी मीडियम्स हैं जहां हमें अच्छा लगता है विज्ञापन देखना। अखबार में क्यों देखेंगे? शायद अखबार में विज्ञापन इसलिए छपता है और हम देख लेते हैं कि उसके साथ खबरें भी होती हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। लेकिन खबरों पर भी मार्क ट्वेन एक विचारक हुए पश्चिम के, उन्होंने बड़ा व्यंग किया कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आपके पास जानकारी नहीं है, और अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपके पास सही जानकारी नहीं। क्यों? बहुत लोगों से, बहुत सारी एजेंसियों ने सर्वे किया तो पूछा गया कि दुनिया पहले से अच्छी हुई है कि खराब हुई? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, दुनिया पहले बहुत अच्छी थी और दुनिया बहुत खराब हुई। आंकड़े बताते हैं कि पहले की दुनिया में दुनिया बहुत अच्छी हुई, हम एक बहुत सुंदर दुनिया में जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे एरा में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा लोगों ने क्यों? इसके पीछे एक कारण यह भी है कि लोगों को ये कहीं ना कहीं समझ में आया कि जो न्यूज चैनल, जो अखबार खबरें परोस रहे हैं, वो उनके दिमाग को, उनके सोचने के तरीके को बहुत स्वस्थ नहीं बना रहा है। वो कहीं ना कहीं उनको थका रहा है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में निगेटिविटी को ज्यादा डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर समाचार चैनलों की, खबरों की, अखबारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक स्वस्थ समाज की रचना करें, एक ऐसे लोगों के मन में उत्साह भरें, लोगों के मन में पॉजिटिविटी डालें, अगर हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम केवल निगेटिव या गलत खबरों को परोसने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कहने वाले लोग कोई गलत बात कह रहे हैं। कहने वाले लोग हमेशा ऐसी ही बात कहते हैं जो उनको स्वभावतः समझ में आती है, जो स्वभावतः उनको बात दिखती है। अब जैसे आज के डेट में सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है। मैंने अभी एक संबोधन में बोला था कि जो मणिपुर वाली घटना हुई थी, वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया डेरा डाले हुए था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने वो खबर नहीं दिखाई जो किसी एक आम आदमी ने अपने पोस्ट पर डाला कि 2 औरतों को नंगा करके एक हुजूम के साथ घुमाया जा रहा है। पूरे देश में उबाल आया, सरकार ने उसका संज्ञान लिया, पैरामिलिट्री 65,000 की पैरामिलिट्री की फोर्स डिप्लॉय की गई, चीजें इंप्रूव हुई। दूसरी घटना मैं बता रहा हूं, जब ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में इनकाउंटर करके अमेरिकन मरीन्स ने मारा था, तो वो घटना भी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई थी। उस मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी जो ब्लैकबेरी यूज करता था, उसने ब्लैकबेरी में अपना ग्रुप बना रखा था, सबसे पहले उस आदमी ने उस खबर को अपने ब्लैकबेरी ग्रुप में डाला था। उसके बाद ये बात लोगों तक पहुंची और बहुत बाद में समाचार चैनलों तक पहुंची। तो आज जो कंपटीशन हमारा है, वो इमर्जिंग मीडिया हो या एस्टेब्लिश मीडिया हो, कंपटीशन हमारा
इस मोबाइल फोन से है, और इस सभा में बैठे हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है। जब तक हम पहुंचेंगे, जब तक हम बताएंगे, तब तक यहां बैठा कोई आदमी लाखों लोगों तक या 10,000 आदमी तक, 5,000 आदमी तक जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है यूं डालेगा और पहुंच जाएगा। तो अब चुनौतियां पहले जैसी नहीं रही, चुनौतियां बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, और जितनी चुनौतियां नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेंगी, समाधान भी नेक्स्ट लेवल के आएंगे। जैसे मैं सुन रहा था, साजिया ने पूछा, पता नहीं है कि चली गई, कि एआई से क्या खतरा है। सुधीर चौधरी हमारे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ने वाले लोग हैं और किताब देख के भाषण बांचने वाले लोग हैं, उनके लिए तो वाकई बहुत खतरा है। लेकिन जिनके अंदर कंटेंट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपनी अदा के लिए, स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, उनको खतरा आ भी नहीं सकता। क्योंकि एआई है क्या? एआई हमारे जैसे किसी के हाथ का बनाया हुआ बाई प्रोडक्ट है। अगर मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई, तो मोनालिसा उसके लिए खतरा नहीं हो सकती। उसके हाथ में हुनर है कि वैसी मोनालिसा 1000 उतार सकता है। हाँ, एआई ये जरूर कर सकता है कि मोनालिसा को बढ़िया उतार सकता है, लेकिन अगर उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, उसकी जो प्रोविनेंस निकाला जाए, उसकी जांच की जाए, तो वो मोनालिसा एआई वाली नकली ही निकलेगी, वो असली निकल ही नहीं सकती। तो न्यूज रीडर एक अलग कौम है और जर्नलिस्ट एक अलग कौम है, लेकिन जिसके अंदर जर्नलिस्ट और न्यूज रीडर दोनों क्वालिटी होंगी, उसको एआई से बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है। और ये जरूर है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो ये सवाल आया था कि अब क्या होगा, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोई बेरोजगार नहीं हुआ, बल्कि जिन देशों में सबसे बढ़िया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। तो मेरा तो ये मानना है कि जितना हाइब्रिड मॉडल पे आप जाएंगे, उतना आप तरक्की करेंगे जीवन में। जैसे जिन कौमों ने अपनी जातियों को छोड़ के दूसरी जातियों में शादी करना शुरू की, वो लोग बहुत विकसित हुए, उन्होंने बहुत तरक्की की, उन्होंने बहुत उत्तम ब्रेन पाया। और जो लोग, जैसे आदिवासियों के बारे में मैं कहता हूं कि वो बेचारे सिर्फ एक कारण से, कि वो अपनी टेरिटरी से, अपने जंगल से नहीं निकल पाए, उन्होंने शादी सिर्फ आदिवासियों के बीच की। अगर वो शादी बंबई दिल्ली शहर में आकर के किसी कुलीन परिवार के लड़के लड़की से करते, तो उनके अंदर भी सुपर ब्रेन पैदा होता। और जैसे फारसी बिरादरी में भी मैं कहता हूं कि वो लोग भी बाहर शादी नहीं करते, इसलिए वो सिमटते जा रहे हैं। जिन जातियों ने बाहर निकल के शादियां की, जिन लोगों ने बाहर निकल के अपने बच्चों को शादी करने की अनुमति दी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, उन्होंने एक पॉइंट जीवन में। और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इसी पृथ्वी पर अगर दूसरे ग्रहों से ये मौका मिलेगा कि इस ग्रह के लोग शादी कर पाए, तो एक सुपर ह्यूमन रेस पैदा होगी, एक नई जनरेशन पैदा होगी, जो एक नया इतिहास लिखेगी, एक नई दुनिया बनाएगी। और जो आज का एआई बना है, उससे भी कहीं नेक्स्ट लेवल का एआई पैदा होगा। तो अगर हम इमर्जिंग हैं तो इमर्जिंग हैं, अगर चुनौतियां हैं तो हैं, चुनौतियां नहीं रहेंगी तो फिर जीवन क्या है। और मेरे से पहले शायद संकेत बोल रहे थे कि न्यूट्रलिटी अपने आप में कुछ नहीं होती। मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। कार्ल जूंग एक बात कहता है, पश्चिम को भी बड़े विचारक हुए, कि हम अपनी पार्शियलिटी से कभी मुक्त नहीं होते। यानी हमने जो अपने जीवन में सीखा है, जाना है, जो संस्कार पाए हैं, उससे हम कभी ऊपर नहीं उठते, हम उससे लड़ते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें गलत संस्कार मिले और ये अच्छा है, तो वो पुराना जो संस्कार है वो भी हमारे अंदर इनबिल्टेड होता है, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी सभा में मैंने एक कहानी सुनाई थी महात्मा बुद्ध की, उनकी और जब यशोधरा की मुलाकात हुई थी, तो महात्मा बुद्ध ने भी माना। यशोधरा, जब बुद्ध के पिता ने बुलवाया उनको राज दरबार में, और उनके 10 मित्र जाके संदेशा दे आए थे, और शायद संदेशा बुद्ध तक नहीं पहुंचा, क्योंकि 10 के 10 भिक्षु हो गए बुद्ध से मिलने के बाद। और एक ग्राह्मण को भेजा राजा शुद्धोधन ने कि तुम तो मेरा इतना काम करके आना है, मुझे पता है तुम भी नहीं लौटोगे, लेकिन मेरा इतना काम करके आना
कहना कि राजा सुद्धोधन अपने पुत्र से मिलने के लिए तड़प रहा है। तो शायद उनके एक ग्रहवे मित्र ने यह खबर उनको दी, और जब बुद्ध आए कपिल वस्तु अपने पिता से मिलने आए और एक धर्मशाला में रुक गए जाके, वो हंगामा मच गया कि सम्राट का बेटा आया है वो धर्मशाला, महामंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, सब आ गए। राजा सुद्धोधन भी पहुंचने ही वाले थे कि बुद्ध ने हाथ जोड़ के विनती की कि मेरी एक जीवनचर्या है, मैंने जीवन जीने का एक तरीका 12 साल तपस्या करके सीखा है, मुझे यही रहने दिया जाए, मैं अगले दिन पिताजी से मिलने आऊंगा। अगले दिन पहुंचे वो दरबार में, वो उस पे नहीं जाऊंगा, दरबार में पहुंचे, देखे सब लोग हैं, उनकी पत्नी वहां नहीं थी। तो आखिर में सबसे मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि यशोधरा नहीं दिख रही। मैं यशोधरा और बुद्ध के संवाद को इस दुनिया के इतिहास के कीमती संवादों में से एक मानता हूं, सुनिएगा आप। तो राजा सुद्धोधन ने कहा कि नहीं, यशोधरा ने संदेशा भिजवाया है कि अगर तुमको मिलना है तो यशोधरा के महल में जा सकते हो। उसने इनकार कर दिया है आने से। तो बुद्ध जब सबसे मिल लिए तो यशोधरा के महल में गए, लेकिन बुद्ध बुद्ध क्यों है, ये बात मेरे दिल को बड़ा छूती। जब यशोधरा के महल पे गए तो ऐसे नहीं गए कि दरवाजा हाथ से खोला हो या लात से खोला हो या दरवाजा जोर से पीट दिया हो। जिस भिक्षा पात्र को लेके वो महल में आए थे अपने पिता से मिलने, उसी भिक्षा पात्र को लेके दरवाजे पे खड़ा होके बोले भवत भिक्षाम देहि। जैसे एक भिक्षु किसी के दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होता है। और यशोधरा का भी देखिए शौर्य कि यशोधरा बाहर निकलती है और बेटे राहुल का हाथ भिक्षा के रूप में बुद्ध के हाथ में पकड़ा देती बिना कुछ बोले। बुद्ध वहां खड़ा रहते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे। तो यशोधरा कहती है कि ये महल आप ही मुझे दे के गए थे, आप ही का है, आइए। तो बुद्ध ने कहा कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं रहा, बस इस भिक्षा पात्र के अलावा, और ये भी क्यों है मैं सोचता हूं कई बार, इससे भी मैं मुक्ति चाहता हूं। जो डायोजनीज ने एक कुत्ते को पानी पीते हुए देखा था समंदर किनारे, तो डायोजनीज को लगा था कि ये कुत्ता मेरे से ज्यादा इवॉल्व्ड है, मुझे पानी पीने के लिए भिक्षा पात्र की जरूरत क्यों पड़ती है, उसको धोने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो डायोजनीज ने वो भिक्षा पात्र भी छोड़ दिया था, जो बुद्ध के बाद हुआ। तो बुद्ध और यशोधरा का संवाद सुनिए। जब यशोधरा ने उनको अंदर बुलाया तो यशोधरा ने उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि क्या आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था। छत्राणियां तो अपने पतियों को ये जानते हुए कि युद्ध में जा रहा है, लौट के नहीं आएगा, तिलक लगा करके और आरती करके विदा करती। आप तो मानवता को कुछ देने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए एक इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे थे, तो क्या मेरे ऊपर आपको इतना भी भरोसा नहीं आया कि मैं आपको विदा कर देती अगर मेरे से खुल के बात करते। बुद्ध ने बोला कि जीवन में पहली बार मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। और दूसरा सवाल यशोधरा ने पूछा कि जो 12 साल की तपस्या करके बुद्ध बन के आप लौटे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आप बुद्ध इस महल में रह के नहीं बन सकते थे, बाजार में नहीं बन सकते थे, इसी संसार में रह के नहीं बन सकते थे। फिर बुद्ध ने कहा कि दूसरी बार भी मैं चुप रह गया और मेरे पास उत्तर नहीं था, क्योंकि जब कोई भी बुद्ध ये कैसे इनकार कर सकता है कि बुद्ध महल और संसार में रह के नहीं बना जा सकता, कि परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, जीवन को नहीं समझा जा सकता इसी होटल के किसी कमरे में रह के। हाँ, तो बुद्ध ने कहा अपने प्रवचन में कि पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने पूर्वाग्रहों से बुद्ध बनने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया था। और उन्होंने यशोधरा से अपनी गलती कहा कि हाँ, मुझे बता के जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भी मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं था। मुझे डर था कि औरत होने के नाते तुम मेरे कदमों में जंजीर बन के मुझे रोक लोगी। तो जो मैंने कहा कि हम बीइंग अ जर्नलिस्ट न्यूट्रलिटी की और पार्शियलिटी की, इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं, हम अपने पूरे जीवन कभी भी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाते। होने का कोई उपाय ही नहीं, हम बेहतर होने की कोशिश करते हैं।
और बेहतर होना हम सबका अधिकार है। बेहतर होना इस मानव जाति का अधिकार है। बेहतर होने के प्रयास के कारण ही आज हम जैसे हैं वैसे हैं। 3 लाख सालों के इस मानव सभ्यता के विकास की यात्रा में मैं 6 हिस्सों में इस युग को बांटता हूं। पहला जो गेदरर्स हंटर्स का युग था, आदिम मानव का युग। दूसरा, जब आग का आविष्कार हुआ तो आदमी का जीवन बदला और जीवन के पड़ाव में आदमी के हाथ में सबसे बड़ी ताकत आई। जब हम जंगल में सबसे कमजोर प्राणी थे कीड़े मकोड़ों के बाद, हमने जंगल के सबसे बड़े बड़े जानवरों को डराना शुरू किया। ये दूसरा काल आया और 1 लाख साल लग गए गेदरस हंटर्स और आदिम मानव से आग का आविष्कार तक पहुंचने में। उसके बाद 1 लाख साल के अंदर हमने समूह में रहना शुरू किया। उसके बाद हमने खेती करना शुरू किया। उसके बाद आदमी ने थोड़े बहुत हाथ से बनी मशीनें चीजें बनानी शुरू की। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। उसके बाद फिर सूचना क्रांति आई। उसके बाद XYZ आया। और पत्रकारिता में एक समय जब मैं बोलता हूं थोड़ा सा हो ही जाता है, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। तो एक आखिरी जो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब हमारे दिल्ली शहर में ही 2 हमारी बड़ी समाचार एजेंसियों के 2 संवाददाता बैठे थे कि हम गलतियां कहां करते हैं और क्यों करते हैं। जब 1989 की घटना है, जब जनता पार्टी की सरकार आई और पहली बार राजीव गांधी पे आरोप लगे कि ये मिस्टर क्लीन नहीं है और उसमें बहस चलनी चालू हुई कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो पहले राउंड में चंद्रशेखर जी का नाम निकल के आ गया। एक समाचार एजेंसी के यंग जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने सुनते ही दौड़ लगाई और जाके फोन से बता दिया चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री। चल भी गई खबर। उसके 1 घंटे बाद और वहीं दूसरे समाचार एजेंसी के थोड़ा सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे जिनकी आयु नियर बाई 50 थी और उन्होंने कोई जल्दी नहीं दिखाई। हो सकता है उनके पास इनपुट रहे हो कुछ। थोड़ी देर बाद ये निकल के आया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब होता क्या है कि दोनों घटनाएं सही थी अपनी अपनी जगह, दोनों बातें सही थी। पहले राउंड में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री घोषित हो गए थे और दूसरे राउंड में फिर बात ऐसे पलटी, राजनीतिक समीकरण ऐसे पलटे, समर्थन ऐसे पलटा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह बने और उन्होंने उठ लिया। क्या है कि खबरों की दुनिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है और हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अगर चुनौतियां नहीं है तो जीवन नहीं है और चुनौती विहीन अगर मीडिया हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर मीडिया कर्मी होने का मजा समाप्त हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि रोज चुनौतियां आनी चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए और रोज नया नया फार्मूला नहीं आता, रोज कोई ब्रिलियंट आइडियाज नहीं आते। एक टाइमलाइन होता है जिसमें हम चलते हैं, वो टाइमलाइन है चुनौतियों का, टाइमलाइन है स्ट्रगल करने का। लेकिन इस स्ट्रगल ने हमें जहां तक पहुंचाया है उसके आगे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और स्टार्टअप आज के जमाने का एक नया शब्द है जो मीडिया वालों को भी सीखना चाहिए कि रिसोर्सेस बिखरे पड़े हैं, उनमें से क्या जोड़ करके आप एक नई चीज बना सकते हैं, वही नई चीज आपको उस वक्त में मदद करेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत जोर से ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपने भविष्य और पास दोनों के बारे में ही बात किया बहुत अच्छे से। हमारे पास और टाइम रहेगा तो हम और भी सुनते हैं आपको। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे मिस्टर अभिषेक सोनी फ्रॉम एस्ट्रोसागा एस्ट्रोलॉजी पोर्टल, ताकि वो आए स्टेज पे एंड ही गिव्स अवे द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टू हिम। जोर से ताली प्लीज वंस अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। All right, very insightful session indeed. मजा आ रहा था सबको सुनते हुए। Everybody now, I believe, lost in the thoughts. But again, then we have to move on. And right now we have
a different panel discussion, something very interesting, another interesting topic. The topic right now that we'll be discussing about, earlier, we had a conversation around misinformation. This time it's misinformation. How do you differentiate between news and noise? I'll repeat the topic for all of you once again. This is again about misinformation. How do we differentiate between news and noise? We have some wonderful speakers, some eminent personalities over here. I request Rishabh Gulati, Managing Editor, NewsX, to kindly come up on stage, along with Priya Saigal, Editorial Director, NewsX, and Maria Shakil, Executive Editor, National Affairs, NDTV 24/7. All three of them are honorable speakers. Unke liye zor se taali, please. And we have Shobhini Ganguly, Senior Correspondent, Exchange for Media, moderating this session. Once again, for you over here. Sabke liye please zor se taali bajaye aapko and encourage them in the best way possible. Come on, give it up, ladies and gentlemen. Yes, leading the way over here, sir. Can we have some more appreciation from people at the back? Also, sir. Ah, yes. Raise your hands into it, please. Thank you. Thank you so much, Shobhini. Again, over to you. Thank you so much. And we're towards the end, but we should not, let our energies down. So I was having a chat with Anjana a couple of sessions back about misinformation. And our topic here today, again, is somewhere connected and related to the very same thing about how do you set a distinction between news and noise, right? So I would like to start with Rishabh. Rishabh, what do you define misinformation or this noise as in today's media landscape, and how big of a problem is it today? Okay, so oftentimes when we are trying to establish what the media is for, and I think this matter has been discussed here already, okay? You have two very dedicated journalists sitting with me who've been doing this for decades. What we forget is that when we do professional journalism, and there is professionalism in it, it's a very painful process. Your name is as good as the last bit of information you put. You have to be accurate. You have to be there on the spot. So when we say misinformation, we are being surrounded by misinformation. It is the professionalism of journalism that even though we get it wrong sometimes, and you can get it wrong, you can get things incorrect. The amount of pains that a journalistic organization and a professional journalist puts to get it right, I think is oftentimes discounted, much more so than what's being shared on WhatsApp and what's being shared on social media. So an evolution has to happen. There are several kinds of misinformation, obviously. One is the malified kind, when you're being told something which is obviously wrong with the intention of telling you something wrong. One is unintentional, something that's being circulated, which is a rumor. But I think the very fact that a professional media industry exists, and in the end, push comes to shove when things become bad during COVID, everybody put their TVs back on. When the election seasons are back here, you're going to get a bit out of YouTube and Twitter, but in a large measure, you'll still come back to professional journalists. Gives us some hope that the pains we take is worthwhile. So I'm not going to say that we get everything right all the time, but I can tell you a lot of painful effort goes into making sure we get most things right most of the time. Thank you. Coming to Priya, the very same pain that Rishabh was speaking about, how do you, can you just break it down for us? What does a day-to-day fact-checking process look like, and what are the important things that should go into it? See, actually, and just to take up from where Rishabh has said and to your question, what we are dealing with, because what we're saying is noise, because this one is the news you're getting from the mainstream media. The other is the news that you're getting on social media, citizen journalists. There's a whole lot of news that is coming to you unfiltered, which is why I'm saying even in this age of digital social media, mainstream media still will exist and has a platform and a chance, is because whatever we put out goes through editorial checks. The checks and balance is not there in the
social media or the citizen media who just, puts up a video clip of something he's seen, but the interpretation of that, how it is presented and the context, that is also equally important. That is all part of the noise. How do you separate the news from the noise? I'll give you an example. If I see a speeding car that is going, a BMW, and it kills a pedestrian. So will the news be, it could be, I can say the rich kid's car, I can say it's a, I look at the car, it's a BMW. Obviously the guy who's driving it has money. Is he drunk? Is the boy young, old? You can come to some kind of conclusion late at night, whatever. That kind of news is fine. The minute I say the driver was Muslim and the pedestrian was killed was Hindu, that is noise. That is the mischief. That is something one has to be very careful of how you present facts. That is something you do not see on social media. Social media will first pick on the identity, go troll it. Either they want to present it in a religious point of view, or they want to shame the, whether it's rich, poor, drunk, sober. Some criterias are good, some are not. Some should be really avoided in today's day and age. And I think that is where mainstream media plays a role. Not all channels, unfortunately, are sticking to this, which is really sad in today's world. I mean, that's something one really needs to look within and find out. But by and large, I think a responsible journalist will be careful as to how we present the news. That's important. Yeah, thank you, Priya. I mean, one thing I'm noticing, so to everyone that I've asked this question, is the word social media is coming up a lot, right? And you've been in the industry for quite some time, even when social media had not taken over the world totally, right? So I'll come to Maria. Maria, do you think the rate of misinformation or noise that is out there was similar when social media was not there also, or did social media just have a boom in, add to the boom in misinformation? So if I were to put this in context, in 2005, when I started as a journalist, that was the age of Facebook and Orkut. It was not the age of Twitter and Instagram. So things have changed. At that time, the Sensex was hovering somewhere around 6,000. Right now, it is in the range of 60,000. So you can imagine how much distance we have traveled. But overall, yes, things are different. But I think what is happening right now is also that those who are entering mainstream media are also realizing that mainstream media, a great degree of channels and newspapers have great degree of credibility even today. That's so if a tweet is put out by an NDTV Twitter handle, then all editorial checks and balances would have happened. So, and similarly, if you get a news which may be out from any other handle, you will think twice. You will not be sure about the content because the person behind it, that content is hidden, and he's taken, or he or she has taken, that recluse, I would say, they have hidden their identity. So that's why I say that no matter what, yes, the responsibility on us is far greater, but all is not lost, and still the media retains its credibility. Perhaps in the next few years, we'll realize that the kind of bombardment of sorts which happens on social media in terms of content, because it's free for all, everybody can talk about it in their own way. I feel that social media is great for opinions, but when it is about information, I'm not too sure about it. There has to be a great degree of understanding that those of us who are putting it out have gone through checks and balances. We have gone through multiple layers of checking and cross-checking with our sources, and then putting that out. So there is a difference between what is being put out by, say, a news handle versus what is being put out by an anonymous Twitter handle. Very well said. I mean, I want to open this question up to the entire panel. What would you advise people in this room who are regular consumers of news? What news should they trust, and what should they look for so as to avoid the likes of WhatsApp University things that we hear about? Rishabh, we can start with you. You can't help it when you're going to receive information, and the information from WhatsApp generally comes through trusted sources, right? It comes from friends, it comes from family. You forward it on, and those people trust you, so your trust carries along with it. But it is systemic, right? If I am going to a legal proceeding, I might have some commoner's knowledge of the law,
but every technicality won't be known to me. I will muck it up after a point of time. If I'm a doctor, I might have some common knowledge of when to have a paracetamol, but when it comes to life and death, I don't want to risk it, right? And trust my common knowledge it's a very delicate and probably risky thing to do, unadvisable for most people. So just to pick up, and you'll find consensus here. The reason you'll find consensus here because the noise is out there already. You're surrounded by noise. You put on YouTube or Netflix, half of the time you're just figuring out what you want to watch. There is too much content. It's not a problem just for news people. Netflix is facing problem in how to figure out monetization of content. HBO is facing this problem. CNN is facing this problem. And so are we here in India. The noise is already out there. At the end of it, when push comes to shove, and I just give you two examples. When everybody was stuck and a lockdown was being announced and a pandemic had been announced, what were you relying on? Did you put your television back on? Were you watching TV? Were you watching TV news? Or were you relying on Twitter and WhatsApp and YouTube for all your information? If you find that you were relying on TV, you are relying that you went back to the people that you trust. Similarly, during elections, everything will happen, but on election counting day, will you be watching it on YouTube? You might be watching a news channel on YouTube, okay? But you'll probably come back to the mainstream. So for all the people who are worried about the future of media, and I'll end with that thought. It was said the print media is dead, but now on your mobile phones, everybody's reading again. Then it was said radio is dead. Now podcasting is everybody wants to jump in and start their own podcast. So audio is back. TV is also reinventing itself, and there is an evolution that is taking place. Indian media industry is not very old. It's about 2 decades old. Most of us have been in and around that for about 2 decades, 3 decades, certainly not more than that. NDTV itself is the oldest, 30 years now. Okay, so that's it. All right. So compare it to how we compare ourselves to a Western TV industry, which is 80, 90 years old. So it's evolving. Of course, content has evolved very rapidly, but there is so much content. Everybody is a content creator. So when you open things, you want to be governed by an algorithm deciding what you get to watch, or at least you want a human being applying their mind on what you should be watching. I'll leave it at that. Thank you, Rishabh. Priya, coming to you, in the last couple of sessions, there was the term of deep fakes and AI coming up a lot, and audience questioning the speakers on the stage about the risks that they come with regards to misinformation. So what would your take be with, the growth of these likes of deep fakes and AI? How do you think misinformation can be curbed? Because there's a lot out there. People putting others' faces and showing as if they are saying things, right? How do you think that should be curbed? Well, we're lucky we're living in the age of branded personalities. News is not news. It's not just Times Now or NewsX or NDTV. It's also whether it is Maria, Rishabh, or whoever, the anchor is becoming you. We don't say kahan suna, we say kisse sunaya. You always say so-and-so said it, and then you decide whether you trust that anchor or you don't trust that source. And which is why I think Anjana before us was saying that whenever the PCR tells her something, she first verifies it for herself because it will be attributed to her that she has said it. So your source is very, very important in terms of deep fake, which is why I would say that that so-and-so is an anchor. So if that same anchor is being shown in a deep fake, doing an ad for a you should, I think the public at large knows that, this is the anchor, the credibility of the source is that she would not be doing it. So in the end, the buck stops with us. It's the kind of credibility we project to our viewers, the kind of trust we build with them, because we are talking to our viewers every single day. We are there in your, drawing rooms, living rooms, on your telephone. So we have most intimate connection. You know us as well as, better than we know you, because you are seeing us, you are judging us also. You are seeing our news, you have a consistent relationship with us. We switch channels, but we remain the same. So that way, I think the best way to battle deep fake is your own personality, credibility, and your consistency, which is something we, as news reporters, anchors, we have to, if you're not true to yourself, you're going to be your biggest loser
yourself. So at the end of the day, look twice before you say something or you read out something, because that's going to come back and haunt you, especially now where every word is recorded and set back. And if I may quickly add one thing, what Rishabh said during COVID, I think was the finest hour of television and mainstream media was during COVID. And just when COVID ended, came our worst hour, the Sushant Singh Rajput case. How badly we fell. During COVID, we were so reliable. We were giving the right information, medicines, vaccinations, where to go, where not to go. Minute a sensational thing happened, most channels lost it. And that was really, really sad. From there, we came crashing down. That's something we have to introspect. Right. As we're closing in towards the end, Maria, I have one last question for you. What role do you think journalists play in sort of educating people about media literacy, right? And how, journalists can sort of influence people to, sort of consume the right kind of content and right kind of news, if I were to say. Yes, so there is a difference between a journalist or an influencer or a journalist or a content creator, right? So we know that. I mean, there's you may have a different terminology, but then journalists are because of the institution we represent. And increasingly what we are seeing, we have seen that in our respective journeys, that when we started as journalists, we were supposed to be specialists. So a beat was given and you would nurture it, you would interact with politicians or bureaucrats, or try and ensure that you know the right set of people in the right set of places. That's why when you grow as an individual in the profession, your credibility increases because your source building has happened. I would also say that in the present generation, because of social media, there is this instant fame which comes. One tweet, one story, and you become a star. But then it's also about sustainability. I mean, you're continuing to sustain yourself as a credible journalist only because if you break stories, you continue to do it. Election after election, you continue to do your ground reports. That's what distinguishes overnight phenomena with someone who has been there, seen there, around, who can refer to, in the election programming, you'll hear repeatedly by journalists who will talk about what I saw in 2014, what I saw in 2019, because you'll be going back in time and talking about it. So I think that is what the present journalism or journalists are bringing on the table. A number of them are there across media who have been around. They are bringing energy and experience, and they're talking about it by not carrying that prism of ideology or by prism of propaganda. There are a number of them who are there on the ground by saying and following the basic principle with which we all began, which was about seeing it and saying it. So what you see is what you say. Wonderful. Thank you very much, Maria. Do we have time for questions? Unfortunately. Okay. If anyone has question, I think our speakers will have to take it offline. Thank you so much. I think that was quite a good discussion on separating news from noise. Thank you very much. I request all of you to kindly wait, and I request Shohini to kindly give away the token of appreciation to all of them. I believe the mic is not working, but then my voice is loud enough. Yes. Okay. Yes. Perfect. Thank you so much, all of you, for sharing your wonderful insights and information. I believe there was a lot of reliable information on misinformation. So kudos to them. I request the team to kindly clear this.
I know the awards are set to happen in the evening and we're coming towards the end. I believe energy में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, right? आप लोग मुझे दिखा दो एक shout out देके for Exchange for Media that there's no dearth when it comes to energy. Give it up for Exchange for Media. Thank you so much. Stage is set and clear. And on that note, it's an honor and privilege to call our next guest for a very special keynote session. Ladies and gentlemen, please give it up for Saurav Dwivedi, founding editor, The London Top. I have been waiting for a long time to hear him. Sir is over here. Thank you so much, sir, for joining us. Pleasure. तालियों की गूंज मुझे सुनाई नहीं दी, थोड़ा और लोग से हो सकता है क्या? Yes, thank you. भाई साहब यहाँ पे एक कागज रखा है, सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज रैप अप। शास्त्रों में इसको कॉमिक रिलीफ कहा गया है। आप सब लोग बहुत विद्वान लोग हैं और उन्हीं विद्वान लोगों की विद्वता के बारे में एक्सचेंज फॉर मीडिया छापता भी रहता है, इनाम भी देता है। तो मुझे वाकई नहीं पता कि मैं कौन सी नई चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। और असल बात तो ये है कि आप ही सब लोगों को देख के सुन के ये सीखा है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, दोनों ही चीज़ें। डिजिटल पे कुछ नए आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाएं, कुछ नए आपको भाषण या थ्योरी टिका दी जाएं, उनके अब ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मंच से बोली जाती हैं असल में वो उतनी सत्य होती नहीं है। पर जैसे ही हम माइक के सामने आते हैं हमें लगता है कि हम कितनी सुंदर बातें कह दें, क्योंकि रोशनी की चकाचौंध में हैं, कथित रूप से सफल हैं, और सामने जो हैं या जो कि नहीं है और कैमरे के बाद होंगे, वो हमसे किसी चमत्कारिक मंत्र की उम्मीद कर रहे होंगे, बहुत ही विद्वतापूर्ण बात की उम्मीद कर रहे होंगे, एक ऐसी सार गर्भित बात जिसको सुन के लगे वाह यही है असली सत्य। जबकि सत्य ये है कि हमें खुद नहीं पता कि चीजें हो कैसे रही हैं। जितनी दफा हम ग्राउंड पर जाते हैं, जैसे कि सोमवार से जाना शुरू करेंगे, उतनी दफा हमारी स्थिति एक उत्सुक विद्यार्थी सी होती है जिसका एक मकसद तय होता है कि कुछ सीखने के लिए जाना है और बर्तन खाली लेके जाना है। बाकी पता नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड पे रियलिटी जब मैं आपसे मुखातिब हूं लगातार बदल रही है। हम कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में जाते हैं, सोशल मीडिया के दिग्गज समझाते हैं शॉर्ट कंटेंट बनाइए, आजकल रीलें बहुत चल रही हैं, पर हम 3 घंटे की वीडियो बनाते हैं वो भी खूब देखे जाते हैं। हम लोगों को कहा जाता है कि चीजें क्लिक बेटिश मत रखिए। जब बहुत सार गर्भित चीजें बना देते हैं और उनके थंब टाइटल पर्याप्त आकर्षक नहीं होते हैं तब चीजें नहीं चलती हैं। तो आधा दबाव एल्गोरिदम का है, आधा दबाव दुरुस्त बिजनेस का है, और पूरा दबाव अच्छी जर्नलिज्म करने का है। और सबसे ज्यादा दबाव इस बात का है कि जब दिन बीते तो खलीते में जो हिसाब हो वो ऐसा हो कि घाटे में ना लगें, और ये ना लगे कि आज कुछ बदमाशी करके आए हैं, कुछ चीट करके आए हैं, या किसी के प्रेशर में गाढ़े को हल्का और हल्के को गायब बता दिया। लल्लन टॉप में या इंडिया टुडे हिंदी में हम लोग यही कोशिश करते हैं। कितनी सफल है ये हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, या उन सांख्यिकी विदों पर जो नंबर्स का आकलन करते हैं और उसके हिसाब से बताते रहते हैं कि इस महीने आपके 350 मिलियन व्यू हो गए यूट्यूब पे, इस महीने 500 मिलियन हो गए। पर वो नंबर भी पूरा सच नहीं बताते हैं, ना ही डेमोक्रेसी में और ना ही किसी न्यूज के इकोसिस्टम में। कभी आप हिसाब लगा के देखिए कि देश में अगर कुल 100 लोग हैं तो वोट डालते हैं 57 या 58। एक 77 का उदाहरण छोड़ दें तो हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत दुरुस्त नहीं रहा। उस 57 और 58 लोगों में 44%, 40% जिसको वोट मिल जाता है वो सरकार बनाता है। फर्स्ट पास द पोल वाला जो हमारा सिस्टम है 1952 से यही सिस्टम चला रहा है। ऐसा नहीं कि ये 2014 से या 2004 से शुरू हो गया हो, इससे पहले कि कोई निहितार्थ और निकाले जाएं। और उसके आधार पे ये तय होता है कि ये जो एक खूबसूरत सी व्यवस्था है जिसे उर्दू जमहूरियत कहते हैं, हिंदी वाले लोकतंत्र कहते हैं,
अंग्रेजी वाले अलग अलग तलफ्फुज के साथ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये काम कैसे करेगी, इसकी नुमाइंदगी कौन करेगा। और यही नियम हमारे न्यूज के बिजनेस पे भी लागू होता है, क्योंकि जो नंबर हमें अपने पेरेंट प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं वो हमारे कंटेंट की असल रीच को नहीं बता पाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमने कोई इंटरव्यू अपलोड किया और 24 घंटे के भीतर उससे बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म रीलें काट के डाल देते हैं, आप भेजते रहो स्ट्राइक, या इस बात पर खुश होते रहो कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि बहुत सारे लोग उससे रील्स, शॉर्ट्स या चंक्स काट के उसको पोस्ट कर रहे हैं। सो बोथ वे सिचुएशन। मुझे उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार के साथ हम इस समस्या से भी दो चार हो लेंगे, पार पा लेंगे। कुछ ही मिनटों में यहाँ अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, ज्यादातर लोगों को उसी का इंतजार है, लेकिन हर तरह के उत्सव के पहले कुछ गुरु गंभीर लोगों को आके भाषण देना ही चाहिए। उसी रस्म का अनुराग बत्रा जी यहाँ पालन करवाते हैं, इस मंशा के साथ कि शायद ऑडियंस में बैठे व्यक्ति को कोई ऐसी बात पता चल जाए कि अगली दफा वो जो धातु की बनी 3 रंगों की सुंदर सी ट्रॉफियां यहाँ बांटी जाती हैं, उनमें से किसी एक पर उनका और उनके संस्थान का नाम अंकित हो। जो भी आज के विजेता हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में ज्ञान पहले से बहुत है, हमसे कोई ज्ञान मांगने आता है तो हम कहते हैं इकलौता ज्ञान दे रहा हूं कि अब ज्ञान मांगना बंद कर दो, अमल करना शुरू कर दो। हमारी मेंटर हैं, इंडिया टुडे ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ हैं कलीपुरी जी। उन्होंने हमसे 1 बरस पहले ये एक बात कही थी जो बड़ी हमें कमाल की लगी, वो आपके साथ साझा कर देता हूं चूंकि मंच पे बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास, और ये वो पढ़ के आई थी एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, तो उनके प्रोफेसर्स ने अलग अलग उदाहरणों के जरिए ये बात साझा की थी। दुनिया में बहुत सारे कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन वो आइडिया ग्राउंड पर नहीं आ पाए। दुनिया में बहुत सारे कुछ कम कमाल आइडिया हैं, लेकिन वो आइडियाज जिनको सूझे उन्होंने बहुत मेहनत से उसको हकीकत में तब्दील कर दिया। वो सिर्फ ज्ञान पर नहीं अटके रहे, उसको एक्शन पर लेके आए। जो कमी पेशी रही उन बग्स को फिक्स किया और वो ज्यादा सफल कहलाए, क्योंकि उन्होंने सोच से एक्शन की, कर्म की दूरी तय कर ली। हम लोग अपने न्यूज रूम में इस समस्या से रोज 2-4 होते हैं, आप लोग भी होते होंगे, और इसके नए नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजते हैं। पर मुझे लगता है दिस इज द हाई टाइम जब हम नए सिरे से भारत के लोकतंत्र की, भारत की, बदलते भारत की, जो कि हजारों वर्षों से बदल ही रहा है, यही इसकी खूबसूरती है। ना धरती अपनी धुरी पे घूमना भूलती है, ना मुल्क बदलना भूलता है। उन सच्चाइयों को जितना ज्यादा जमीन पर जाकर देखें, सोचे समझें, उतना अच्छा है। हमारे मार्केटिंग वाले भाई साहब ने एक और बात कही थी, जो कि मैंने आपसे कहा कुछ सही बोल दूं। उनने कहा था यहाँ जाना जरूरी है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री के लोग आते हैं, तो यहाँ पे ज्ञान देने का कुछ फायदा रहता है। तो इंडस्ट्री के लोग इस बारे में सोचें कि वो परंपरागत जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अखबार, टीवी, उन पर इश्तेहार देते रहें, क्योंकि वो सब जगह चलते हैं। मैं यहाँ खड़े होकर टीवी अखबार की बुराई नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि मेरे पास बुराई करने को पॉइंट नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे सामने मेरे एक और मेंटर सुप्री प्रसाद जी बैठे हैं। सामने बड़े भाई को कुछ नहीं कहना चाहिए और पीठ पीछे तो कतई नहीं कहना चाहिए। आप अखबारों में, टीवी में इश्तेहार देते रहिए, क्योंकि ये क्रेडिबल न्यूज सोर्स हैं। इनकी अपनी अपनी आलोचनाएं हैं, पर वो डिजिटल की भी हैं। पर मुझे लगता है कि एडवर्टाइजर्स को भी नए सिरे से डिजिटल की जिन एल्गोरिदम के भरोसे वो हैं, उनसे बियॉन्ड जाके ये देखना चाहिए कि जमीन पर कौन से ब्रांड्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है और जिनके ऊपर दाम या वाम का, दाम का मतलब पैसा नहीं होता है, संस्कृत में दाम का मतलब दक्षिण होता है, जिनके ऊपर दाम या वाम का ठप्पा नहीं लगा है। कौन से लोग हैं जो ये भरोसा हासिल करने में अब तक सफल रहे हैं कि कुलजमा बात सही कहता है, खरी खरी कहता है, और किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोता है। क्योंकि एज एन एडवर्टाइजर आप भी ऐसे ही ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करना चाहेंगे। लॉन्ग रन में पब्लिक को पता होता है कि तुम गुरु चाकरी कर किसकी रहे हो और निर्देश किससे हासिल कर रहे हो, तुम्हारा न्यूज एजेंडा कहां से आ रहा है। तो जब पब्लिक को पता ही होता है तो हम लोग भी अपने पते दुरुस्त कर लें, और जब कभी पब्लिक के सामने जाएं तो हमें शर्म से सर ना झुकाना पड़े, ऐसी पत्रकारिता करते रहें, जो कि हम में से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इट्स वेरी इजी कि किसी मंच पर आके कह दिया जाए कि मीडिया ऐसा हो गया है, मीडिया वैसा हो गया है। हम लोग एक दूसरे को क्या ज्ञान देंगे, हमें भी पता है, आपको भी पता है बिजनेस कैसे चल रहा है,
किन्हीं भी किस्मों के दबाव कैसे हैं और इन सब के बीच कैसे अच्छी पत्रकारिता अभी भी की जा सकती है। आप में से तमाम लोग, तमाम संस्थान कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुराग बत्रा जी ने मुझे मंच दिया, समय दिया, उनको बहुत धन्यवाद। ईश्वर उनकी शोहरत और उनके स्वास्थ्य को यूं ही दुरुस्त रखे। शुक्रिया। और जोर से ताली होनी चाहिए कि नहीं? बस जैसे ही मैं बोलता हूँ तालियों की गूंज और बढ़ जाती है। वाह, थैंक यू सर। प्लीज रुकिए, मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे जनार्दन पांडे जी को, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नेट वैल्यू मीडिया, टू काइंडली गिव अवे द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू सर। एंड ये जो मोमेंट है इस पे और जोर से ताली होनी चाहिए। कम ऑन, परफेक्ट फ्रेम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छी पैकेजिंग के साथ। All right, long day indeed so far. There's a long way to go, of course. कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट दिल्ली में ही आके बोल रहा हूँ, मजा आ रहा है बोलने में। But on that note, we have the final and the ultimate session right now going forward before we move ahead with the awards. This is going to be, ladies and gentlemen, a fireside chat with the one and only Supriya Prasad, news director at Aaj Tak, India Today and GNT. And she's going to be in conversation with Pankaj Sharma, editor, Samachar for Media. इन दोनों के लिए प्लीज सबसे ज्यादा जोर से ताली होनी चाहिए. The ultimate session of the day it is. Can you please clap loudly, ladies and gentlemen, for both of them? Sir, yes. Give it up for Mr. Supriya Prasad and Pankaj Sharma once again, ladies and gentlemen. So the stage is all yours. नमस्कार, न्यूज नेक्स्ट के मंच पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं आज तक इंडिया टुडे और जीएनटी के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद जी। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले हमारा एक छोटा सा सवाल था कि मीडिया में आप लंबे समय से हैं और आपने मीडिया को तमाम रूपों में बदलते हुए देखा है, तो इन पिछले एक दशक की बात करें तो इन बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं? कौन से बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं मीडिया में? मीडिया जैसे आप बाकी चीजों में बदलाव देख रहे हैं, जैसे समाज बदलता है तो सभी चीज बदलते हैं, फिल्में हो, मीडिया हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये सारे समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आपका समाज बदल रहा होता है तो आप उसको उसी तरीके से बदला हुआ देखते हैं। और इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जो राम मंदिर का निर्माण है, अभी जब हम लोगों ने 95 में शुरू किया था तो 95 में राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद शब्द लिखने पे आपत्ति थी। माने उस समय उसका एक एक वर्ड को मॉनिटर कर किया जाता था कि ये लिखना है कि नहीं, ये बोलना है कि नहीं, उस शब्द पे आपत्ति थी। और वो होते होते आज मैंने जब 2024 में बैठा हूं तब लोग यहाँ पे जय श्री राम के नारे मीडिया के लोग लगा रहे थे, जय श्री राम लिख के गाड़ी में घूम रहे थे। तो वो आप देख सकते हैं कि समाज कितना बदल चुका है और व्यवस्था कितनी बदल चुकी है। तो धीरे धीरे बदलाव सभी जगह देखने को मिलता है। जी, उसी तरह से जैसे आपने बताया डिजिटल अब आ गया, आप भाषा की बात करते हैं क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है। डिजिटल आजकल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में टीवी चैनल्स को आपकी नजर में प्रासंगिक को बनाए रखने के लिए, दर्शकों से जुड़े रहने के लिए किस तरह के स्ट्रेटजी पर काम करने की जरूरत है? नहीं, काम देखिए, कोई भी व्यवस्था हो उसमें सबसे जरूरी है कि हम लोग क्यों हैं। चाहे वो अखबार हो या टीवी हो या डिजिटल हो, कुछ करना चाहते हो, सबका बेसिक पर्पस होता है न्यूज। और न्यूज का जो पूरा अध्याय है, न्यूज की जो शुरुआत होती है वो किसी भी समय क्रेडिबिलिटी से होती है, विश्वसनीयता उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए भरोसा होना चाहिए, लोगों को भरोसा जिस पे आएगा तो वो भरोसा जो डिलीवर कर पाएगा वो सक्सेस सिस्टम में सक्सेसफुल होगा, चाहे वो किसी भी माध्यम में हो। तो चाहे आप वो किसी अखबार की बात कर लें, जो लोग पढ़ते आ रहे थे वो अभी भी पढ़ते हैं, जिनको आज तक देखने की आदत है वो अभी भी आज तक देखते हैं, जिनको डिजिटल में कोई लोग इंडिविजुअल पसंद है या कोई पसंद है वो उसको वहां जाकर देखते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आपको सभी चीजों में एक बदलाव की जरूरत है। आप यदि स्थिर रहेंगे, मैं आपको बताऊं जो आज तक का जो सक्सेस है, आज तक क्या है, समय के साथ अपने आप को बदलता रहा है।
तो ये आपको जरूरी है कि आपको समय के साथ बदलते रहना पड़ता है, चाहे किसी भी मीडियम में रहें, लेकिन उस मीडियम को समय के साथ बदलते रहना पड़ेगा। मुझे याद है यहाँ पे आबे जी बैठे हैं, उनका आइडिया होगा, जब अखबारों में शुरुआत हुई थी तो कलर फोटो छापने को लेकर भी काफी विवाद था। ब्लैक एंड व्हाइट शुरू हुआ था, कलर फोटो फर्स्ट पेज पे छपेगा, अंदर नहीं छपेगा, वहां से दौर। लेकिन जिन लोगों ने उस बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट किया वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए। उसी तरह टेलीविजन में जब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज था, उसको जब पहली हेडलाइन बना दी तो लोगों ने इसमें सवाल खड़े किए कि ये पहली हेडलाइन नहीं हो सकती, क्रिकेट कैसे पहली हेडलाइन हो सकती है, लेकिन हमने बनाया उसको। तो वो जो बदलाव चेंज किया, जो आप जब समय के साथ चेंज करते रहते हैं तो वो आप सस्टेन कर जाते हैं किसी भी माध्यम में हो। लेकिन जब आप अपने आप को एक रिजिड रखेंगे, आप वही सोचते रहेंगे कि नहीं रोटी सब्जी ही खाना है, पिज्जा खाना नहीं है, तो आप गलतफहमी में है। जब समाज में लोग पिज्जा भी खा रहे हैं, छोले भटूरे भी खा रहे हैं, तो आपको उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ये भी खाना है। आप सोचते रहे नहीं रोटी सब्जी खा के जीवन गुजर जाए, तो ये नहीं होने वाला है। आपके बच्चे ही आपके साथ खाने से मना कर देंगे। अभी सब जैसे आपने क्रेडिबिलिटी की बात कही है, हर आदमी चाहता है कि उसको क्रेडिबल जानकारी मिले, सच्ची सूचना मिले, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक संस्थान कोई उसी सूचना को दूसरे तरीके से दिखा रहा है, दूसरा उसी को दूसरे से दिखा रहा है, तो ऐसे में दर्शक असमंजस में रहता है, यार किस चैनल पर भरोसा करें, उस चैनल पर तो फलाना उस तरह से दिखा रहे थे, उस पर इस तरह से दिखा रहे थे। यही यही चीज होती है ना, भरोसे की वही मैं बात कर रहा था। ये जो लोग सोचते हैं, कई बार क्या होता है छोटे गोल के लिए, छोटे छोटे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने छोटे से काम के लिए गलत खबर चला लेते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो उस बात को नहीं सोचते हैं कि हमें लंबे लॉन्ग रन में इसका नुकसान होगा। और ये काम इसीलिए जो आज तक आज सक्सेसफुल है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसने ये छोटे छोटे माने हरकत नहीं की जो छोटी छोटी कामयाबी के लिए, छोटे सक्सेस के लिए करते हैं कि चलो थोड़ा सा व्यूज बढ़ जाएगा, अभी थोड़ी सी टीआरपी बढ़ जाएगी, अभी ये ऐसे चला दो, थोड़ी देर गलत चला दो। हम लोग बार बार इसीलिए खबरों को बार बार फिल्टर करते देखते हैं। इसीलिए जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो 25 लाख लोग आज तक देख रहे थे, बाकी लोग दूर दूर तक कहीं नहीं थे, क्योंकि लोगों को क्रेडिबल न्यूज चाहिए था, तो क्रेडिबल देखने आते हैं। इसीलिए वो बाकी चैनल सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कई बार छोटी चीजों के लिए गलत खबर चला के, गलत हथकंडे चला के वो चाहते हैं सक्सेस का रास्ता ढूंढना। वो रास्ता गलत रास्ता है। मैंने किसी के लाइफ में भी यदि आप छोटी मैंने जल्दी कामयाबी के लिए कुछ गलत तरीका अपनाना चाहते हैं या गलत रास्ते से जाना चाहते हैं, तो वो आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनने देगा। आपको हमेशा लंबी रेस का मैंने घोड़ा होना चाहिए, आपको लंबे प्लान करने चाहिए, आपको अपने गोल सेट करके उसके लक्ष्य पे सही तरीके से बढ़ना चाहिए। गलत रास्ते से बढ़ा हुआ, चाहे खबर दिखा के हो या कुछ भी दिखा के हो, गलत रास्ता अपना जब भी जाता है तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अभी और आपने जो एक बात कही थी कि लोग अल्टीमेट देखने जाते हैं, लेकिन इस तरह के आरोप लगते हैं कि आजकल टीवी चैनल्स पर न्यूज की जगह दूसरे ले ली है। तमाम चैनल्स पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि न्यूज दिखाए जाते हैं, न्यूज की जगह कम है। मतलब नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो 7 से 12 बजे न्यूज चलता है। हमारे यहाँ कोई डिबेट नहीं होता है शाम में, 2 डिबेट 5 और 6 बजे होता है, उसके बाद डिबेट नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि व्यूज भी लोगों की पसंद है, लोग वो भी जानना चाहते हैं। व्यूज भी लोगों को आजकल ये अच्छा लगता है कि मैंने 2 तरह के लोग, किसी विचार पे हमें 2 पक्ष मिल रहा है सुनने को, तो इसलिए वो व्यूज या डिबेट उससे कोई मैंने कोई गलत नहीं है। यदि न्यूज पे कोई व्यूज आ रहा है या हमें पता चल रहा है यहाँ फलाना है, तो आदमी को नॉलेज बढ़ रहा है। आदमी यदि हर तरह का व्यूज ही सुन ले कि इसका इस पे इसका ये पक्ष में ये व्यूज है, खिलाफ में ये व्यूज है, या इसका ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ये है कि कोई ये बोल रहा है कोई ये बोल रहा है, तो आपको एक नॉलेज ही बढ़ता है, आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, आप ये दोनों पर्सपेक्टिव सुन पा रहे हैं। यदि आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव आ रहा है, चाहे न्यूज के रूप में आ रहा हो, डिबेट के रूप में आ रहा हो, या किसी भी रूप में आ रहा हो, उसमें कोई वो न्यूज का ही हिस्सा है, उसको आप अलग नहीं देख सकते हैं। एक प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। वही मैं बोल रहा हूँ, क्लासिकल तरीके से आप अगर सोचे कि नहीं ठीक है हमें एंकर और तहकीक जो हमारा टिपिकल तरीका होता था वही न्यूज है, तो वो न्यूज नहीं है, जरूरी नहीं है उसको। आप उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में भी दे सकते हैं। अब उसको आदमी को जिसको देखना है, उसको पसंद करना तय करना है, उसको डिबेट के रूप में अच्छा लगता है, उसको स्टोरी के रूप में अच्छा लगता है, या वो किस रूप में अच्छा लगता है। अच्छा सर, अभी क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी आती है, तमाम चीजें और आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब बात चल रही है टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तमाम न्यूज चैनल्स में अपने AI से न्यूज पढ़वाना और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? शौकी है या अफसर है कि तमाम अभी एक बढ़ता ही जा रहा है? और दूसरा एक चीज है कि ये भी मान रहे हैं कि यार जितना AI बढ़ता जाएगा, AI करा जाएगा, तो बाकी सबके लिए नौकरियों पर संकट आ जाएगा। इस तरह की तमाम बातें चल रही है, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो कंप्यूटर जमाना था, तभी से माना जाता है कंप्यूटर आ जाएगा तो नौकरी चली जाएगी। तो ये कंप्यूटर और AI दोनों अपने अपने समय की खोज है।
तो एआई जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। लेकिन एआई एंकर आने से किसी भी एंकर की नौकरी नहीं जा रही है। एआई एंकर का एक लिमिटेड रोल है, जो लिमिटेड काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी नहीं कर सकते। और हम लोग उसको अच्छे पॉजिटिव रूप में उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। सबसे पहले आज तक ही एआई एंकर को लेकर आया, और एआई जो है वो किसी भी रूप में किसी भी एंकर को खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, उससे हमें बहुत सारी चीजें, जैसे अब आप देखिए कि हमारे एक ही तरह के बुलेटिन के जो है हम 7-8 लैंग्वेज में एक साथ भेजते हैं। अब आप हमारे ब्लैक एंड व्हाइट को 7-8 लैंग्वेज में सुन सकते हैं। आप जो लोग साउथ के लोग हैं ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी में नहीं सुन सकते थे, उनको हम उनकी भाषा में पहुंचा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो एआई का जो पॉजिटिव इस्तेमाल है वो सोचना चाहिए, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से फायदा तो है सिस्टम को। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी की बात करें तो चैट जैसे मतलब नाम लगा चैट जैसे प्लेटफॉर्म है, तो उससे पत्रकारिता किस तरह से प्रभावित हुई है? लोग आते हैं, उन्हें ठीक है थोड़ा सा इनपुट ले गए, तो डाला और वो इंटरनेट पर सर्च किया, उसी पे लिख दिया, उन्हें हो गई न्यूज। तो किस तरह से पत्रकारिता को प्रभावित कर रहे हैं इस टाइप के प्लेटफॉर्म? देखिए, वो तो मैं बोला ना कि आप कोई गलत तरीका जो है उसको आप सही नहीं बता सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता ना। कोई आदमी पॉकेटमारी करके पैसा कमा लेता है, इसका मतलब थोड़ा है कि उसको बोलेगा ये मतलब पॉकेट काम लेता है, पैसा ले आता है, उसका हो जाता है। वो तो आदमी की फितरत होती है, जो आदमी गलत करता है वो गलत करता है, लेकिन जो मेहनत करके, जो अच्छे काम करके, जो अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं, माने वो सक्सेसफुल होते हैं, वो कामयाब होते हैं, और उनके लंबे से चलता है लंबे समय तक। अच्छा, एक और सब संकट जो अभी तक गहराया हुआ है कि बीच में दौर आ गया कि इस तरह के वीडियो वगैरह बनने लगे, फेक न्यूज। तमाम सरकार अपनी फैक्ट चेक यूनिट भी बना रखी है, पीआई बना रखी है, लेकिन इसके बावजूद उस पर टेक्निक पे एक तो लगाम नहीं लग पा रही। और कई बार क्या होता है कि फैक्ट चेक यूनिट की उस पर भी आरोप लगते रहते हैं कि बोले यार फैक्ट चेक यूनिट ने खबर कोई अगर चेक की है तो उसी पे आरोप है कि यार ये तो गलत चेक हुई है। तो कैसे उसको हम सही करके मानेंगे आज के समय में? नहीं, फैक्ट चेक तो सही काम करता है, लेकिन फैक्ट को चेक भी तो करे कोई। एक्चुअली क्या है, लोग फैक्ट को मानना नहीं चाहते हैं। लोग अपने हिसाब से, जर्नलिस्ट अपनी बात को सही मानते हैं, चेक नहीं करना चाहते हैं। या कुछ लोग हैं जो जानबूझ के गलत खबर चलाना चाहते हैं बिना फैक्ट के। वो चाहते हैं कि उनका वो प्रोपेगेंडा हो या जो फेक न्यूज है उसको प्रमोट किया जाए। तो ऐसे लोग करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए हमें उस बात की चिंता नहीं है। हम लोग पूरी तरह से ध्यान रख के खबर चलाते हैं। अच्छा, न्यूज चैनल्स पे आरोप लगते रहते हैं कि बोले यार डिबेट शो पे गर्मा गर्म बहस दारू इसलिए किए जाते हैं और बाकी समाज के जो आम मुद्दे हैं वो थोड़े से पीछे खिसक जाते हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो कैसे इस पर क्या किया जाना चाहिए कि उस पर आम मुद्दों पर भी चर्चा की जाए, केवल वो टीआरपी और वो व्यूज वॉल देखने के लिए कि लगातार लोग देखे रहे, बहस होती रहे और लगातार? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है ये एक क्या है, कुछ लोग हैं जो इस तरह के माने बातें जो नहीं होता नेगेटिव, कुछ ना कुछ कमियां निकालना है सिस्टम में, इसी सिस्टम में कमियां निकालते हैं। ऐसी बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आदमी, मैंने जैसे बोलते हैं जॉब्स के बारे में नहीं लिखते हैं। हम डेली दस्तक में जॉब्स की खबर दिखाते हैं। हमारे यहाँ डेली हमने स्लॉट किया हुआ है कि दस्तक में रोजगार से जुड़े, बेरोजगारी पे या किसी तरह का सवाल होता है तो हम उसको उठाते हैं। हमने वहां पे कैंपेन भी चलाया, लोगों के उसमें समस्या हुआ, कोटा का मामला हुआ, कोटा पे इतना बड़ा हमने मुहिम चलाया, कोटा में जब सुसाइड बच्चे कर रहे थे। तो लोग क्या है ना कि देखिए, एक्चुअली 5 और 6 का डिबेट जो है वो चैनल का एजेंडा नहीं है। आप अगर पूरे चैनल के कंटेंट को देखेंगे तो खासतौर पर आज तक में आपको सब कुछ दिखाई देगा। हम लोग कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि महंगाई का मुद्दा हो, रोजगारी का मुद्दा हो, या किसी मुद्दे को किसी भी रूप में हम लोग नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि मैं बताया ना कि मीडिया जो है समाज का आईना है। अगर वो समाज में कुछ हो रहा है, कुछ लोग में परेशानी है, या किसान आंदोलन हो, कुछ भी हो, जिसकी जो परेशानी है उसको हम नहीं लाएंगे तो सरकार के नोटिस में कौन लाएगा? ये तो हमारा भी काम है सरकार के नोटिस में लाना। हमारी चैनल देख के कई बार असर होता है। अभी हमने यूपी की स्टोरी की थी, वहां लोगों का जो इलेक्ट्रिक वायर बहुत नीचे से जा रहा था और हमने खबर दिखाई, उसके बाद अगले दिन वहां पे ये एक्शन हुआ और वो ठीक हो गया इतने दिनों का। हमने अभी जॉब्स की स्टोरी दिखाई, वहां पर परीक्षा स्टोरी दिखाई थी, अगले दिन वहां पर एग्जाम कैंसिल किया गया। योगी जी ने, उनके मंत्री आगे माने कि आज तक देख के मुझे ये पता चला और हमने ये कार्रवाई की। तो ये आप यदि करते रहते हैं काम तो उसको नोटिस भी करते हैं, लोग देखते भी हैं, इसलिए हम लोग तो सारी खबरें उस तरीके से दिखाते हैं। अच्छा, अभी हम जैसा टीआरपी की अभी बात करेंगे, टीआरपी की बात ही चल रही है, तो तमाम चैनल टीआरपी के पीछे भागते हैं और इससे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। तो क्या आप भी टीआरपी में यकीन रखते हैं और इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं? देखिए, ये भी एक जो है ना नैरेटिव सेट करना प्रोपेगेंडा का विषय है। लोग बोलते हैं ये टीआरपी के लिए कर रहा है। टीआरपी आदमी हर समय काटना नहीं सोचता है,
और कोई भी न्यूज चैनल टीआरपी के बगैर नहीं चल सकता, ये टीआरपी सब कुछ है या टीआरपी के लिए कर रहा है। किसी को ये पता तो होता नहीं है कि आप मान लीजिए किसान आंदोलन दिखा रहे हैं आप, तो ये कोई भी संपादक मैंने नहीं बता सकता कि उससे टीआरपी आएगी कि नहीं आएगी, या हम मोदी जी की सभा दिखा रहे हैं उससे टीआरपी आएगी या नहीं आएगी। आपको इंटरवल कॉल मिलना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं लोग कह लेते हैं कि टीआरपी के लिए आप ऐसा करते हो या टीआरपी के लिए वैसा करते हो। टीआरपी को ऐसा सिंपल ऐसा नहीं है कि वो जो है न्यूज वॉल पे बीच में बैठ के और वो टीआरपी हम बैठे हुए जाएंगे टीआरपी आ रही टीआरपी जा रही टीआरपी आ रही टीआरपी जा रही है, ऐसा कोई टीआरपी का निकल नहीं है हमारे पास हम टीआरपी के लिए कर रहे हैं या टीआरपी के लिए वो कर रहे हैं। ये एडिटर्स का चॉइस होता है, एडिटर्स की मर्जी है कि उसको जो खबर लगता है कि हाँ वो सही है, जो खबर वो बड़ा करना चाहता है, जो खबर छोटा करना। अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई सभी चैनल ने दिखाया है, वो अब उसका मुझे नहीं मालूम है उसको टीआरपी आएगी नहीं आएगी, उसको लोग देखा नहीं देखा, आप कैसे कर सकते हो। लेकिन खबर बड़ी खबर है तो आपको बड़ी खबर को बड़ी खबर के लिए दिखाना चाहिए। ये किसी को नहीं मालूम है कि उसको टीआरपी कुछ आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए कहना बहुत ही गलत है कि टीआरपी के लिए लोग खबर दिखाते हैं। टीआरपी अच्छा, दूसरी बात है कि टीआरपी हाँ डेफिनेटली एक जब आपके सिस्टम में एक ये है पैमाना है कि हाँ उससे आपका तय होता है कि आपकी रैंकिंग तय होती है, आपको नंबर पता चलता है। ऐसे कोई विद्यार्थी एग्जाम देता है तो उसको वो तैयारी करता है फर्स्ट होने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर नंबर लाने की कोशिश करते हैं या आपको लगता है कि आप टॉप करना चाहिए, आप टॉप करना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है। वो तो अपना ध्यान रखना चाहिए कि हाँ पढ़ाई आप करते हैं। अब ये घुसखोर विद्यार्थी है तो हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं अरे बहुत टॉप करना है उसके, अरे इसमें गलत क्या है टॉप करना है तो। अच्छा ये तो ठीक है, बाकी अभी इलेक्शन का दौर है, तो इलेक्शन को लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके हमारी कोशिश हर इलेक्शन में होता है कि हम लोग कुछ नया करें, और इस इलेक्शन में भी कुछ ना कुछ नया होगा ही। हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं और 24 का चुनाव हम लोगों के लिए बड़ा चुनाव है। और हम लोग हर चुनाव में मतलब आप देख रहे होंगे ये आज तक की कोशिश होती है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया हो, कुछ ना कुछ नया हो, और हम लोग उसको नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी कुछ नया करेंगे, बड़ा करेंगे। अच्छा, पत्रकारिता में अभी क्या चुनौती मानते हैं आप वर्तमान समय में, क्या है पत्रकारिता के सामने, मीडिया के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? पत्रकारिता के सामने पत्रकार ही चुनौती है और कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पत्रकारी क्या करेंगे नहीं पता नहीं। पत्रकारी अपने आप में वही चुनौती है और बाकी मुझे लोकतंत्र को चुनौती है। वो कई बार आपको लगता है कि पत्रकार पता नहीं किस डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो पता नहीं है कि आपको वो क्या क्या कर डालेंगे, क्या ट्वीट कर देंगे, क्या किस लाइन पे चले जाएंगे, किसके पक्ष में आ जाएंगे, किसके खिलाफ में आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आता है कई बार। तो जो पत्रकारिता की चुनौती है पत्रकार ही है और कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, इंडिया टुडे बहुत सारे स्टार एंकर, स्टार रिपोर्टर हैं और आप इतने बड़े पद पर हैं, तो कैसे इन सबको एक मैनेज कर पाते हैं? मतलब बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए, क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे कि इन सबको एक तरह से इतने बड़े बड़े स्टार एंकर रिपोर्टर्स को आप मैनेज करना? नहीं, मैनेज क्यों करना है, सभी लोग हमारे यहाँ टीम वर्क है और सबको अपना अपना काम पता है, क्लियरली डिफाइंड है सबका काम क्या है करना है। सभी अपना काम करते हैं, मिलजुल के करते हैं हम लोग काम, और उसमें हमारे यहाँ कोई इस तरह नहीं सोचता है कि हम स्टार हैं या हम नहीं हैं। हम लोग सभी लोग काम करते हैं, सब टीम के साथ काम करते हैं, सब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और सब अच्छा काम करते हैं जी। जो पहले ट्रेडिशनल पत्रकारिता थी, आजकल क्या है मोबाइल जर्नलिज्म, हर आदमी मोबाइल जिसके हाथ में वही खुद को पत्रकार बन बैठा है। तो इस तरह की पत्रकारिता को आप क्या कहेंगे? जिसके हाथ में मोबाइल है वही दोनों मीडिया क्लिक किया, सोशल मीडिया पर डाला मैं भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार। नहीं, वो बड़ा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का जो है जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगा लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जो न्यूज को जो इस काम को समझेगा वो वही पत्रकार बन सकता है। ये नहीं है कि कोई जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्य करता है कि मैं भी लिख दे, मैं भी पत्रकार पे बन जाएंगे वो। लेकिन ये काम बहुत सीरियस काम है और उसको उसी तरीके से जो इसका मोटिव है, जो इसका पर्पस है, उसी तरीके से काम को करना चाहिए, इसको हल्के नहीं लेना चाहिए। आप जब इतने बड़े ग्रुप में इतने बड़े पद पर हैं, उनको तमाम तरह के दबाव रहते हैं, खासकर इलेक्शन टाइम पे, तो क्या आपको भी किसी तरह का दबाव आता है? पर अगर आता है तो कैसे मैनेज करते हैं इस तरह के दबाव से, आप किस तरह निपटते हैं? देखिए, ये कभी कोई सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, किसी व्यवस्था में कभी भी सरकार या आपको दबाव इतना ही देता है। मैंने बताया दबाव, मैंने इस तरह का कोई दबाव नहीं है। लेकिन देखिए क्या है कि सभी लोग अगर रिक्वेस्ट होता है, जब ऐसी टाइम आएगा तो भाई मेरी भी दिखा दो, कोई बोले मेरी भी दिखा दो, कोई बोले मेरी भी दिखा दो, तो वो एक दबाव का आपको चलना ही पड़ता है और उसको आपको हैंडल करने आना चाहिए। जब आप सिस्टम में काम करते हैं तो आपका पार्ट ऑफ दी वर्क है वो, तो अब इस सिस्टम में सभी लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन एज सच हमारे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है इसको हटा दो, इसको लगा दो, या इसको चला दो, इसको नहीं चला दो। हम लोग सभी तरह खबर चलाते हैं और
निर्भीक होकर चलाते हैं, बेखौफ होकर चलाते हैं, और हम पे कोई दबाव, उस तरह का दबाव नहीं है कि हम उसको बोलेंगे नहीं दबाव है हमारे ऊपर, ये नहीं चला सकते, वो नहीं चला सकते। आप देखते भी होंगे हम लोग सरकार के पक्ष में भी चलाते हैं, सरकार के खिलाफ भी चलाते हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा ये नहीं है कि हम ये चलाएं और ये नहीं चलाएं। सब इंडिया में आपने एक लंबा सफर तय किया है और आज इस बड़े पद पहुंचे हैं, तो आप इतने समय में किस चीज को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं कि मेरे इतने अब तक के सफर में ये मेरी सबसे बड़ी एसेट है, ये मेरी पूंजी है अपनी? देखिए, मैं क्या कोई भी आदमी के लिए, किसी के लिए मैंने बोला कि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है, मेहनत करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने कभी जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाया किसी भी काम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए या पद के लिए या कुछ काम करने के लिए। मैं एक स्ट्रिंगर था और स्ट्रिंगर से यहाँ तक का सफर मैंने तय किया है तो सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर किया। अभी भी मैं उसी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ और मैं अपने साथियों को भी यही कहता हूँ कि ये काम जो है ये कोई बैंक का या सरकारी काम नहीं है कि आप एक 9 से 6 की ड्यूटी कर रहे होंगे। तो हम लोग 24/7 365 दिन उसी लगन और मेहनत से काम करते हैं और उसी मेहनत और लगन की वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ और बाकी लोग भी मेहनत करके भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वही मैं पता चला था कि नई उन्हें कोई सफलता का यदि आप देना चाहेंगे सफलता का आपको अलग से काम करना ही पड़ेगा। आप यही सोचेंगे कि ये जब तक कि आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं हमारे इतना ही काम है, इतना 2 घंटा ड्यूटी है, हमारी 4 घंटा ड्यूटी है, 9 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी है, जब तक आप घंटा देखिए ड्यूटी करते रहेंगे तब तक आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत कीजिए और आप अपने जो कमिटमेंट है, जो इस पैसे की कमिटमेंट, मैंने जॉब का कमिटमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके सही रास्ते पे चलिए। आप उसके लिए कभी भी किसी गलत तरीके से, किसी गलत रास्ते में मत जाइए। शॉर्टकट अपनाने के लिए मैं वहां चले जाऊँ, ये करना, ऐसा मत कीजिए। आप लगे रहिए, आपको कामयाबी मैंने 100% मिलेगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। मेरे यहाँ पे दिल्ली में कोई मुझे जानता नहीं था, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसकी बदौलत मैं यहाँ पत्रकारिता में आया या पत्रकार बना। अपने दम पे बना, काम करता रहा और काम के दम पर ही मुझे कंपनी हमेशा प्रमोट करती रही और आज तक यहाँ पे बनाया। ये इंडिया टुडे न्यूज़ की अच्छी बात है कि वो अपनी जगह को प्रमोट करती है, अपना भरोसा करती है और अपनी जगह को उस काबिल बनाती है कि वो एक जिम्मेदारी संभाल सके। ये हमारे ग्रुप में बहुत लोगों को जिम्मेदारी इस तरह से देख रहे हैं। सबको आप हमसे पहले सौरभ बोल के गए, सौरभ को भी उसने जिम्मेदारी दी गई है, तो ये अच्छा है। लेकिन ये सारे ये है कि आप भी अच्छा काम कर लोग यहाँ करते हैं। ये मेरे लोग पत्रकार जानने वाला नहीं है, मेरे लोग रिश्तेदार नहीं है, मैं मीडिया में कैसे जाऊंगा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैं यहाँ जब आया था तो मैं भी किसी को नहीं जानता था और लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे अपनी मेहनत करके अपने दम पे आया यहाँ पे। तो आप यदि मेहनत करते रहेंगे, लोग रहेंगे तो आपको भी मिल सकता है। मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो आगे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले कोई। उसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ये सब बाकी दुनिया के तुलना में ये सिस्टम हमारा ऐसा है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती है कि आप जो है ये कोई ऐसा जहाँ आपको एक होना चाहिए, आपके जानने वाले होने चाहिए। आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बढ़ने के पत्रकार आपकी इस सलाह पर जरूर अमल करेंगे। आपने हमें बहुत समय दिया, इतना समय दिया, धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जोर से ताली प्लीज। और जिस तरीके से सर का इंस्पिरेशनल जर्नी रहा है, दिल्ली के बाहर से आके दिल्ली में आके इतने बड़े पोस्ट पे आना, एक और बार उनके लिए जोर से ताली बजाइए प्लीज फॉर द जर्नी दैट ही हैज हैड। थैंक यू सो मच सर। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा अभिषेक सोनी जी को फ्रॉम एस्ट्रो सागा, ताकि वो यहाँ पे आए और टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दे सर को। साइड दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। On that note, ladies and gentlemen,
we have finally come to an end of the 13th edition of the News Next 2024. एक बार आप लोग आप खुद के लिए अपनी जोर से ताली बजाएं. All the ones over here will be right there from morning. And a huge shout out to the entire team of Exchange for Media Group, especially Anurag Batra sir, Mr. Ruhel, Priyanshi, Shohini, Chenit, the entire team of Exchange for Media. उनके लिए जोर से ताली. All thanks to the console over there as well for the support. Hotel staff, सबको जोर से thank you. And we look forward to the awards very soon. We'll see you again. Thank you so much. This is your host Shubhajit signing off. बहुत जल्द वापस मिलेंगे. Thank you so much.